Shri Gurudev ki jai. Samved Bhakta Vrinda ki jai. Gaur Premanandi Gaur Premanandi Gaur Premanandi. Hare Krishna. That was enthusiastic. ये बहुत जोशीला कीर्तन। How is everyone tonight? कैसे हैं आप सभी? Are you feeling happier? क्या आप लोग और ज़्यादा खुश Are महसूस you हो रहे हैं? feeling more alive? और ज़्यादा जीवित महसूस कर रहे हैं? Are you feeling more intelligent? और ज़्यादा आप बुद्धिमान महसूस कर रहे हैं? This is MIT, ये है MIT, right? This is the real MIT. ये है असली MIT। Science of the soul. आत्मा का विज्ञान, Tattva Vichar, science of the soul. तत्व विचार, आत्मा का Who's विज्ञान। teaching that? कौन ये सिखा रहा है? Anybody teaching that? वो ये सिखा रहा है? No? Nepal? Are they teaching that in Nepal? नेपाल में सिखाया जाता है? Science of the soul? आत्मा का विज्ञान? Or are they preaching money, money, money? या फिर सिखा रहे हैं पैसा, पैसा, पैसा? Brighter than the sunshine, sweeter than the honey. सूरज से भी ज़्यादा चमकदार और शहद से भी ज़्यादा मीठा। I need power, power, money, मुझे शक्ति चाहिए, पैसा चाहिए, followers, Lord. position, पद चाहिए, name and fame. नाम और प्रतिष्ठा। How many crores do you have in the bank? आपके बैंक में कितने करोड़ हैं? Then I'll tell you how much bhakti you have. तो मैं बताऊंगा आपके पास कितनी भक्ति है। Going on like that, ये सब चल रहा है, isn't it? ऐसा है या नहीं? Has nothing to do with bhakti. इसका भक्ति से कोई लेना देना नहीं। So last night we left off. We had very nice, enthusiastic class last night. तो पिछली रात बहुत ही उत्साहवर्धक हमारा क्लास हुआ। What happened to our top 1,000 guy? तो 1000 सर्वोत्तम व्यक्ति का क्या हुआ? He's afraid of the competition. He ran back to study. तो प्रतियोगिता से डर लग गया, वापस अब पढ़ने के लिए चले गए हैं। So what did happen? He had to go back. So Enrico, you had a question last night. We will not have time to answer your question. आपके पिछले रात को सवाल था, आपके हमें समय नहीं मिल पाया आपके सवाल को सुनने का। I couldn't sleep last night because I couldn't answer your question. पिछली रात मैं सो नहीं पाया क्योंकि मैं इनके सवाल का उत्तर नहीं दे पाया। Then I was so curious when I was thinking what to speak about. I said, Enrico had a question. और मैं बहुत उत्सुक था जानने के लिए मैं क्या बातें करूँगा। फिर मुझे याद आया एनरिको के पास एक सवाल I है। hope it's not like this Polish lady from the other night. मुझे उम्मीद है वो पोलिस महिला जिसने पिछली रात जैसा वो सवाल पूछा था वैसा नहीं How होगा। many people did you kill? कितने लोगों को आपने मारा है? So, Hare Krishna. Only the materialistic families who lost their children to pure devotional service. Yes, come. Hare Krishna. Because yesterday, we were talking about how everyone meet the guru. Yes. Sometimes someone for a random. Not by coincidence. Yeah, coincidence. Right. Exactly. So what was the reason why someone got the guru? तो वो कौन सा कारण होता है जिसके वजह से किसी गुरु प्राप्त होते हैं? Why Krishna sent such guru? क्यों कृष्ण ऐसे गुरु को भेजते हैं? Because I think Krishna that can see inside us, if we see like a pure desire of service, he can come to us in the form of maybe guru. Maybe. That's not up to me to convince you. That's up to Krishna to convince you. No, I mean No, all other. No, I'm just talking from Tattva Vichar point of view. मैं तत्व विचार दृष्टिकोण से बता रहा हूँ ये कृष्ण आश्वस्त करेंगे, मैं किसी को आश्वस्त नहीं करता। Because even you can speak the perfect thing, right? But who will convince you lastly is only Krishna. हो सकता है आप बिल्कुल सही बात करें, लेकिन अंत में आपको आश्वस्त कृष्ण ही करेंगे। That's why you have to completely depend on Krishna. इसलिए आपको पूरी तरह से कृष्ण के ऊपर निर्भर होना चाहिए।
So we're going to read a verse tonight that talks exactly on that point. तो आज हम उस श्लोक के बारे में पढ़ेंगे जो बिल्कुल इसी बात पे। Do you have some additional points so I can remember to talk about it? आपके पास और कुछ बातें हैं जो हम बात कर सकते हैं? My question was what happened when we meet the Guru. So When what? after when we meet the Guru, Yeah. how is three questions, and after No, let's hear it, man. Load it up. तैयार कर लीजिए अपने सारे प्रश्न। we meet the Guru, and what is the best way to interact with Guru? The first. After which Wait a one? second. So if you want to know what Krishna wants you to do, and Krishna is going to speak to the Guru, तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कृष्ण आपसे क्या चाहते हैं और कृष्ण गुरु के माध्यम से आपको ये बताने वाले हैं, so then we should think, that the Guru is as good as Krishna, तो हमें ये सोचना चाहिए गुरु कृष्ण के समान है, because he is the confidential servant of Krishna, क्योंकि वो कृष्ण के बहुत ही करीबी पास and Krishna is authorizing him and empowering him on his behalf. और कृष्ण ने उनको अधिकार दिया है, सशक्तिकरण दिया है अपनी तरफ से। So it says you should give the same respect to the spiritual master as you would give to Krishna. बताया जाता है आपको गुरु को वैसा ही सम्मान देना चाहिए जैसा आप कृष्ण को सम्मान देते हैं। The spiritual master never thinks he is Krishna. गुरु कभी ये नहीं सोचते वो कृष्ण है, He's just a pipe, वो केवल एक पाइप है, right? Coming in one pipe, going out other pipe. एक पाइप से आता है दूसरे पाइप से बाहर जाता That's what it means, a purified medium of Krishna. है। ये होता है कृष्ण का शुद्ध माध्यम होने का अर्थ है। But if Krishna is manifesting through our Guru, then we should see, oh, my Guru is not ordinary personality. तो अगर कृष्ण हमारे गुरु के माध्यम से प्रकट होते हैं तो हमें समझना चाहिए गुरु हमारे कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, Because Krishna's choosing to use him in his service to explain to the conditioned souls what is in their best interest. क्योंकि उन्होंने कृष्ण ने उनको चुनाव किया है कि वो बद्ध जीवों को बताए उनके लिए सबसे श्रेष्ठ क्या है। And Krishna says that no one is more dear to me. और कृष्ण बताते हैं मुझे कोई भी बहुत इतना प्रिय नहीं है। So those who give up everything to try to help other people to come to Krishna, they become most dear to Krishna. जो बाकी लोगों की मदद करते हैं कृष्ण के पास आने के लिए, वो कृष्ण को बहुत से ज़्यादा प्रिय हो जाते हैं। So they're actually worshipable. तो असल में वो पूजनीय है। Because they're doing that service which Krishna considers to be the most important service. क्योंकि वो सेवा कर रहे हैं जिसको कृष्ण सबसे महत्वपूर्ण सेवा मानते हैं। So that's the first answer. तो ये पहला उत्तर हुआ। Of course, could be a big answer, और अवश्य उत्तर बहुत बड़ा भी हो सकता है। but that's the first thing that came to mind. लेकिन ये पहली चीज मेरे मन में आई। You should take it in humble state of mind, हमें उसे विनम्र मनोभाव से स्वीकार करना चाहिए not a challenging mood, challenging spirit. और चुनौती देने के भाव से नहीं होना चाहिए। This is a nice topic. Do you want to talk about this topic? ये बहुत ही अच्छा विषय, आप इस विषय के ऊपर बात करना चाहते हैं। What is the mood of the disciple, or the mood of one who is asking question? How they should be in which mood to receive the answer? कि शिष्य का भाव कैसा होना चाहिए, प्रश्न पूछने का उनका रवैया कैसा होना चाहिए और उत्तर किस तरीके से सुन Do पाएंगे। you want to hear from Srila Prabhupada's books and teachings what he says on this topic? आप श्रील प्रभुपाद की किताबों और शिक्षाओं से सुनना चाहते हैं कि वो इस विषय के ऊपर क्या कह रहे हैं। That's a nice topic. ये बहुत ही अच्छा विषय है। I was thinking about this to give this topic other night. I had it already queued up. और पिछली रात मैंने पहले इसको कतार में लगा कर रखा था इसके बारे में बात करने के लिए। So it looks like it's a nice topic. तो ये बहुत ही अच्छा विषय लग रहा है। So let's do combined topic. तो चलिए कुछ विषयों को एक साथ मिलाकर जानने का प्रयास करते हैं। Okay. What is that? We just talked about the vaishnava, pure medium of Krishna. They are very dear to Krishna. अभी हमने बात की वैष्णव जो कृष्ण के शुद्ध माध्यम है, वो कृष्ण को बहुत प्रिय है। So worshipping a vaishnava sadhu guru is more pleasing to Krishna. तो वैष्णव साधु गुरु की पूजा करना कृष्ण को ज़्यादा पसंद है। Then even service to himself, Krishna says. कृष्ण कह रहे हैं मेरी सेवा से ज़्यादा बेहतर वो है। So Krishna is considering our worship and service to our spiritual master to be more pleasing to him than even if we directly serve Krishna. तो कृष्ण गुरु की सेवा और उनकी पूजा अपनी खुद की सेवा पूजा से ज़्यादा बेहतर मानते हैं।
So how does Krishna accept how we look at and how we deal with the spiritual master? That's even a more important question. तो कृष्णा कैसे स्वीकार करते हैं आध्यात्मिक गुरु से, किस तरह का रवैया रखें, कैसा व्यवहार उनके साथ हम करें? So this is the topic where it talks about the worship of Vaishnavas is more pleasing. तो ये तत्व टॉपिक्स में जो विषय है कि वैष्णवों की पूजा ज़्यादा आनंद देती है कृष्ण को। Is that all right? ठीक है? You want to say some other thing first? अब कुछ So और I बात पहले can, कहना so I can चाहते try to tie it together. हैं ताकि मैं सबको एक साथ कह सकूं, लेकर आ सकूं। The other question that is like the same you talk about is how to ask a good question to How to ask the question. Yeah. So which one of those topics do you want to hear more? तो प्रभु सवाल पूछ रहे हैं कि किस तरह से अच्छे सवाल हम पूछ सकते हैं। तो मुझे बता रहे हैं इन सारे विषय में से कौन सा विषय पे आप बात करना चाहते हैं आज? So you want to hear, how about a little bit of both? कैसा होगा अगर हम दोनों विषयों के बारे में थोड़ा थोड़ा बात करें? That way I can try to satisfy everybody. इस तरीके से मैं सभी को संतुष्ट कर पाऊंगा। How many people want to hear about, we'll take a survey. Since democracy is so much, glorified, कि लोकतंत्र का इतना ज़्यादा गान किया जाता है। So we'll take a democratic vote without the CIA involved, लोकतंत्र का हम भी मतदान लेंगे, CIA को यहाँ इन्वॉल्व नहीं करें। Like a real democracy, असल लोकतंत्र की अगर बात करें। It always sounds good, and so all the intelligence agencies are involved, सुनने में तब तक ठीक लगता है जब तक सारे ये खुफिया विभाग इसमें शामिल नहीं हो जाते। And then it's questionable democracy. तब फिर ये लोकतंत्र पे सवाल उठाते हैं। Then it's demon crazy. तब ये असुर पागल असुरों का समूह Instead है। of democracy, demon crazy. लोकतंत्र के बजाय पागल लोग हो जाते हैं। And we have our resident politician has come. He knows about democracy. और हमारे राजनेता भी आए, उनको भी लोकतंत्र के बारे में पता है। And he's not controlled by any intelligence agency. और किसी भी खुफिया विभाग के अंदर नियंत्रित नहीं है वो। I hope. मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसी आशा It's है। hard to say nowadays, आजकल कुछ भी बोलना बहुत मुश्किल है। But maybe he's just controlled by Brahman from last night class. लेकिन पिछली रात से हमें पता चला ये ब्रह्मांड के नियंत्रण में है। That Brahman is controlling him. वो ब्रह्मांड को नियंत्रण करके रखा है। So who wants? And it doesn't matter to me. और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। Don't speculate and think I am choosing one over the other. आप मनोधर्म मत कीजिएगा, ये मत सोचिए मैं एक को छोड़ के दूसरे को चुन रहा हूँ। I'm completely neutral. मैं पूरी तरह से सामान्य हूँ। Okay, so who wants to hear about the mood of asking question for potential disciple? तो कौन ये जानना चाहता है किस तरह से सवाल जो एक शिष्य बनना चाहते हैं वो कैसे सवाल पूछ सकते हैं गुरु से? That's one category. ये एक कैटेगरी है। And the second category is worship of Vaishnava sadhu guru is more pleasing to Krishna. और दूसरा श्रेणी है साधु गुरु वैष्णव की पूजा कृष्ण को ज्यादा आनंद देती है। Okay, so those who want to hear about what should be the mood when making question to the spiritual master, तो कौन लोग वो सुनना चाहते हैं कि गुरु को सवाल पूछने का रवैया हमारा कैसा होना चाहिए और ताकि हम सुन सकें अपने हाथ उठाइए सभी। Okay. ठीक है। Alright. ठीक है। And then those who want to hear worshipping of the Vaishnava sadhu guru is more pleasing to Krishna. और कौन ये सुनना चाहते हैं वैष्णव साधु गुरुओं की पूजा कृष्ण को ज्यादा आनंद देती है। Okay. So we'll answer both. But we'll start with worship of Vaishnava. लेकिन हम शुरुआत करेंगे वैष्णव की पूजा से। That group seem to win out. Of course, everyone's a winner in this game and in this way. इस खेल में सभी विजेता होते हैं। There's no losers. There's no bad answer. No bad topic. यहाँ कोई हारता नहीं है, कोई खराब उत्तर नहीं है, कोई खराब विषय भी नहीं है। It's all absolute. सभी परम सत्य हैं। Om Jnanatamurandasya Gananjana Sunakaya Chakshurmilitanjana Tasmai Shri Gurave Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasati Shri Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare. So I think you made a wise decision in your democratic option. मुझे लगता है आपने लोकतंत्र में बहुत चतुराई वाला निर्णय लिया है। Because if we
worship Sadhu Guru Vaishnava and that's more pleasing to Krishna, then it makes sense why would we want to listen to them and deal with them in the proper way, right? अगर हम वैष्णव की पूजा करते हैं और कृष्ण इससे खुश होते हैं तो ये ज़्यादा सही मतलब बनता है क्यों हमें उनके साथ ऐसा व्यवहार रखना चाहिए कि हम उनको सही तरीके से सवाल पूछ सकें. So it's explained in Hari-katha Vilas in chapter 4, 344. तो हरि भक्ति विलास 4 अध्याय 334 में 4, 344. 4:334. You know, they have a new artificial intelligence. 44. अभी जो है नया तकनीक आ चुका है. They have a new artificial intelligence. अभी एक नया तकनीक आ चुका है. So they can take somebody's voice तो किसी और की आवाज़ को ले सकते हैं. and then whatever they say, it can be like Trump could say something, right? And then it's translated immediately into Hindi. कि ट्रम्प कुछ कहेंगे और तुरंत उसको हिंदी में अनुवाद कर दिया जाएगा. So it sounds exactly like Trump, तो बिल्कुल ट्रम्प के जैसा ही आवाज़ आएगा. but he's speaking in Hindi. लेकिन वो हिंदी में बोलेंगे. So can you imagine, like, if I'm speaking and this is just immediately in my voice is coming across in Hindi? आप कल्पना कीजिए मैं यहाँ बोल रहा हूँ दूसरी तरफ हिंदी से वही एकदम मेरी जैसी आवाज़ में कोई अनुवाद That would be unbelievable. ये अविश्वसनीय होगा. I'm waiting for that. मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ. He's doing good. ये अच्छा कर रहा है. He's going to be like, who needs the competition? You know? ये सोच रहा है कि प्रतियोगिता की क्या जरूरत है. But I just don't know if the AI can talk about Shuddha Sattva topic. That's लेकिन the मुझे पता question. नहीं ये तकनीक जो है ये शुद्ध सत्व के बारे में बात कर पाएगा या नहीं, ये एक और प्रश्न है. That would be very interesting. ये और भी दिलचस्प होगा. Right? When you start to talk about fourth dimensional spiritual topic, does AI, they able to understand about that? ये जो आधुनिक तकनीक है चतुर्थ आयाम के विषय के बारे में बात करेंगे और ये तकनीक उसको समझ पाएगा. If yes, that's scary, isn't it? ये डरावना होगा. Because it's saying one day that will be God, right? क्योंकि वो कहते हैं एक दिन वो भगवान हो My जाएगा. God. Let's hope it doesn't happen like that, but I'm waiting for that translator, you know? उम्मीद है ऐसा ना हो लेकिन मैं ऐसे ट्रांसलेटर की का इंतजार कर रहा हूँ. And it puts it in the same tone, exactly sounds like you. और ये बिल्कुल वैसे ही टोन में बताएगा जैसे आपको आपकी आवाज़ लगेगी. In any language. किसी भी भाषा में. And they're showing, you know, they're just okay. There he is saying that same thing in Italian and French and right, and Hindi. और वो दिखाएंगे यही इटालियन में, फ्रांस की भाषा में और हिंदी में इस तरीके से बोल. Anyway, back to Hari-katha Vilas. तो वापस आते हैं हरि भक्ति विलास पे. Sometimes I get diverted a little bit. कभी-कभी हम थोड़ा भटक जाते हैं. Don't mind. और बुरा मत मानिएगा. I have a lot on my mind. मेरे मन में बहुत सारी बातें चल रही I हैं. have to make everybody as happy as possible. सभी को जितना ज़्यादा खुश हो सके मुझे करने का प्रयास And करना. that's not easy. और ये इतना आसान नहीं. Believe me, it's मेरा not विश्वास easy. कीजिए ये इतना आसान नहीं है. So Sri Krishna says, श्री कृष्ण ने कहा, I'm quoting authority. मैं शास्त्र की बातें कर रहा हूँ. Krishna says there's no greater authority than me. कृष्ण कहते हैं मुझसे बड़ा कोई अधिकारी नहीं है. So Krishna says a devotee who worships Sri Gurudev first कृष्ण बताते हैं जो श्री गुरुदेव की पूजा पहले करता है and then worships me, और तब मेरी पूजा करता है, he attains perfection. वो सिद्धि को प्राप्त करता है. It is fruitless to try to worship me alone. तो मेरी पूजा अकेले करने से कोई फल प्राप्त नहीं होता. So if one wants to serve Krishna with loving devotion, if you like that idea, you want to try to do that. तो अगर कोई कृष्ण को प्रेम और भक्ति से पूजा करना चाहता है, किसी को ये विचार पसंद आता है, So Krishna will say, oh, this person wants to serve me with a loving devotion. That's good. तो कृष्ण कहेंगे ये व्यक्ति प्रेम और भक्ति से मेरी सेवा करना चाहता है, ये बहुत अच्छी बात है. So when Krishna marks that, then he'll say, okay, let me send them bona fide guru. तो जब कृष्ण उसको देखते हैं वो कहते हैं अब मैं इसको एक प्रमाणिक गुरु भेजूंगा. And that's the first installment of Krishna's mercy. और ये है कृष्ण की कृपा की पहली किस्त. So by the mercy of Krishna, one gets such bona fide guru. तो कृष्ण की कृपा से किसी को ऐसे गुरु मिलते हैं. And by the mercy of bona fide guru, then we're able to understand how to get Krishna. और उस प्रमाणिक गुरु की कृपा से हम समझ पाते हैं कैसे हम कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं. So Srila Prabhupada said, two mercies are required. श्रील प्रभुपाद बताते हैं दो कृपा की जरूरत होती है. First Krishna, पहली कृष्ण की then Guru, Shri Guru. और फिर गुरु श्री गुरु. Shri Guru means Krishna manifesting through bona fide authorized Guru. That's Shri Guru. श्री गुरु का मतलब होता है कृष्ण उस प्रमाणिक अधिकारी गुरु के माध्यम से प्रकट होते हैं. यह है श्री गुरु. In Srimad Bhagavatam 1:2:16 purport, श्रीमद् भागवतम 1:2:16 के तात्पर्य बताया गया. Srila Prabhupada says that by serving
the servant of God, शिला प्रभुपाद बता रहे हैं भगवान के सेवक की सेवा करने से one can please God more than by directly serving the Lord. कोई भगवान को सीधे सीधे सेवा करने से ज्यादा प्रसन्न कर सकता है. So by serving the servant of God is more pleasing than directly serving the Lord. तो भगवान की सेवक की सेवा भगवान के व्यक्तिगत सेवा से ज्यादा बेहतर है. The Lord is more pleased when he sees that his servants are properly respected, भगवान को बहुत आनंद आता है जब उनके सेवकों का सही से सम्मान किया जाता है. because such servants, they risk everything for the service of the Lord. क्योंकि ऐसे सेवक भगवान की सेवा के लिए सब कुछ खतरा उठा सकते हैं. And so they become very dear to the Lord. और इसीलिए वो भगवान को बहुत प्रिय होते हैं. And the Lord declares in the Bhagavad Gita 18:69 that no one is dearer to him और भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता 18:69 में बताते हैं कि उन्हें कोई इतना प्रिय नहीं है than one who risks everything to preach his glory. कि जो सारे खतरे भगवान की महिमा का प्रचार करने में लगाता है. By serving the servants of the Lord, और भगवान की सेवकों की सेवा करने से one gradually gets the quality of such servants. कोई धीरे-धीरे ऐसे सेवकों के गुणों को प्राप्त कर लेता है. And thus one becomes qualified to hear और इसीलिए कोई श्रवण करने के लिए योग्य हो जाता है the glories of God. भगवान की महिमाओं का. Srila Prabhupada speaks. श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं. So by serving pure devotees, then we become pure devotee by their mercy. तो शुद्ध भक्त की सेवा करने से हम उनकी कृपा पाकर हम भी शुद्ध भक्त बन सकते Then the more pure we become, हैं. और जितना ज्यादा हम शुद्ध बनेंगे intelligence, mind, senses become pure, the more we're able to hear and understand the glories of the Supreme Lord. तो मन बुद्धि इंद्रिय जितना शुद्ध होंगे उतना ज्यादा हम भगवान को सुन पाएंगे भगवान की महिमा. So this eagerness to hear about God, to hear about Krishna, तो कृष्णा और भगवान के बारे में सुनने की जो उत्सुकता this is the first qualification ये सबसे पहली योग्यता है of a devotee who is eligible for entering the kingdom of God. उस भक्त के लिए जो भगवान के भगवत धाम में प्रवेश करने के लिए योग्य है. So eagerness to hear about the Lord is the first qualification तो भगवान के बारे में सुनने की उत्सुकता ये सबसे पहली योग्यता है of a person who wants to enter into the kingdom of God. उस व्यक्ति के लिए जो भगवान के धाम में प्रवेश करना चाहता है. In class, Srila Prabhupada speaking in Vrindavan, श्रील प्रभुपाद एक वृंदावन के प्रवचन में बता रहे हैं. and this was October 4, 1976. 4 अक्टूबर 1976. Srila Prabhupada says that our determination should be to serve the previous guru and acharya. श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं हमारा दृढ़ निश्चय पूर्व गुरु आचार्यों की सेवा करने का होना चाहिए. Evam parampara praptam. एवं परंपरा प्राप्त. That should be our determination. ये हमारा दृढ़ निश्चय होना चाहिए. How to serve the previous guru and acharya. कैसे हम पूर्व गुरु आचार्यों की सेवा करें. Prabhupada says not directly Krishna. प्रभुपाद कहते हैं सीधे सीधे कृष्ण की नहीं. Because to serve a vaishnava is more than serving Krishna directly. कि वैष्णव की सेवा कृष्ण की सेवा से ज्यादा बेहतर है. Why is that? Because that's Krishna's preference. और ऐसा क्यों है क्योंकि कृष्ण की यही प्राथमिकता है. And so by learning how to develop Guru Bhakti, we can develop Krishna Bhakti. अगर हम सीखेंगे कैसे हम गुरु भक्ति प्राप्त कर सकते हैं तो हम कृष्ण भक्ति को प्राप्त कर सकते By हैं. learning how to do Guru Seva, we can learn how to do Krishna Seva. अगर हम सीखेंगे कैसे हम गुरु सेवा करेंगे तभी हम कृष्ण सेवा करना सीख So सकते हैं. that's where we're learning how to serve Krishna by serving his dear devotee. तो इसलिए हम कृष्ण की सेवा करना सीख रहे हैं कृष्ण के भक्त की सेवा करने के माध्यम से. And by serving the spiritual master, serving Vaishnavas, we should think that this is very pleasing to Krishna. और गुरु वैष्णव की सेवा करते समय में ये सोचना चाहिए कृष्ण को बहुत प्रसन्न करता है. And Krishna is saying it's more pleasing than even if you serve me directly. और कृष्ण कह रहे हैं ये मेरी खुद की सेवा से मुझे ज्यादा प्रिय है. So that service to Krishna's devotee, it's not disconnected from Krishna. तो कृष्ण के भक्त की सेवा ये कृष्ण से ऐसा नहीं संपर्क टूटा हुआ है. We're serving them because of their connection with Krishna. हम उनकी सेवा कर रहे हैं क्योंकि इसका संबंध कृष्ण की सेवा से है. And because Krishna becomes more pleased. और क्योंकि कृष्ण को उससे ज्यादा आनंद आता है. It says Mad Bhakta Puja Vyadika from Srimad Bhagavatam 11th Canto. श्रीमद् भागवतम 11वें स्कंद में बताया गया है. Because Krishna, he likes that. क्योंकि कृष्ण को ये पसंद है. He doesn't accept anyone's service directly. वो किसी की भी सेवा सीधे सीधे स्वीकार नहीं करते. That is a gross mistake. ये बहुत बड़ी मूल गलती You है. have to serve
the servant of Krishna. आपको कृष्ण के सेवकों की सेवा करनी होगी। That is the way, ये है तरीका, not directly. सीधे सीधे नहीं। Now, of course, we all came here not to get a guru, और अवश्य हम सभी यहाँ गुरु पाने के लिए नहीं आए, right, or to just serve some what we think is some ordinary personality. We came here to serve God, isn't it? किसी सामान्य व्यक्ति की सेवा करने नहीं, हम यहाँ भगवान की सेवा करने के लिए We आए। came here to find out about Krishna and how to surrender and serve Krishna. हम कृष्ण के बारे में पता लगाने के लिए और कैसे हम कृष्ण के शरणागत उनको सेवा कर सकते And हैं। then later we found out, okay, how do you do it properly? और बाद में हमें ये समझ में आया कि कैसे हम इसे सही तरीके से कर सकते हैं। Then we understand Krishna says, I'm going to explain to you through my representative bona fide guru. और तब हमें समझ में आया कि कृष्ण हमें प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरु के माध्यम से सारी बातें समझाएंगे। And then by learning to serve that spiritual master, then we understand that this is more pleasing to Krishna. और अगर हम सीखेंगे कैसे हम उस गुरु की सेवा कर सकें जो कि कृष्ण को और ज्यादा आनंद देता है। So we make offering to our spiritual master, and the spiritual master offers to his spiritual master, and his spiritual master offers to his spiritual master. In this way, finally it goes to Krishna. तो हम अपने आध्यात्मिक गुरु को अपनी सेवा अर्पण करते हैं, वो गुरु उनके गुरु को, उनके गुरु उनके गुरु को, इस तरह से धीरे धीरे ये कृष्ण के पास पहुंचता है। That is the way, ये है तरीका, not directly. सीधे सीधे नहीं। And Srila Prabhupada said, just like some big prime minister or president, you cannot just walk in there and just directly deal with him. जैसे श्रील प्रभु उदाहरण देते हैं, जैसे कोई बहुत बड़े प्रधानमंत्री हैं तो क्या सीधे सीधे आप उनके पास जाके घुस के उनसे साथ बातचीत नहीं कर सकते। You have to go through his representatives, isn't it? आपको उनके प्रतिनिधियों के पास से जाना होगा। Even in the material world, you cannot just walk in there and demand some meeting. Yes, I have something to give to you, you know. यहाँ तक कि भौतिक जगत में भी हम सीधे सीधे उनके ऑफिस में घुस के उनको कुछ दे नहीं सकते, ये मैं आपके लिए कुछ लेकर आया हूँ। So there's some protocol even in material world. तो भौतिक जगत में भी कुछ नियम पालन करने होते हैं। So what about the most, senior personality? तो सबसे ज्यादा उन्नत व्यक्ति के बारे में क्या कहना है? So we can be a demon, and all of a sudden it's like, I'm thinking to be a devotee. I want to talk to Krishna, you know. पहले हम असुर थे, हम सोच रहे हैं मैं भक्त बनना चाहता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मैं कृष्ण से मिलना चाहता हूँ। I have some leaf and a flower, fruit and water I want to give him, you know. मेरे पास कुछ पानी है, Some bhakti now. I'm thinking. कुछ पानी है, थोड़ा फल है और पत्ते हैं, ये मैं कृष्ण को अर्पण करना चाहता हूँ। Okay, that's nice. ठीक है, अच्छी But बात है, just go through some process, isn't it? लेकिन एक प्रक्रिया से होकर दूसरी बात। This is understandable. It's reasonable, isn't it? ये बहुत ही It's also logical. ये बहुत ही तर्कपूर्ण बात है। So Krishna says he's the seed-giving father of all living entities. There's no truth superior to him. तो कृष्ण बताते हैं वो सभी जीवात्माओं के बीच प्रदाता पिता हैं और उनसे ऊपर कोई सत्य नहीं। So therefore, he's more pleased when we're not doing directly. और इसीलिए उनको ज्यादा आनंद आता है जब हम सीधे सीधे उनके पास नहीं जाते। Srimad Bhagavatam 1:5-23 purport. श्रीमद् भागवतम 1:5-23 के तात्पर्य में Srila Prabhupada says that the Lord says that service of his servants is greater than his personal service. तो श्री प्रभुपाद बता रहे हैं कि उनके सेवकों की सेवा भगवान की व्यक्तिगत सेवा से ज्यादा बेहतर है। So service of the devotee is more valuable तो भक्त की सेवा ज्यादा मूल्यवान है than the service of the Lord. भगवान की सेवा से। That's a very heavy statement, ये isn't बहुत it? ही भारी वाक्य ऐसा है। If we don't understand the tattva, we can be very confused by that. तो अगर हम इस तत्व को समझेंगे नहीं तो हम इससे बहुत भ्रमित रहेंगे। If we understand the connection between our spiritual master and Krishna, तो अगर हम कृष्ण और गुरु के बीच का संबंध देख पाते हैं and how the spiritual master, Krishna says, is more dear to me. और कैसे कृष्ण बता रहे हैं आध्यात्मिक गुरु मुझे ज्यादा प्रिय है। So by serving the spiritual master, we should understand that this is more pleasing to Krishna. तो गुरु की सेवा करते समय हमें ये समझना चाहिए कृष्ण को ज्यादा आनंद देता है। Therefore, Prabhupada says it's more valuable. इसलिए श्री प्रभुपाद बता रहे हैं ये ज्यादा मूल्यवान है। One should therefore choose a bona fide servant of the Lord, इसीलिए किसी को प्रामाणिक सेवक का चुनाव करना चाहिए constantly engaged in his service, जो निरंतर भगवान की सेवा में लगा है। accept such a servant as the spiritual master, तो ऐसे सेवक, ऐसे प्रामाणिक गुरु and engage himself in the spiritual master's service. और ऐसे आध्यात्मिक गुरु की सेवा में हमें लगना चाहिए। Such a spiritual master, can you turn this down a little bit? Such a spiritual master is the transparent via medium तो ऐसे आध्यात्मिक गुरु एक पारदर्शी शुद्ध माध्यम है by which to visualize the Lord. जिनके माध्यम से भगवान को देखा जा सकता Because है। we cannot see Krishna, क्योंकि हम कृष्ण को देख नहीं सकते but we can see the spiritual master. लेकिन हम गुरु को देख सकते हैं।
We cannot hear Krishna, हम कृष्णा को सुन नहीं सकते, but we can hear the spiritual master. लेकिन हम आध्यात्मिक गुरु So को सुन सकते Krishna हैं। is assuming the form of the spiritual master तो कृष्णा एक गुरु का रूप लेकर आते हैं so that we can see him and so that we can hear him. ताकि हम उनको देख सके और हम उनको सुन सके। Such a spiritual master is the transparent medium ऐसे आध्यात्मिक गुरु एक शुद्ध माध्यम है by which to visualize the Lord, जिसके माध्यम से भगवान को देखा जा सकता है, who is beyond the conception of the material senses. जो भौतिक इंद्रियों के पहुंच से परे है। By service of the bona fide spiritual master, तो प्रमाणिक आध्यात्मिक गुरु की सेवा से the Lord consents and agrees to reveal himself in proportion to the service rendered to his devotee. भगवान अपने भक्त को जिस अनुपात में आप सेवा करते हैं उसी अनुपात में वो अपने आप को आपके सामने प्रकाशित करेंगे। So the quality and the quantity of the service rendered to the spiritual master, तो जिस गुणवत्ता और जिस मात्रा में अगर आप आध्यात्मिक गुरु की सेवा करेंगे, because spiritual master is so dear to the Lord, कि गुरु भगवान को इतने प्रिय होते हैं, so Krishna is revealing himself to us depending on how we serve his representative. तो कृष्णा अपने आप को हमारे सामने प्रकाशित करेंगे उतनी मात्रा में जितना हम गुरु को शरणागत It's करेंगे। very interesting. ये बहुत ही दिलचस्प बात है। Right? Krishna says, as you surrender unto me, then I reward you accordingly. कृष्णा कहते हैं जिस तरीके से आप मुझे शरणागत करेंगे उसी तरीके से मैं आपको पुरस्कार भी दूंगा। As you surrender unto me, I reveal myself to you proportionally. तो जिस तरीके जितना आप मुझे शरणागत करेंगे उतना ही मैं अपने आप को आपके सामने प्रकाशित So करूंगा। how do we know the quality and the quantity of the service that we're rendering, whether Krishna is accepting that or तो not? हमें कैसे समझ में आएगा हम जिस तरह की सेवा गुणवत्ता और मात्रा में कर रहे हैं कृष्ण उस सेवा को स्वीकार कर रहे हैं या नहीं। So Prabhupada is saying the service of the bona fide spiritual master, प्रभुपाद बता रहे हैं प्रमाणिक आध्यात्मिक गुरु की सेवा, by that service, उस सेवा से the Lord agrees to reveal himself in proportion to the quality of the service rendered to his devotee. भगवान सहमत होते हैं अपने आप को प्रकाशित करने के लिए जितनी मात्रा में आप भक्त को सेवा कर रहे हैं उस उतनी ही मात्रा में। So if someone is not bona fide authorized guru from Krishna, तो अगर कोई प्रमाणिक अधिकारी गुरु he's just कृष्ण के saying, माध्यम से I'm a नहीं, guru. वो बस कह रहे हैं मैं एक गुरु हूँ, I know some tattva and some science of Krishna and I'll quote some shloka. मुझे कुछ तत्व पता है कृष्ण का कुछ विज्ञान पता है मैं कुछ श्लोक बोल सकता So like a self-made हूँ। guru, तो खुद से बना हुआ गुरु है वो। right? So self-made guru cannot be a guru. तो स्वयं निर्मित गुरु कभी गुरु नहीं हो He सकता। must be ordered and authorized by previous acharya, उसे आदेश अधिकार प्राप्त करना होगा पूर्व आचार्य से, which is ultimately Krishna's authorization. जो कि असल में कृष्ण का ही अधिकार है। So we cannot just render some service to somebody who's saying that they're guru and then Krishna is going to reveal himself to us. तो हम किसी को भी अपनी जाके सेवा नहीं कर सकते हैं, वो कहेंगे कि वो गुरु है और कृष्ण हमारी सेवाओं के माध्यम से You'll स्वीकार be करेंगे। greatly disappointed. आपको बहुत बड़ी निराशा हाथ लग सकती Right? है। I'm serving this guru. मैं इस गुरु की सेवा कर रहा हूँ I'm not seeing and hearing Krishna anywhere. और मैं कृष्ण को न देख पा रहा हूँ न सुन पा रहा हूँ। If that's happening and you're sincere in your service, then there's disconnect. अगर ऐसा हो रहा है और आप अपनी सेवा में गंभीर हैं, एकनिष्ठ हैं, तो कुछ संपर्क टूटा हुआ है That's why very confusing. और इसीलिए बहुत भ्रमित करता है। Because if you're killing yourself and you're trying to surrender and serve the spiritual master, क्योंकि आप पूरी अपने आप को मार रहे हैं आध्यात्मिक गुरु की सेवा करने के लिए, उनको एकनिष्ठता से but गंभीरता he's से, not bona fide authorized representative of Krishna, लेकिन वो कृष्ण के प्रमाणिक आधिकारिक प्रतिनिधि नहीं है, then nothing, no effect will be there. तो वहाँ कोई प्रभाव नहीं दिखेगा। So we have to understand what is bona fide authorized guru, first of तो all. हमें सबसे पहले ये समझना होगा प्रमाणिक आधिकारिक गुरु होते कौन हैं, And ultimately Krishna says who is that. और अंततः कृष्ण ही बताएंगे वो कौन है। Prabhupada says if you want to understand who's bona fide guru, authorized guru, find out from previous acharya who that previous acharya ordered and authorized to take that position. श्रील प्रभुपाद बताते हैं आपको पता करना है कि प्रमाणिक आधिकारिक गुरु कौन है, तो आप पूर्व आचार्य के पास आइए, देखिए उन्होंने किनको आदेश और अधिकार दिया है गुरु बनने के लिए। That's the easiest way. ये सबसे आसान Because we तरीका है, can't see, क्योंकि हम देख नहीं सकते, but the previous bona fide authorized guru, we can see. लेकिन पूर्व प्रमाणिक आधिकारिक गुरु वो देख सकते हैं। So we should trust the spiritual intelligence and vision of bona fide authorized
acharya. तो हमें इस शुद्ध बुद्धि समझ को स्वीकार करना चाहिए जो पूर्व आचार्यों के Because पास he's है, most qualified to understand and to see. क्योंकि वो सबसे ज्यादा योग्यवान है देखने के लिए और समझने के लिए। Prabhupada said that's the easiest way to understand. प्रभुपाद बताते हैं ये सबसे आसान तरीका है समझने का। And of course, Krishna has to, as Paramatma Chittaguru, give intelligence और अवश्य कृष्ण परमात्मा चैत्य गुरु and आपको ये faith बुद्धि as देंगे well. और साथ ही साथ श्रद्धा भी देनी होगी। So that intelligence and faith comes from Paramatma Chittaguru within the heart of the living entity. तो वो बुद्धि और श्रद्धा चैत्य गुरु परमात्मा से आती है। And that is confirmed by the order and instruction of previous Acharya and Brahmara. और इसका पुष्टिकरण पूर्व आचार्य के आदेश और अधिकार के आधार पर पुष्टिकरण That's a critical point. ये बहुत ही महत्वपूर्ण It's बात the है। most important ये point. सबसे महत्वपूर्ण बात है। Otherwise, all your surrender, all your service, everything that you're trying to do will bear no fruit. वरना आप जितनी भी शरणागति, जितनी भी सेवा, जितना भी कुछ कार्य करने का प्रयास करें, उसका कोई फल नहीं मिलने वाला। It will not bear this fruit that Krishna is, what does it say? He's consenting to reveal himself in proportion to the service rendered to his representative. तो ये फल प्राप्त नहीं होगा। कृष्ण अपने आप को प्रकाशित नहीं करेंगे। कहा जाता है जितनी मात्रा में आप उनके प्रतिनिधि को शरणागत कर रहे हैं, उतनी मात्रा में कृष्ण प्रकाशित करने वाले हैं। It's not just anyone says they're guru, you're serving any guru, and then Krishna just revealing himself because you're serving some guru. ऐसा नहीं कि कोई भी खुद को गुरु कह रहा हो और आप उनकी सेवा कर रहे हो और कृष्ण अपने आप को आपके सामने प्रकाशित करेंगे क्योंकि आप किसी भी गुरु की सेवा कर रहे हैं। Then that will not work. तो ये काम नहीं आने वाला। And then we'll become confused. और फिर हम और भ्रमित होने वाले हैं। Because then we think, oh, I'm thinking he's bona fide authorized guru. क्योंकि आप सोच रहे हैं ये तो प्रमाणिक अधिकारिक गुरु है। But there's no revelation, there's no real effect by whatever service that is being rendered to that personality. लेकिन मुझे मेरे सामने कुछ प्रकाशित नहीं हो रहा या कुछ प्रभाव नहीं दिख रहा ऐसे प्रमाणिक जो कह रहे हैं वो प्रमाणिक गुरु है उनकी सेवा करके। So there should be undeniable proof of Krishna revealing himself proportionally to the quality and the quantity of the service rendered to his bona fide authorized representative. तो हमें अविश्वसनीय प्रभाव या हमारे सामने कृष्ण प्रकाशित होने चाहिए जितनी मात्रा में गंभीरता से एक निष्ठा से हम प्रमाणिक गुरु को शरणागत उनकी सेवा कर रहे हैं। This is MIT. ये है MIT। Don't they have in Mayapur MIT? मायापुर में नहीं है MIT। Mayapur Institute of Technology. मायापुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। Yes, this is the real engineering school. ये है असल इंजीनियरिंग स्कूल। Are we getting there? क्या हम आगे बढ़ रहे हैं सही? So in Adi Purana, आदि पुराण में बताया गया है Krishna says, "Ye me bhakta janaprata, na me bhakta cha te jana, mad bhaktanam cha ye bhaktas, te me bhakta tama mada." Translation. अनुवाद। Lord Krishna told Arjuna that those who are my direct devotees are not actually my devotees. भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं जो मेरे सीधे सीधे भक्त हैं वो मेरे भक्त नहीं हैं। But those who are the devotees of my servant, लेकिन जो मेरे सेवकों के भक्त हैं they are actually my devotees. वो असल में मेरे भक्त हैं। So if you try to just directly serve Krishna and say, I'm Bhakta of Krishna, अगर आप सीधे सीधे कृष्ण की सेवा करने का प्रयास करेंगे मैं कहेंगे मैं कृष्ण भक्त हूँ। Krishna said they're not actually my Bhakta. कृष्ण कहते हैं वो असल में मेरे भक्त नहीं है। But those who are the devotees of my dear devotee, लेकिन जो मेरे प्रिय भक्तों के भक्त हैं they are factually my devotee. वो तत्व में मेरे भक्त हैं। This is the way Krishna prefers it. इस तरीके से कृष्ण ने प्राथमिकता बनाई है। Don't blame me. मुझे कोई दोष मत दीजिए। I'm just a messenger. Don't shoot the messenger. मैं तो दूत हूँ, दूत को गोली मत मारिए। Right? I didn't make this up. This is coming from Krishna directly, his instructions. This is the way Krishna prefers that we serve him and please him. ये मैंने नहीं बनाया, कृष्ण ने ये सब बातें बताई है। कृष्ण इस तरीके से प्राथमिकता देते हैं कि कैसे हम उनकी सेवा करें, कैसे हम उनको शरणागत करें। Lord Shiva is speaking to Goddess Durga तो शिव जी दुर्गा देवी से बात कर रहे हैं from Padma Purana. पद्म पुराण Do you know all these verses? आपको ये सारे श्लोक पता है? You heard of it? आपने सुना है सर? Huh? आराधना नाम सर्वेशाम Vishnu, आराधना परम Tasmat,
Devi Tadiyanam Samadritam. You guys are better than me, you know. आप लोग मुझसे ज़्यादा बेहतर हैं। This is really nice. ये बहुत ही अच्छी बात है। It's very humbling, right, that you have to listen to me explain all of this thing to you, you know. ये बहुत विनम्र करने वाली बात है, आप लोग नीचे बैठ के सुन रहे हैं। But don't take it personal, you know. लेकिन आप अपने ऊपर I'm just quoting the Shastra. मैं बस शास्त्र की बात ही बता रहा हूँ। I'm also listening, like you're listening. I'm also listening. जैसे आप लोग सुन रहे हैं वैसे मैं भी खुद सुन रहा हूँ। I'm not trying to personally establish anything here. मैं खुद को व्यक्तिगत रूप से स्थापित करने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ। Right, this is Lord Shiva instruction. ये शिव जी के निर्देश है। And Lord Shiva is saying, out of all the different types of worship, और शिव जी बता रहे हैं सभी तरह की आराधना में worship of Lord Vishnu, that is best. विष्णु की आराधना सर्वश्रेष्ठ है। And better than the worship of Lord Vishnu और विष्णु की आराधना से भी बेहतर है is the worship of his devotee, उनके भक्तों की पूजा, the Vaishnava. वैष्णव की। One who performs worship of Lord Govinda, और जो गोविंद की पूजा करता है, but he fails to worship his dear devotees, लेकिन वो उनके प्रिय भक्तों की सेवा नहीं कर पाता, should be understood to be not a devotee of the Lord, तो उसे भगवान का भक्त नहीं माना जाता, but simply a victim of false pride. तो वो बस मिथ्या प्रतिष्ठा का से प्रभावित है। Therefore, one should always worship the Vaishnavas इसीलिए हमेशा वैष्णवों की पूजा की जानी by चाहिए all means, सभी तरीके से, for by worshiping the great devotees of the Lord, कि भगवान के महान भक्तों की one पूजा is से then also freed from all misery. कोई सारे कष्टों से मुक्त हो सकता है। In Srila Prabhupada speaking Nectar of Devotion in Vrindavan, तो श्रील प्रभुपाद भक्ति रसामृत सिंधु के ऊपर प्रवचन दे रहे हैं वृंदावन में October 23, 1972. 23 अक्टूबर 1972। Prabhupada says, so Krishna says, Mad Bhakta Puja Abhyadika, that Krishna is satisfied more when his devotee is being worshipped. बताया जाता है कृष्णा ज्यादा संतुष्ट होते हैं जब उनके भक्तों की पूजा होती है। Krishna is satisfied more when a devotee worships his devotee. तो कृष्णा ज्यादा संतुष्ट होते हैं जब कोई भक्त उनके भक्त की पूजा करता है। Krishna says, if one is worshipping me, कृष्ण बताते हैं अगर कोई मेरी पूजा करता है and one is worshipping my devotee, और कोई मेरे भक्त की पूजा करता है, then the person who's worshipping the devotee, लेकिन जो व्यक्ति भक्त की पूजा कर रहा है, he's more important than the person who is worshipping Krishna. जो भक्त की पूजा कर रहा है वो कृष्ण की पूजा करने से ज्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति Of course, we should understand really who is bhakta, who is devotee. और हमें अवश्य ये भी समझना चाहिए कौन है भक्त, Right? Because everyone say, well, I'm devotee, I'm bhakta, so you should worship me. क्योंकि सभी लोग कह रहे हैं मैं भक्त हूँ तो आपको मेरी पूजा करनी चाहिए। Right? Everybody's devotee, सभी right? भक्त, So does that mean you just worship anybody and then Krishna is more pleased? इसका मतलब आप किसी की भी पूजा करते रहे और कृष्ण बहुत So खुश that रहेंगे। means what type of यानी devotee? कि किस तरह के भक्त की बात की जा रही है, That means a Shuddha यानी Bhakta. कि शुद्ध भक्त, It means a real devotee. असल भक्त। Again, right? Know what is the actual definition. कि असल परिभाषा को जानना, Who is bona fide authorized guru? कौन है प्रमाणिक आधिकारिक गुरु, Whereby that service rendered, Krishna agrees to reveal himself to you. और जिनकी सेवा करने से कृष्ण सहमत होते हैं आपके सामने अपने आप को Who प्रकाशित is करने that devotee that being worshipped, Krishna is more pleased with you? और किस भक्त की पूजा की जानी चाहिए कि कृष्ण आपसे बहुत प्रसन्न Where होंगे, that service is more valuable. जो सेवा ज्यादा मूल्यवान It's है, not just any devotee. कोई भी भक्त नहीं, That means a real devotee. मतलब असल भक्त। And Krishna, he says who's real devotee. और कृष्ण बताते हैं कौन है असल भक्त, Those who give up every other thing जो सब कुछ त्याग कर देते हैं, to dedicate their life to me अपना जीवन मुझे and समर्पित to करने help के लिए other living entities to come to me. और बाकी जीवों की भी मदद करने के लिए मेरे तक पहुंच Krishna पाते says they are most dear to me. कृष्ण बताते हैं वो सबसे ज्यादा प्रिय है मुझे। Krishna says. कृष्ण ने ऐसा कहा है।
In Srimad Bhagavatam, श्रीमद् भागवतम में बताया गया है 2:3-23, 2:3-23 O King Rahugana, हे रहुगण राजा, the perfectional stage of devotional service, भक्ति की सर्वोत्तम स्थिति this is Shuddha Bhakti, यानी कि शुद्ध भक्ति, which is the topmost Paramahamsa stage of life, तो जो जीवन का परमहंस स्तर है, it cannot be attained इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता unless one is blessed by the dust of the lotus feet of great devotees. जब तक किसी को भगवान के महान भक्तों के चरण धूलि का आशीर्वाद न प्राप्त हुआ हो। So only by the mercy of Krishna's pure devotee spiritual master तो कृष्ण के केवल शुद्ध भक्त आध्यात्मिक गुरु की कृपा से can one attain to the platform of pure devotional service कोई शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर पाता है and get Krishna और prema. कृष्ण प्रेम प्राप्ति कर सकता है। That is never attained by your tapasya, your austerity. ये कभी भी आपकी तपस्या के माध्यम से प्राप्त नहीं किया जा सकता। It's not obtained by just Vedic worshipping process वैदिक यज्ञों का अनुष्ठानों का पालन करने से प्राप्त नहीं किया or जा सकता। accepting sannyas संन्यास ग्रहण करके or rendering your dharma according to the duties of household life, या गृहस्थ जीवन में अपना धर्म पालन करके chanting Vedic hymns, वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके or performance of penances in the hot sun या फिर कठिन प्रायश्चित करना or within the सूर्य cold water या फिर ठंडे जल के अंदर or before the blazing fire. या फिर जलते हुए अग्नि के सामने। So none of that will bring one to the perfectional stage of pure devotional service तो इनमें से कोई भी चीज शुद्ध भक्ति की सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता except worship of the lotus feet of Krishna's dear devotee. कि भगवान के प्रिय भक्तों के चरण कमल की पूजा के अलावा। In the purport, Srila Prabhupada says, और तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं in other words, Lord Shri Krishna is the property of his pure unconditional devotees. दूसरे शब्दों में कहा जाए तो भगवान श्री कृष्ण अपने शुद्ध भक्त के अधीन रहते हैं। Hare Krishna. So Krishna agrees to be the property of his pure unconditional devotees. तो कृष्ण सहमत होते हैं अपनी वो संपत्ति बन जाते हैं अपने शुद्ध अमिश्रित। Krishna says in Bhagavatam that although I am the supreme controller, और कृष्ण बताते हैं श्रीमद् भागवत में यद्यपि मैं परम नियंत्रण करता हूँ I agree to be controlled और फिर भी मैं सहमत होता हूँ मुझे by नियंत्रण करने के the लिए love and devotion of my pure unalloyed devotees. मेरे शुद्ध अमिश्रित भक्तों के प्रेम और भक्ति से। So here Prabhupada is saying that Lord Krishna is the property of his pure unconditional devotees, तो श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण अपने शुद्ध भक्त की संपत्ति होते हैं and as such only the devotees can deliver Krishna to another devotee. और ऐसे भक्त ही केवल कृष्ण को दूसरे भक्त को दे सकते हैं। Krishna is never obtainable directly. कृष्ण को कभी भी सीधे सीधे प्राप्त नहीं किया जा सकता। This is a very important ये point. बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। How we're going to get Krishna, how we're कैसे- going to capture Krishna. कैसे हम कृष्ण को प्राप्त करेंगे? Right? Those pure devotees of the Lord, Prabhupada says, they are the property. Krishna is the property of those devotees. प्रभुपाद बता रहे हैं कि कृष्ण ऐसे शुद्ध भक्तों की संपत्ति होते हैं And Krishna says that I'm only controlled by my pure devotees. और कृष्ण बताते हैं मैं मेरे शुद्ध भक्ति केवल मुझे नियंत्रण कर सकते हैं। So it says the secret of success is to get such pure devotees to pray to Krishna on our behalf. तो बताया जाता है सफलता का रहस्य है कि भगवान के ऐसे शुद्ध भक्त हमारे लिए प्रार्थना करें भगवान से। And then it's explained that Krishna will not say no to such pure devotee of the और Lord. ऐसा बताया जाता है भगवान कृष्ण ऐसे शुद्ध भक्तों को कभी ना नहीं कहते। So Krishna says those devotees who give up every other thing तो कृष्ण बताते हैं ऐसे भक्त जो अपना सब कुछ त्याग कर देते हैं to surrender, dedicate their life to me, शरणागत करने के लिए अपना जीवन मुझे समर्पित करने के लिए and especially to help other people और विशेष करके दूसरे लोगों की मदद करने के how लिए to come back to me. कैसे सभी मुझ तक पहुंच सके। Krishna says they are more dear to me. कृष्ण बताते हैं वो मुझे बहुत ज्यादा प्रिय है। Krishna says even than my own self. कृष्ण कहते हैं मुझसे भी ज्यादा वो मुझे प्रिय है।
And so Krishna agrees to be controlled by such devotee. तो कृष्णा राजी होते हैं ऐसे भक्तों के नियंत्रण में आने के I लिए। remember Srila Govinda Swami, he said, if Krishna will not say no to his devotee, then why will the devotee ask Krishna to come and sit in your filthy heart? तो मुझे याद है श्रील गौर साहब बताते थे, अगर कृष्ण अपने भक्तों को भी ना नहीं कहते तो क्यों कृष्ण के शुद्ध भक्त आके कृष्ण को आपके गंदे हृदय में आके बैठने को कहेंगे? That was a very shocking statement. तो बहुत चौंकाने वाले वाक्य उन्होंने कहे। So that means that you first become purified, become qualified. इसका मतलब पहले आप अपने आप को शुद्ध बनाइए, By योग्य बनाइए, agreeing and cooperating with that process of purification, अपने आप को राजी करके शुद्धिकरण में प्रक्रिया में जाकर गुजर कर, so that the spiritual master may ask Krishna to come manifest in your heart. अब हो सकता है आध्यात्मिक गुरु कृष्ण को कहें आकर आपके हृदय में प्रकट होने के लिए, It must be cleaned up. क्योंकि इसको पहले साफ करने की जरूरत I है। remember Gurudev said that the spiritual master loves Krishna so much मुझे याद है गुरुदेव बताते थे कि कृष्णा भगवान के शुद्ध भक्त कृष्णा से इतना प्रेम करते हैं, so why will he make Krishna to sit in your heart? तो क्यों वो कृष्णा को आके आपके हृदय में बैठने को कहेंगे? So that's very humbling, explanation, isn't it? तो बहुत ही विनम्र कर देने वाला उन्होंने वाक्य कहा। So that means we have some work to do. इसका मतलब हमें कुछ काम करना होगा। Otherwise, oh Gurudev, why you're not asking Krishna to come and sit in my heart? मेरे गुरुदेव, आप कृष्णा को मेरे हृदय में आके बैठने को क्यों नहीं कह रहे? Yeah, I'm doing enough seva. मैं तो बहुत सेवा कर रहा हूँ। I think you should pray on my behalf. मुझे लगता है आपको मेरे लिए प्रार्थना करनी चाहिए। Right? So the Guru says, okay, how much are you really cooperating? तब गुरुदेव कहेंगे तुम कितना ज़्यादा सहयोग कर रहे And हो? how clean and purified is our heart and mind consciousness? हमारा हृदय मन चित्त कितना साफ है, कितना शुद्ध है? Otherwise, we'll not even be able to see and understand and hear from Krishna anyway. वरना हम वैसे भी कृष्ण को देख समझ या सुन नहीं पाएंगे, Because the intelligence, mind, sense is not purified enough. क्योंकि बुद्धि मन इंद्रिय पर्याप्त रूप से शुद्ध नहीं है। Then Krishna is going to sit there and talk to you and you can't hear him anyway? और कृष्ण वहाँ बैठेंगे आके बात करेंगे आपसे और वैसे भी आपको कुछ सुनाई देने वाला है। So why will the spiritual master ask Krishna to do like that? तो क्यों आध्यात्मिक गुरु कृष्ण को ऐसा करने के लिए कहेंगे? Lord Chaitanya Mahaprabhu, Prabhupada continues, प्रभु आगे बताते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, he designated himself as Gopi Bhartu Bharakamalaya Dasa Dasa Anuvas. He considered himself the most obedient servant of the Lord, तो वो अपने आप को सबसे ज्यादा आज्ञाकारी भगवान के सेवकों का सेवक मानते हैं, who maintains the Gopi damsels in Vrindavan. जो गोपियों का पालन करते हैं वृंदावन की। Therefore, a pure devotee of the Lord, इसीलिए भगवान के शुद्ध भक्त he never approaches the Lord directly, वो कभी भी भगवान के पास सीधे सीधे नहीं जाते हैं, but he tries to please the servant of the Lord's servants. बल्कि वो भगवान के सेवकों को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, And thus the Lord becomes more pleased. और तब भगवान और ज्यादा प्रसन्न होते हैं। So we are not so dear to the Lord. तो हम भगवान को इतने प्रिय नहीं हैं, But if we serve those devotees who are dear to the Lord, लेकिन हम ऐसे भक्तों की सेवा करेंगे जो that's भगवान को प्रिय our हैं, natural position. जो कि हमारी स्वाभाविक We're not स्थिति trying है। to force ourselves forward हम अपने आप को जबरदस्ती आगे पहुंचाने का प्रयास नहीं कर रहे, because Krishna loves his other devotees more. क्योंकि कृष्ण अपने बाकी भक्तों को ज्यादा So if we प्रेम करते just हैं। serve them nicely, तो अगर हम केवल उनको अच्छे तरीके से सेवा करें, then Krishna will become more pleased. तो कृष्ण ज्यादा खुश हो सकते हैं। And Prabhupada says, only then can the devotee relish the taste of the tulsi leaves that are stuck to his lotus feet. और तब श्री प्रभुपाद बताते हैं कि तब वो भगवान के चरणों में लगे तुलसी का स्वाद आनंद ले सकते हैं। So how's that for judging by the result? तो ये कैसा रहा कि परिणाम के आधार पर निर्णय How करें? much are we relishing the taste of the tulsi leaves that are stuck to his lotus feet? कितना ज्यादा हम भगवान के चरण कमल में लगे तुलसी का स्वाद ले पा रहे हैं? Yes, we're big devotees, right? Well situated. बहुत बड़े भक्त हैं, बहुत अच्छी स्थिति में हैं। Pay obeisances. प्रणाम करो मुझे।
The conclusion, Prabhupada said, प्रभुपाद निष्कर्ष में बताते हैं one should be more serious about seeking the mercy of the devotee किसी को भगवान के भक्त की कृपा ढूंढने का ज्यादा प्रयास करना चाहिए than that of the Lord directly. भगवान की सीधी सीधी कृपा ढूंढने के बजाय And by one's doing so, और ऐसा करने से by the goodwill of the devotee, उस भक्त की इच्छा से the natural attraction for the service of the Lord will be revived. तो भगवान की सेवा करने की प्राकृतिक आकर्षण प्राप्त हो जाएगा My जागृत हो Gurudev जाएगा used to say, if you say, "Oh, Kripa Sindhu, you're the ocean of mercy, please shower your mercy on me," मेरे गुरुदेव कहा करते थे आप कृष्ण को कहेंगे कृपा सिंधु कि मेरे ऊपर कुछ कृपा बरसाइए then Krishna will say, I don't have anything. तो कृष्ण कहेंगे मेरे पास कुछ नहीं है I left it all down there. मैंने सब कुछ वहाँ नीचे छोड़ रखा है Go to my मेरे devotee. भक्त के पास जाओ You can get it from him. I वहाँ have से nothing. वहाँ Sorry. से तुम पा सकते हो मेरे पास कुछ भी नहीं है माफ करो Other time Gurudev said, if you say, "Oh, Kripa Sindhu, oh Krishna, please shower mercy on me," और दूसरे समय गुरुदेव ने कहा है कृपा सिंधु कृष्ण कृपा मेरे ऊपर कुछ कृपा बरसाइए then Srila Gauravinda Swami sometimes he say, Krishna will not even look at your तो face. श्रील गौरव महाराज कई बार कहते थे कृष्ण आपके शकल की तरफ भी नहीं देखेंगे Oh, Kripa Sindhu, who are you? वो कृपा सिंधु आप हैं कौन You go to my devotee. आप मेरे You भक्त के पास surrender आइए। and serve him, please him, उनको qualify सर्वोत्तम yourself. कीजिए उनको आनंद दीजिए और अपने आप को योग्यवान बनाइए Then automatically mercy will come to तो you. अपने आप ही कृपा आपके पास आएगा Such a bona fide guru is a mercy incarnation of Krishna. ऐसे प्रमाणिक गुरु कृष्ण की कृपा की मूर्ति है He is a power of attorney of Krishna's mercy. उनको कृष्ण की कृपा का अधिकार मिला The है। guru is never saying, "Oh, this is my mercy." गुरु कभी ये नहीं कहते ये मेरी कृपा है He said, "No, this is how to get Krishna's mercy." ये है तरीका कैसे कृष्ण की कृपा को प्राप्त किया जा सकता So है this is the secret of success. ये है सफलता का रहस्य Not directly doing. सीधे सीधे करने से नहीं होगा You want to hear one more? और एक आप सुनना चाहते हैं You guys look nervous about this conversation. इस चर्चा से आप लोग बहुत सहमे लग रहे हैं Okay, we'll make another one so you feel more nervous. तो हम और एक अभी बोलेंगे ताकि आपको थोड़ा और आप सहमने लगे Srimad Bhagavatam श्रीमद् भागवतम 10:10-25. 10:10-25 Although these two young men are the sons of the very rich Kuvera, यद्यपि ये दो महान संतान अमीर कुबेर के संतान I have nothing to do with them. मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं Devashi Narada, he is my dear and affectionate devotee. देवर्षि नारद मेरे बहुत ही प्रिय और मेरे स्नेह प्राप्त भक्त हैं And therefore he wanted me क्योंकि वो चाहते थे मुझे to come face to face with them. कि मैं उनसे आमने सामने जाकर मिलूं And I must do so for their और deliverance. मुझे ये करना ही होगा उनको मुक्त करने के लिए So he's not even doing for them. तो यहाँ तक कि भगवान उनके लिए कर भी नहीं रहे He's not delivering them for them. ये उनको मुक्त उनके लिए भी नहीं कर रहे Right? Devarshi Narada, he is my very dear loving devotee. देवर्षि नारद मेरे बहुत प्रिय प्रेमी So भक्त हैं he wanted वो चाहते थे that I should give them my darshan. कि मैं उनको जाके अपना दर्शन And he wanted that I should deliver them. और वो चाहते थे कि मैं इनको मुक्त करूं So this is a secret of success. ये है सफलता का रहस्य Otherwise, how we can just directly say? वरना कैसे हम सीधे सीधे बोल पाएंगे And the purport Srila Prabhupada says, because Narada Muni, he desired that Nalakuvara Manigriva, that they see Vasudeva Krishna face to face. तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि देवर्षि नारद चाहते थे कि नल कुबेर और मणिग्रीव भगवान कृष्ण को आमने सामने देख पाएं Then the Supreme Personality of Godhead, he wanted to fulfill the words of his very dear devotee Narada Muni. और परम पुरुषोत्तम भगवान अपने प्रिय भक्त नारद मुनि की बातों को पूरा करना चाहते थे If one seeks the favor of a devotee, instead of directly asking favors from the Supreme Personality of Godhead, तो अगर कोई भगवान के भक्त की कृपा पाने का प्रयास करता है सीधे सीधे भगवान की कृपा पाने के बजाय then one is very easily successful. तब कोई बहुत ही आसानी से सफल हो सकता है Srila Bhaktivinoda Thakur has therefore recommended Vaishnava Thakur Tomara Kukara. तो श्री भक्ति विनोद ठाकुर इसलिए बताते हैं वैष्णव ठाकुर तुम्हारा कुकुर
what is it? Buliya janaha more Krishna se tumara Krishna dete para. One should desire to become like a dog किसी को इच्छा करनी चाहिए कुत्ता बनने की, in strictly following a devotee. एक भक्त को बहुत ही सख्ती से पालन करने के लिए, Because Krishna is in the hand of such a devotee. क्योंकि कृष्ण ऐसे भक्तों के हाथों में है, He belongs to that devotee. वो ऐसे भक्त के ही है। Thus, without the favor of such a devotee, इसलिए बिना ऐसे भक्त की कृपा से one cannot directly approach Krishna. कोई सीधे सीधे कृष्ण तक नहीं पहुंच सकता। What to speak of engaging in his service? तो कृष्ण की सेवा में लगने की तो बहुत दूर की बात है। Narottam Das Thakur therefore said, Charya Vaishnava seva nisarapaichikeva. तो नरोत्तम दास ठाकुर बताते हैं, Unless one becomes a servant of a pure devotee, जब तक कोई भगवान के शुद्ध भक्त का सेवक नहीं बनता, one cannot be delivered from the material condition of life. कोई भौतिक बद्ध जीवन से मुक्ति नहीं पा सकता। And the Gaudiya Vaishnava society, गौड़ीय वैष्णव समाज में following in the footsteps of Rupa Goswami, रूप गोस्वामी के चरण चिन्ह का पालन करते हुए our first business is to seek shelter of a bona fide spiritual master. हमारा पहला कार्य होना चाहिए प्रामाणिक गुरु का आश्रय लेना। Adao Guv Ashraya. In Srimad Bhagavatam 3:13 4 purport, श्रीमद् भागवतम के 3:13 के तात्पर्य बता रहे हैं, not only must they hear about the activities of the Lord, उन्हें न तो केवल भगवान की लीलाओं के बारे में सुनना चाहिए, but they must also hear about the transcendental qualities of the devotees of the Lord, बल्कि उन्हें भगवान की दिव्य गुणों के बारे में भी सुनना चाहिए, who were constantly thinking of the lotus feet of the Lord within their hearts. जो निरंतर भगवान के चरण कमल का अपना हृदय में ध्यान लगाए रहते हैं। A pure devotee of the Lord cannot be separated from the lotus feet of the Lord. भगवान के शुद्ध भक्त को भगवान के चरण कमलों से कभी अलग नहीं किया जा सकता। Therefore, such pure devotees of the Lord are as glorious as the Lord. इसलिए भगवान के ऐसे शुद्ध भक्त भगवान के जितने ही महान होते हैं। They are in fact recommended by the Lord as more worshipable than even He Himself. और यहाँ तक कि ऐसे भक्तों को भगवान खुद से भी ज्यादा पूजनीय मानते हैं। So worship of the devotee is more potent, it's more effective तो भक्त की सेवा ज्यादा शक्तिशाली है than direct worship of the Lord. भगवान की सीधी सीधी सेवा पूजा से। It is therefore the duty of the transcendental students इसीलिए दिव्य शिष्यों का ये कर्तव्य है to hear of pure devotees, कि वो शुद्ध भक्तों के बारे में as सुने, explained by similar pure devotees of the Lord. जो भगवान के शुद्ध भक्त के उनके ही बारे में बताते हैं। Because one cannot explain about the Lord or His pure devotee क्योंकि कोई भगवान या फिर उनके शुद्ध भक्त के बारे में नहीं बता सकता unless one happens to be a pure devotee himself. जब तक कोई खुद एक शुद्ध भक्त ना हो। That's very interesting. ये बहुत ही दिलचस्प बात है। I asked Srila Govinda Swami, Gurudev, you have to be a pure devotee to recognize pure devotee. मैंने श्री गौर गोविंद साहब महाराज को सवाल पूछा कि हमें खुद शुद्ध भक्त बनना हो एक शुद्ध भक्त को पहचानने के लिए, And Gurudev said, yeah. और गुरुदेव ने कहा हाँ, Otherwise, how will you recognize them? वरना कैसे आप उनको पहचान पाएंगे। So without the mercy of Krishna, mercy of Sadhu Guru Vaishnava, how are we going to become pure devotee? तो कृष्णा साधु गुरु वैष्णव की कृपा के बिना कैसे हम शुद्ध भक्त बन पाएंगे। And without purified intelligence, mind and senses, how will we recognize Krishna? How will we recognize Krishna's dear devotee? तो बिना शुद्ध मन बुद्धि इंद्रिय के कैसे हम कृष्ण के शुद्ध भक्त को पहचान पाएंगे। One cannot explain about the Lord कोई भगवान के बारे में बता नहीं सकता or His pure devotees या उनके शुद्ध भक्त के बारे में unless they themselves are pure devotees of the जब Lord. तक वो खुद भगवान के शुद्ध भक्त ना हो, Because otherwise their so-called understanding and explanation is just a theoretical. वरना उनका नाम मात्र का विवरण केवल मौखिक होगा, सैद्धांतिक होगा। Therefore will not have same potency. इसलिए उनमें एक समान शक्ति नहीं होगी। Any points or questions on this so far? कोई प्रश्न या कोई बात कोई कहना चाहते हैं अभी तक में? Yeah. Hare Krishna.
Hare Krishna, Swami. So, like if somebody is completely sincere, fully sincere, Somebody what? is fully sincere, Fully sincere. in service of his spiritual master, who is not a bona fide spiritual master. Then he's not fully sincere. प्रभु सवाल पूछ रहे हैं, अगर कोई पूरी तरह से एकनिष्ठ है अपने गुरु की सेवा में, लेकिन वो गुरु प्रमाणिक नहीं है, तो गुरु बता रहे हैं कि यानी कि वो पूर्ण तरीके से एकनिष्ठ नहीं है. Because if you're fully sincere, you would have a bona fide spiritual master. क्योंकि अगर आप पूर्ण रूप से एकनिष्ठ हैं, तो आपको प्रमाणिक गुरु मिलेंगे. So you can't have, a guru sent by Maya and said, I'm fully, sincerely serving him. तो ऐसा नहीं हो सकता आपको माया के द्वारा गुरु मिला हुआ हो और आप कहेंगे आप पूरी तरीके से एकनिष्ठ हैं कृष्ण की सेवा में. So Prabhupada says, if you sincerely, seriously want to fully surrender to Krishna, then Krishna will send you a bona fide guru. बात बताते हैं अगर आप बहुत ज्यादा एकनिष्ठ हैं, गंभीर हैं कृष्ण को शरणागत सेवा करने के लिए, तो कृष्ण आपको प्रमाणिक गुरु भेजेंगे. And that is the first installment of Krishna's mercy. और ये कृष्ण की कृपा की पहली किस्त है. So if you don't get mercy of Krishna and bona fide guru, तो आपको कृष्ण और प्रमाणिक गुरु की कृपा नहीं then मिलेगी. how you're coming to the conclusion that you're fully surrendered and sincere? तो कैसे आप इस निष्कर्ष पे पहुंच रहे हैं कि आप पूर्ण शरणागत हैं या पूर्ण एकनिष्ठ हैं? What is the proof of that? इसका प्रमाण क्या है? Well, I feel that way. मुझे ऐसा महसूस होता है, I'm thinking that way. मुझे ऐसा लगता That है, I विचार have होता है loving devotion and I have faith and I'm surrendering and I'm serving. मेरे पास प्रेम भक्ति है, मेरे पास श्रद्धा है, मैं शरणागत कर रहा हूँ. That's my opinion. ये मेरा ख्याल है. But shouldn't that be rewarded? लेकिन क्या उसका पुरस्कार भी वैसा नहीं होना चाहिए? So if we are not getting that type of intelligence and faith, then that means how sincere and serious are we? अगर हम इस तरह की बुद्धि श्रद्धा नहीं मिल पा रही, इसका मतलब हम कितने एकनिष्ठ और गंभीर हैं. Why Krishna not giving intelligence and faith to serve proper person? Why we're serving some other person? क्यों कृष्ण हमें बुद्धि श्रद्धा नहीं दे रहे सही व्यक्ति की सेवा करने के लिए? हम किसी गलत व्यक्ति की सेवा क्यों करने में लगे? Right? My Gurudev used to say, what kind of guru do you want? Guru sent by Krishna or guru sent by Maya? मेरे गुरुदेव कहा करते थे, किस तरह के गुरु आप चाहते हैं? कृष्ण के द्वारा भेजा हुआ गुरु या माया के द्वारा भेजा हुआ गुरु? So this is very controversial. ये बहुत विवादास्पद बात है. But Srila Prabhupada says the same thing. और श्रील प्रभुपाद बिल्कुल यही बात If कहते you're हैं. cheating, then you deserve cheating guru. अगर आप ठग रहे हैं तो आपको ठग गुरु ही मिलेंगे. If you really want to surrender and serve Krishna, then Krishna will send you a nice guru. अगर आप असल में कृष्ण की शरणागत को सेवा करना चाहते हैं तो कृष्ण आपको एक अच्छे गुरु भेजेंगे. So if you're just serving self-made guru, you can't say, I'm fully sincere in my service to this self-made guru. तो अगर आप एक स्वयं निर्मित गुरु की सेवा करने में लगे हैं और एकनिष्ठ आप कह रहे हैं मैं पूरी तरह से एकनिष्ठ हूँ कृष्ण की शरणागत सेवा करने में. It's like you sit like in Vedic culture, they say your mother and father is the guru. जैसे वैदिक संस्कृति में कहा जाता है आपके माता पिता भी गुरु होते हैं. Right? But they're demons. लेकिन अगर वो है असुर, Right? Because they have no faith in Krishna. क्योंकि उनके पास कृष्ण के They're not प्रति कोई श्रद्धा surrendered नहीं, to Krishna. कृष्ण का वो शरणागत नहीं है. So how are they guru? तो कैसे है वो गुरु? The guru. वो गुरु है. Right? They say, I am fully dedicated to surrendering and serving and pleasing my mother and father because by Vedic culture they are my guru. मैं पूरी तरह से शरणागत हूँ, समर्पित हूँ उनको आनंद देने के लिए, उनको सुख करने के लिए मेरे माता और पिता को, क्योंकि वैदिक संस्कृति कहती है वो गुरु है. So does that mean that you're fully sincere and serious about your loving devotional service to Krishna? क्या इसका मतलब आप पूरी तरह से एकनिष्ठ हैं अपने प्रेम में भक्ति में सेवा कृष्ण के You're प्रति करने में? surrendering and serving those people who are against Krishna? और ऐसे लोगों को आप शरणागत और सेवा कर रहे हैं जो कृष्ण के विरोध में हैं. And then Krishna is supposed to accept that and reveal himself to you? और कृष्ण उसको स्वीकार करके आपको अपने सामने प्रकाशित करेंगे Because you're serving, the gurus? क्योंकि आप गुरुओं की सेवा कर रहे हैं. Right? Whoever is surrendered servant of Krishna, really? जो असल में कृष्ण की शरणागत सेवक है, They can become guru. तो वो गुरु बन सकते हैं. So if your mother, it says, Chanika Pandit said that if you cannot deliver your children, then you should not be a parent. चाणक्य पंडित बताते हैं अगर आप अपने बच्चों को मुक्त नहीं कर सकते तो आपको माता पिता नहीं बनना चाहिए.
You know, in modern society they say my deliverance is if I get them through the university, you know. और आधुनिक समाज ये कहता है अगर मेरा मुक्ति तभी होगा जब मैं इनको यूनिवर्सिटी में दाखिला दिला पाऊंगा। Until they get their first big job and make a lot of money, that is my deliverance. पहली नौकरी आएगी, बहुत पैसे कमाएंगे, ये मेरी मुक्ति होगी। Then after that, I'm just to be rewarded. और उसके बाद जो है मुझे पुरस्कार मिलेगा। What does this have to do with bhakti? इसका भक्ति से क्या लेना देना है? Chanakya says, no, you deliver them from birth and death. चाणक्य पंडित बताते हैं नहीं, आपको उनको जन्म और मृत्यु से मुक्ति दिलानी होगी। Right, and bring them back to Krishna, back to Godhead. और उन्हें कृष्णा के पास वापस भगवत धाम लेकर आओ। Then that is a worshipful mother and father. That's a really guru. तो वो पूजनीय माता पिता है, वो असल में गुरु है। Otherwise, while you're fully, sincerely, you know, surrendered and trying to serve and please these people who are against Krishna. मतलब क्यों आप पूर्ण रूप से ऐसे लोगों को खुश करने में लगे हैं, शरणागत करने में, सेवा करने में, जो कृष्ण के Who विरोध have no faith in Krishna. जिनके पास कृष्ण के प्रति कोई श्रद्धा नहीं है। What benefit do you think you're getting? क्या लाभ आपको मिल रहा है? Am I misunderstanding something? क्या मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ? Right, you see now Lord Nishigadev, right, tomorrow appearance day. अब जैसे देखिए कल निशिंगदेव का आविर्भाव दिवस Right, है, his father tried to kill him. तो उनके पिता उनको मार देना चाहते थे। You talk about being against your own family. आप अपने परिवार जो खुद आपके विरोध में हो उसकी क्या बात करें? He's trying to kill his own child. वो अपने बच्चे को मारने के लिए तैयार था। So he should just worship, you know, his father as a guru. तो क्या उसे अपने पिता को गुरु के रूप में पूजा करनी चाहिए? And he's trying to kill him? और वो उसे मारने का प्रयास कर रहे हैं। Did someone have a question? You asked me a question? किसी को प्रश्न What was आपने the सवाल पूछा था? Sometimes I forget, you know. कभी-कभी मैं भूल जाता हूँ। If somebody is like fully sincere, so and he is serving a non-bona fide spiritual master, Then he's not fully sincere, right? तो प्रभु सवाल पूछ रहे हैं, अगर कोई पूर्ण रूप से एकनिष्ठ है और वो सही गुरु को शरणागत उनकी सेवा नहीं कर रहा, तो गुरुदेव बता रहे हैं यानी कि वो पूर्ण रूप से एकनिष्ठ नहीं है। Right? ऐसा है या नहीं? What else? और क्या? so there can be no this kind of case that who really wants to serve Krishna, who really wants to please Krishna, at the same time he is serving non-bona fide person. Then you're serving Maya. तो प्रभु बता रहे हैं ये संभावना फिर है ही नहीं, अगर कोई पूरी तरह से एकनिष्ठ है कृष्णा को शरणागत सेवा करने के लिए और वो सही गुरु की सेवा नहीं कर रहा है, गुरुदेव बता रहे हैं ऐसा में फिर वो पूरी माया की सेवा कर रहा है। Wasn't it Shukracharya? So, he's telling Bali, This is शुक्राचार्य, don't listen to this Vamana, right? बलि महाराज को कहते हैं वामन को सुनो मत, Right? He's going to take everything materialistically away from you. ये सारा भौतिक चीजें आपसे छीन लेंगे। Right? So that's his guru. That's Bali Maharaj's guru. तो वो बलि महाराज के गुरु थे, But Bali Maharaj, he rejected his guru लेकिन बलि महाराज ने अपने गुरु को ही त्याग कर दिया, because his instruction was against the will and desire of the Lord. क्योंकि उनका निर्देश भगवान की इच्छा के खिलाफ था। So that's not the real bona fide guru. वो असल प्रमाणिक गुरु नहीं है। And if somebody is really praying in his heart to serve Krishna, then he gets a bona fide spiritual master. But is there another way that if the devotee of Lord wants to give mercy to the fallen souls even without their praying, so can they give mercy to the fallen souls? Like Srila Prabhupada went to West, started preaching to the APs. I think they Some Agyata Sukriti. वो सवाल पूछ रहे हैं अगर हृदय में कोई एकनिष्ठ इच्छा हो तो कृष्णा उनको प्रमाणिक गुरु भेजते हैं, लेकिन कहीं ऐसा भी हो सकता है कि भगवान के शुद्ध भक्त चाहे किसी को कोई कृपा देनी चाहते हैं और उनको वो शुद्ध करे, उनको उस तरह से कृपा, जैसे श्रीला प्रभुपाद जो विदेश में गए तो गुरुदेव बता रहे हैं हाँ जैसे अज्ञात स्वीकृति होती है। Somehow or other he wants to try to shower causeless mercy on living entities. इसी तरह से अगर वो चाहते हैं कि जीवात्माओं को अपनी आयत की कृपा बरसाएं, Those who are a little bit simple, तो जो थोड़े से सरल होते हैं, little bit innocent, थोड़े से नादान होते even though they're completely ignorant, हैं, हो सकता है पूरी तरह से वो अज्ञान है, they can get some mercy उनको कुछ कृपा मिल सकती है, because it's a little bit easier to wake them up. क्योंकि उनको जगाना थोड़ा आसान होता है।
Right? If someone's very simple and you shake them, immediately they'll wake up. अगर कोई सरल है आप उसको थोड़ा हिलाएंगे तुरंत वो जग If जाएगा। they're sleeping, right? अगर वो सो रहे हैं, You shake them, they'll immediately wake up if they're simple. अगर आप वो सो रहे हैं आप उनको हिलाएंगे तुरंत वो जाग जाएंगे। But if they're not so simple, they're crooked people. लेकिन अगर सरल नहीं है, कपटी आदमी है, No matter how much you try to wake up such a sleeping crooked person, they'll just keep acting like they're sleeping. आप कितना भी उसको हिलाने उठाने का प्रयास करेंगे जगाने के लिए, ऐसा कपटी आदमी नाटक करता रहेगा कि वो सो रहा है, They'll just keep snoring. वो खर्राटा मारता रहेगा, Right? Because there's a crookedness is there. क्योंकि उनके अंदर कपट है। Right? So if you're a little bit simple, innocent-minded, but just foolish or ignorant, अगर वो थोड़ा सा सरल व्यक्ति है और लेकिन थोड़े अज्ञानी है, थोड़े मूर्ख है, then you can still get some causeless mercy तो उनको कुछ अहेतुक कृपा मिल सकती है। when you hear holy name from pure devotee. जब भगवान के शुद्ध भक्त से दिव्य नाम You श्रवण hear करें, Hari-katha Krishna-katha. हरिकथा कृष्ण कथा श्रवण करें, Then immediately, if you're a little simple and innocent, that katha will immediately wake you up. अगर आप थोड़े सरल और नादान हैं तो वो कथा तुरंत आपको जगा देगी। But if we're very crooked लेकिन अगर हम बहुत कपटी हैं and very covered over, big false ego, और बहुत ज़्यादा ढके हुए हैं, हमारा मिथ्या अहंकार बहुत बड़ा है, not at all simple, बिल्कुल भी सरल नहीं है, practically it's impossible to wake them तो up. व्यवहारिक रूप से ऐसे लोगों को जगाना असंभव It है। says those are the only people who, those kapatis, they're the only people who cannot get Mahaprabhu's mercy. बताते हैं यही वो कपटी हैं जो महाप्रभु की कृपा को प्राप्त नहीं कर सकते। That's why Prabhupada said, try to find some simple, innocent people. विशेष शिला प्रभुपाद बताते थे कुछ सरल नादान लोगों को खोजने का प्रयास करें। Even they don't know anything. हो सकता है उनको कोई भी ज्ञान ना हो, Because of that simplicity and innocence, when they hear that message, immediately they'll wake up. इस सरलता और नादानी के कारण जैसे वो तुरंत इस संदेश को सुनेंगे वो जाग जाएंगे। You try to preach to Mayavadis and big scholars and the very proud individuals. Practically, you cannot crack through all of that. आप बड़े मायावादी या कोई बड़े विद्वान को समझाने का प्रयास करेंगे, उनको हम समझाना बहुत ही मुश्किल है, Because they're great offenders क्योंकि वो बहुत बड़े अपराधी हैं and they're against the Lord. They're envious of the और Lord. भगवान के विरोध में वो भगवान से द्वेष करते हैं And there's a great pride, crookedness is और there. उनके अंदर बहुत सारा कपट है, बहुत दम्भ है, So it's very difficult to get through to them. तो उनके पास उन तक पहुंच पाना बहुत ही कठिन है। Unless you're like Mahaprabhu, अगर आप महाप्रभु के जैसे हैं and you can deliver the Buddhists, तब आप जो है बुद्धिस्ट लोगों का भी the personalists, the Mayavadis. मायावादियों का भी उद्धार कर सकते हैं, You can deliver anyone you want आप जिसको चाहे उसका उद्धार कर सकते by causeless हैं mercy. अपनी अहेतु की कृपा से। But if we're not on that platform लेकिन अगर हम उस स्तर पे नहीं हैं and we don't have that kind of potency, और हमारे अंदर वैसी शक्ति नहीं है, then we should just find some innocent, simple-hearted person, तो बात बताते हैं आपको सरल और नादान हृदय वाले लोगों humble को state ढूंढना of चाहिए mind, try to tell them about Krishna. और विनम्र मनोभाव से उनको कृष्ण के बारे में बताने का हरे प्रयास करना कृष्ण। चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र That करना katha, चाहिए। that holy name, that will, wake them up quickly. वो कथा भगवान का दिव्य नाम तुरंत उनको जगा देगा। Like our friend last night, right? He does the first kirtan he ever heard. जैसा हमारे मित्र पिछली रात उन्होंने अपने जीवन का पहला कीर्तन सुना, First class he really ever heard. पहला क्लास जो असल में उन्होंने कभी सुना, But immediately he came to understand what is happening. लेकिन तुरंत ही वो समझ गया कि क्या हो रहा है, Because he's little simple, you could make him understand the situation. क्योंकि वो थोड़े सरल थे, उनको परिस्थिति समझाना आसान था। Otherwise he's sitting here and he's saying, I'm praying to Krishna, like, why you're not helping me to understand something? And he's sitting in the room, और वो कमरे में बैठ के कृष्णा से प्रार्थना करने का प्रयास करे, आप मेरी मदद कीजिए कि कैसे मैं कुछ चीजों को समझ नहीं पा रहा चीज़ों को, where he can hear something. और ऐसी जगह बैठा है जहाँ वो कुछ सुन सकता है। So he's basically complaining while Krishna is giving him mercy. तो वो उसी समय शिकायत कर रहा है जिस समय कृष्णा उसको यहाँ कृपा दे रहे हैं, Because he's not connecting the two things. क्योंकि वो दो चीजों को जोड़ कर नहीं देख पा रहा। But because he's a little simple, लेकिन क्योंकि वो थोड़ा सरल then you था, could just make that connection. तो वो संपर्क बना पाए, And then like a light bulb went on, और फिर जो है उसके दिमाग की and बत्ती he said, जली। oh, this is that, how Krishna helping me. तब वो समझ रहा, ओ ये इस तरीके से कृष्णा मेरी मदद कर रहा Right? It was kind of funny. है। ऐसा बहुत मजाकिया हुआ। That's the importance of the simplicity. ये है सरलता का महत्व। When devotees are trying to put the Prabhupada's books in the universities and
preaching to all these big jnanis and so-called scholars, and they were getting bamboozled. जब श्रील प्रभुपाद के शिष्य ये श्रील प्रभुपाद की किताबें विश्वविद्यालय में देने जा रहे थे, बड़े ज्ञानियों बड़े विद्वानों को समझाने का प्रयास करे, तो वो पूरी तरह से उनका दिमाग ही भ्रमित हो गया उनसे। And even those scholars were criticizing Srila Prabhupada translation. और यहाँ तक कि ये विद्वान श्रील प्रभुपाद के अनुवादों के अंदर 2 गलतियाँ निकाल रहे थे। And these disciples of Prabhupada, they were getting influenced by the criticism of their spiritual master. और ये श्रील प्रभुपाद के शिष्य उन लोगों के श्रील प्रभुपाद की किताबों बुराई निकालने से वो प्रभावित हो रहे थे। So they were finding fault with Prabhupada. तो प्रभुपाद के अंदर वो लोग भी गलती निकाल They रहे were थे। not listening to Prabhupada because they lost the faith, और प्रभुपाद को फिर वो सुन नहीं पा रहे थे क्योंकि उनकी श्रद्धा खत्म हो गई because of this asatsanga. इस असत्संग के कारण। And Prabhupada trying to chastising them, और फिर trying to प्रभुपाद correct them, उनको डांटने लगे, उनको trying सुधारने to के help लिए, them. उनकी मदद करने के But लिए, they could not hear anything. लेकिन वो कुछ भी सुन नहीं पा रहे थे। And then they're thinking, wow, we're trying to get these books in the universities, and we're trying to get these big important, scholars to understand about your books and teaching. और वो सोच रहे थे हमें बड़ी-बड़ी विश्वविद्यालय में अपनी किताबें डलवाना चाहते हैं, ये बड़े-बड़े विद्वानों को हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं अपनी किताबों अपनी शिक्षाओं पर। And Srila Prabhupada said, you cannot convince these people. और श्रील प्रभुपाद ने कहा ऐसे लोगों को आप नहीं समझा सकते। Just go find some innocent, simple-hearted people. कुछ सरल नादान हृदय वाले लोगों को ढूंढो। And then sincerely introduce my books and teaching. और एक निष्ठा से मेरे किताब और शिक्षाएं उनको समझाने का Then प्रयास करो। very quickly they can come to understand what's happening. तो बहुत ही आसानी से वो समझने लगेंगे क्या हो रहा है। So it's very simple, very innocent, but still ignorant and don't really understand anything. You still can get causeless mercy. अगर कोई सरल है, नादान है, थोड़ा सा मूर्ख है, तो फिर उनको भी अहेतु की कृपा मिल सकती है। But crooked and arrogant, and prideful, envious of Krishna's devotees, then practically nobody can deliver you. लेकिन अगर कपटी है, दम्भ है, द्वेष करता है कृष्णा के भक्तों से, तो कोई ऐसे व्यक्ति को मदद नहीं कर सकता। No one can wake you up. कोई उनको जगा नहीं सकता। So, like after being preached by a pure devotee, the devotees they start like serving the devotee and faithfully start serving faithfully, but finally they cannot become pure devotee. Why not? Like it happens like when Prabhupada started preaching. So they were like simple. They took the process, but at the end result. And they became contaminated and crooked, right? So why is it? How we can understand this? Satsanga. तो प्रभु सवाल पूछ रहे हैं कि अगर कोई सरल है, श्रद्धावान है, उनकी सेवा करना शुरू करता है, लेकिन हो सकता है वो शुद्ध भक्त ना बन पाए, तो गुरुदेव बता रहे हैं अगर उनकी सरलता चली जाए, उनके अंदर कपट आ जाए, दूषित हो जाए वो असत्संग के कारण, तब वो ये ऐसा शुद्ध भक्त नहीं बन सकते। Because of this strong attraction to Maya. और ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली आकर्षण आसक्ति माया के प्रति। And this addiction to mental speculation, material sense gratification. और मनोधर्म भौतिक इंद्रिय तृप्ति के जो ये नशा लगा हुआ है। If we don't take very seriously this process, तो अगर हम इस प्रक्रिया को गंभीरता से नहीं लेंगे and continue to be sheltered and protected in this hearing chanting process, और निरंतर हम इस श्रवण और कीर्तन की प्रक्रिया का आश्रय नहीं लेंगे, in good association, अच्छे संग में, then we're still susceptible to Maya. अभी भी हम माया से प्रभावित हो सकते हैं। It's just like it says, if you, Prabhupada gives the example, like you have some disease, you took some medicine and treatment, then you become free from that disease. प्रभु जैसे उदाहरण देते हैं, जैसे आपको कोई बीमारी हो, आपने उसकी दवा ली हो और उस बीमारी से आप मुक्त हो गए हैं, But you're not yet strong after having the disease. लेकिन बीमारी को होने के बाद अभी तक आप वापस से शक्तिशाली नहीं हुए, So you're in a very vulnerable situation. तो आप अभी भी वापस खतरनाक स्थिति में हैं। So if you stay in a nice protected environment, then you can build up your strength. तो अगर आप सुरक्षित वातावरण में रहेंगे तब अपनी शक्ति को वापस से प्राप्त कर सकते हैं। But if you don't do that, then even you got free from the disease, if you don't protect yourself, then very easily you can catch it again. लेकिन अगर आप उस बीमारी से मुक्त हो गए हो, लेकिन आप उस सही वातावरण में नहीं है, तो वापस से वो बीमारी आपके ऊपर आ सकती है। A very nice analogy. ये बहुत ही अच्छा उदाहरण है।
Yeah? So? Are you satisfied? क्या आप संतुष्ट हैं? How can we know the difference between being sentimental and being sincere? वो सवाल पूछ रहे हैं Sentimentally sincere or really sincere? कैसे हम अंतर पता लगा सकते हैं कि हम भावुक होकर एकनिष्ठ हैं या असल में हम एकनिष्ठ हैं? How can we understand if our sincerity is real or sentimental? कैसे हम पता लगा सकते हैं कि हमारी एकनिष्ठता असल है या फिर ये केवल भावुक है? Because everybody wants to feel that they're very, very real, क्योंकि सभी लोग ये महसूस करना चाहते हैं कि वो जो कर रहे हैं बिल्कुल असली है। right? Very authentic. Everyone wants to feel very authentic. सभी लोग महसूस करना चाहते हैं वो प्रामाणिक कार्य कर रहे हैं। That's good ये बहुत अच्छी बात है that we want to be like that. कि हम वैसे बनना चाहते हैं। Now it's a question of is it real or is it not real? तो अब सवाल ये है कि ये असली है या असली नहीं है। So if we don't get mercy from Krishna and from bona fide guru, तो अगर हम कृष्ण प्रामाणिक गुरु की कृपा प्राप्त नहीं कर पाते हैं, then we're not engaged in that sambandha gyan, and that established relationship is not established, and we're not engaged in loving service in that relationship, then what is the meaning of our sincerity? और अगर हमारा संबंध स्थापित नहीं है और उस संबंध में हम सेवा करने में नहीं लगे हैं, तो हमारी एकनिष्ठता का क्या मूल्य है? That's the first thing. ये सबसे पहली चीज। Right? If Krishna, we don't get the mercy of Krishna and bona fide guru, then what is our sincerity? अगर हमें कृष्ण और प्रामाणिक गुरु की कृपा नहीं मिल रही है, तो हमारी एकनिष्ठता का क्या अर्थ है? If we're not getting any mercy and benefit from Guru and Krishna, then why should we think that we're so worthy? तो अगर हमें कृष्ण का कृपा उनका आशीर्वाद लाभ नहीं मिल पा रहा, तो क्यों हम सोच रहे हैं हम एकनिष्ठ हैं? So Prabhupada said you're judged by the effect or the results. तो बात कहते हैं आप फल के आधार पे, परिणाम के आधार पर निर्णय कीजिए। So if we're not able to get mercy from Krishna, from the Guru, तो अगर हम कृष्ण या गुरु से कृपा प्राप्त नहीं कर पा रहे, then there is no meaning to our so-called sincerity and seriousness about spiritual life. तो आध्यात्मिक जीवन में हमारी एकनिष्ठता गंभीरता का कोई अर्थ नहीं। Then if we get instruction from Krishna through the Guru, और अगर हमें कृष्ण का निर्देश गुरु के माध्यम से प्राप्त होता है, then it says you make that instruction your life and your soul. बताया जाता है वो निर्देश आपको जीवन में आत्मसात करना चाहिए। That is the secret of success in spiritual life, Prabhupada said. प्रभुपाद बताते हैं ये आध्यात्मिक जीवन में सफलता का रहस्य है। So do we have Krishna's instruction through bona fide Guru? तो क्या हमारे पास कृष्ण के निर्देश हैं जो प्रामाणिक गुरु से हमें प्राप्त हुए? Have we accepted those instructions as our life and our soul? क्या हमने उन निर्देशों को जीवन में आत्मसात किया है? And then what is the quality and the quantity of that seva? और हमारी सेवा की गुणवत्ता क्या, उसकी मात्रा कितनी है? That will be measured. इसको मापा जाएगा। Otherwise, how do we understand what is our sincerity or surrender? वरना हम कैसे समझ पाएंगे हमारी एकनिष्ठता, हमारी शरणागति कहाँ तक है? Make sense? हम समझ So पाएंगे। where are we in that process? तो इस प्रक्रिया में हम कहाँ पहुँचे हैं? Yes, sir. Tell me. बताइए। Does that help? क्या आप सब आपको मदद हुई? Otherwise, you just say, well, my feelings and emotions tell me I'm fully surrendered. और आप कहेंगे मेरी भावनाएं, मेरा अनुभव बता रहा है कि मैं पूरा शरणागत कर चुका हूँ। And my idea and my heart tells me I'm sincere and serious. और मेरा हृदय, मेरा विचार मुझे बता रहा है मैं बहुत गंभीर हूँ, एकनिष्ठ हूँ। And I'm fully surrendered. और मैं पूर्ण शरणागत हूँ। And Prabhupada said then if you see if your spiritual master is happy with you, then you can understand Krishna is happy with you. और प्रभुपाद कहते हैं अगर आप देख पाएंगे कि आपके आध्यात्मिक गुरु आपसे खुश हैं, तो आप समझ पाएंगे कृष्ण भी आपसे खुश हैं। So if the spiritual master is not happy with you, अगर आध्यात्मिक गुरु आपसे खुश नहीं है, that means Krishna is not happy with तो you. मतलब कृष्ण आपसे खुश नहीं है। And then what do we say? Well, what is Guru and Krishna's problem? I'm sincere and serious. I feel positive. और हम कहते हैं कि गुरु कृष्ण के में क्या समस्या है? मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे सकारात्मक महसूस हो रहा है। I think I'm sincere and serious. मुझे लग रहा है मैं एकनिष्ठ और गंभीर हूँ। Hare Krishna. Hare Krishna. Welcome back. वापस से स्वागत है आपका। During the time of Mahabharata, Arjuna had Shri Krishna,
A kind of what? Arjun had Shri Krishna with him. During the time of Mahabharata, then Arjuna, he had Sri Krishna with him. Yes, he's always with him. Yes. So in today's world, we need to find Guru In today's world, we need to find Guru Yes. to like get the mercy of Lord Krishna. Why don't Lord Krishna directly come here as he were at that time and liberate us from all this? He's busy. तो वो सवाल पूछ रहे हैं कि जैसे महाभारत के समय में कृष्णा के सामने अर्जुन खुद मौजूद थे, तो वर्तमान में हमें गुरु ढूंढना पड़ता है। क्यों कृष्णा खुद आके हमें मुक्त नहीं करते हैं? तो बुद्ध बता रहे हैं क्योंकि कृष्णा थोड़े व्यस्त हैं। So he directly was there present in his physical form. Sometimes he comes, तो कह रहे वो अपने व्यक्तिगत रूप में वहाँ मौजूद थे। प्रभु सवाल पूछ रहे, बुद्ध बता रहे कभी-कभी वो आते हैं when he's not so busy, जब वो ज़्यादा व्यस्त नहीं होते हैं, then he comes here also तो वो भी यहाँ आते हैं। in Dwapar Yuga. द्वापर युग में आते हैं। Once in the day of Brahma. ब्रह्मा के एक दिन में आते हैं, एक बार। So how long is one day of Brahma? ब्रह्मा का एक दिन कितना लंबा होता है? 1,000 cycles of all of the 4 yugas. तो 4 युगों का 1000 बार चक्र ये ब्रह्मा का एक दिन होता है। So Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapar Yuga, Kali Yuga. सत्य युग, द्वापर युग, त्रेता युग, द्वापर और कलि युग, 4 युग। So that whole cycle of all the yugas 1,000 times. तो ये 4 युगों का चक्र जब 1000 बार पूरा होता है, Then Krishna appears तब कृष्ण प्रकट होते in the Dwapar Yuga हैं उस द्वापर युग में to speak Bhagavad Gita. भगवद गीता बोलने के लिए। Otherwise he has other engagements. वरना उनके पास और भी काम है। So if he has created everything, He has stated everything. he has created everything. Yeah. Living entity, non-living entity, the universe. So he has the authority. So why he would want a person to go find a guru and then come get my mercy? So he can directly. Why did Krishna set it up like that? That the jiva has to approach the guru to get mercy. Why he set it up like that? And why can't we like deal with him or get his mercy directly, or don't we engage in this material world and suffer like this? So if somebody, तो प्रभु का सवाल है कि क्यों हमें कृष्ण ने ऐसी व्यवस्था ये बनाई है कि जीवात्मा को गुरु के माध्यम से जाना पड़ता है, उनकी कृपा प्राप्त करनी होती है। वो कृष्ण के पास सीधे सीधे जाकर उनकी सेवा क्यों नहीं कर सकते? क्यों उन्हें इस भौतिक जगत में दुख भोगना पड़ता है और गुरु के माध्यम से इस प्रक्रिया से गुजरना होता है? so in material world, if someone is very big personality, जैसे भौतिक जगत में कोई बहुत महान व्यक्ति है, they may send their power of attorney. तो हो सकता है वो अपने प्रतिनिधि को किसी कहीं पे भेजे। They may send their some peon, तो हो सकता है अपने किसी चपरासी को कहीं भेजे, some representative, अपने प्रतिनिधि को भेजे, right? Or the president, he may send some senior official in the State Department. या जो राष्ट्रपति हैं वो अपने राष्ट्र के किसी वरिष्ठ प्रतिनिधि को भेजे। So they're representing that president or prime minister तो वो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं on behalf of that country. उस देश के तरफ से। So they're treated as representing that country when they go to other countries. तो उनका उसी तरीके से उनके साथ व्यवहार किया जाता है कि वो उस देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए आए हैं। So if the State Department in charge comes to the other country, does the other country say, why I have to talk to you? तो जैसे किसी The एक prime minister should come here and talk to me. किसी एक राज्य के प्रतिनिधि दूसरे राज्य में आते हैं तो कहते हैं कि राष्ट्रपति को सीधे से आना होगा, क्यों उन्होंने प्रतिनिधि को भेजा है। So I understand that this is a material world and we have to go through the process, but Krishna has every power. He has power to use his representatives also. तो जैसे बता रहे हैं भौतिक जगत में हमें इस प्रक्रिया से गुजरना होता है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसा कृष्ण ने क्यों व्यवस्था बनाई? तो गुरु बता रहे हैं कि कृष्ण के पास भी शक्ति है, वो अपने प्रतिनिधि को ऐसा शक्ति दे सकते हैं। So why he is using this and due to which people are suffering? Why he can't use his power directly and
easily liberate us But from all this suffering. he's putting all of his power in his bona fide representative. तो प्रभु सवाल पूछ रहे हैं कृष्ण अपनी सारी शक्ति सीधे सीधे क्यों नहीं देते, वो किसी व्यक्ति के माध्यम से जो हमें दुख भोग के आगे गुजरना पड़ता है ऐसी प्रक्रिया क्यों है? तो गुरुदेव बता रहे हैं क्योंकि कृष्ण ने अपनी सारी शक्ति उस प्रतिनिधि के माध्यम से पहुंचा दी है। So they have all the power of God. तो उनके पास भगवान की सारी शक्तियां हैं They're carrying the mercy of the Lord. और भगवान की कृपा को वो लेकर चल रहे हैं। So it says that they are to be worshipped as good as God, और ऐसा कहा जाता है उनको भगवान के समान की पूजा की जानी चाहिए because they're representing the Lord. कि वो भगवान के प्रतिनिधि हैं। So therefore the mercy incarnation of the Lord. वो कृष्णा की कृपा की मूर्ति है। And so Krishna is using them to help the suffering conditioned soul. और कृष्णा उनका इस्तेमाल कर रहे हैं दुख में जीवात्माओं की मदद करने के लिए। So just like Krishna is wandering and preaching, then his devotees also wandering and preaching to whoever they meet. तो जैसे कृष्णा घूमकर प्रचार करते हैं जिन भी लोगों से मिलते हैं उसी तरह भगवान के शुद्ध भक्त भी घूम-घूमकर उन लोगों को प्रचार करते हैं जिनसे भी वो मिलते हैं। And trying to wake them up and trying to give them this transcendental knowledge, this opportunity. उनको जगाने का प्रयास करते हैं और उनको ये दिव्य सुनहरा मौका देने का प्रयास How करते to get free from their suffering condition. हैं कैसे वो अपने दुखमय स्थिति से बाहर निकल सकते हैं। So they're as good as God. तो वो भगवान के समान ही है They're invested with all the shakti, the potency of the Lord. और भगवान की सारी शक्ति उनके ऊपर डाल दी उनके भीतर डाल दी गई है। So that's how Krishna also helping. तो इसी तरीके से कृष्ण मदद कर रहे हैं। Sometimes he directly comes. कभी-कभी वो सीधे-सीधे आते हैं। So then he has created Maya, and also he is like providing Guru for us, and also we are suffering. He's created Maya, but he's also given us the chance to get Guru. And, Yes, so and we can make a choice, right? So and also in this material world we are suffering. So why Krishna wants us to suffer, and why he has created Maya and then we are suffering? Why are you choosing Maya instead of Krishna? Why he has created? No, I'm asking you, why are you choosing Maya instead of Krishna? I don't have any intelligence. Why are you surrendering to Maya and not surrendering to Krishna? क्यों आप माया को शरणागत Because I don't have any intelligence. Because what? Because I don't have good brain. Then you have to suffer because you're being stupid. तो मेरे पास अच्छी बुद्धि नहीं है तो आपको दुख भोगना पड़ेगा क्योंकि पास आपके So why do you take good information and become smart तो क्यों आप अच्छी जानकारी लेके बुद्धिमान क्यों नहीं बनते and make a better decision? और एक बेहतर फैसला लीजिए। That's your choice. ये आपका निर्णय है। But then why he created Maya then? Because you want to forget about God. तो पूछ रहे कि उन्होंने माया को बनाया फिर गुरुदेव बता रहे क्योंकि आप भगवान को भूलना चाहते थे। Because you want to enjoy God's property. क्योंकि आप भगवान की संपत्ति का मजा लेना चाहते हैं। So because of your desire, क्योंकि आपकी इच्छा के कारण He's fulfilling your वो desire. आपकी इच्छा को पूरा कर रहे हैं। So since I was born, I wasn't aware of Maya. Why were you born? जब से मेरा जन्म हुआ मैं माया के प्रति सजग नहीं था। तो मुझे बता रहे आपका जन्म ही क्यों हुआ? Why were you born in the first place? आपका जन्म पहले हुआ क्यों? Then I don't know. That's a good question. ये बहुत ही अच्छा सवाल है। Thank you for your honesty. Yeah, we don't know. Why am I born? धन्यवाद आपकी ईमानदारी के लिए कि मेरा जन्म क्यों हुआ मुझे पता नहीं। So because of previous materialistic activity and materialistic desire, we're taking another material body. तो पूर्व कर्म पूर्व भौतिक इच्छाओं के कारण हमें दोबारा भौतिक शरीर लेना पड़ता है Then we have to go in the womb of the mother. और हमें माँ के गर्भ में प्रवेश करना होता है Then we have to go through birth, death, disease, old age, all over again. और हमें जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी से दोबारा गुजरना होता है And all of that is suffering और condition. ये सारा दुखमय स्थिति है Being trapped in the womb, गर्भ के अंदर going फंसे through रहना the trauma of childbirth, जो बच्चे के जन्म का जो दुख कष्ट होता है उसे झेलना पड़ता है getting old and diseased, बुढ़ापा होना बीमारी आना and being forced to die. और मृत्यु के लिए मजबूर होना That's the suffering nature of material world. ये है भौतिक जगत का दुखमय स्वभाव So we should choose, how do I not have to take another material birth? तो हमें अब ये फैसला लेना चाहिए कि उसे मुझे और दोबारा एक और भौतिक शरीर ना लेना पड़े To not be forced to go through this old age disease and death. ताकि मुझे मजबूर होकर इस बुढ़ापा बीमारी मृत्यु से दोबारा गुजरना ना पड़े That's intelligence. ये है बुद्धिमानी
So Krishna and Krishna's devotees and all of the Shastra is trying to give us that intelligence. तो कृष्णा के भक्त सारे शास्त्र ये हमें बुद्धि देने का प्रयास कर रहे हैं. But who can hear it? लेकिन कौन इसको Who सुन will सकता accept है? it? कौन इसको स्वीकार करेगा? Who is seeking relief from the suffering condition? कौन इस दुखमय स्थिति से राहत पाने का प्रयास कर रहा है? This is meant for them. ये उनके लिए है. Otherwise, everyone's just thinking they're enjoying वरना सभी लोग सोच रहे हैं वो पूरे मजे कर रहे हैं and forgetting about God, भगवान को भूलते जा रहे हैं and they're trying to enjoy Krishna's material energy और कृष्णा की भौतिक शक्ति का वो भोग करना चाहते हैं for their own pleasure. खुद की आनंद के लिए. So if you want it like that, you want to forget about Krishna, you want to enjoy separate from Krishna, okay, here's your opportunity. तो आप इस तरीके से पाना चाहते हैं, कृष्णा की शक्ति का आनंद लेना चाहते हैं, कृष्णा से अलग होना चाहते हैं, कृष्णा को भूलना चाहते हैं, तो ये आपके पास ये सारा That's your choice. ये आपका निर्णय है. Otherwise, what is the meaning of free will? वरना ये अल्प स्वतंत्रता का मतलब क्या हुआ? Weren't you originally asking about this? Free आप इसका will? मूल सवाल नहीं, आप नहीं पूछ रहे थे आपकी अल्प स्वतंत्रता क्या होती है? So, Guruji, like at the very first point, the very beginning and the starting, why he created Maya only? That's the main question I want to understand. It says when you build a new city, they always build the prison house. तो प्रभु सवाल पूछ रहे हैं फिर कृष्ण ने माया को क्यों बनाया? तो मुझे बता रहे हैं जैसे कोई नया शहर बसाया जाता है तो एक कारागार जेल भी बनाई जाती है. But why build a city where you have to put a prison? And why build people like that? When you build the city, you have to build the prison because you know some of those citizens will break the law and they'll not agree to act according to the laws. क्योंकि जब शहर का निर्माण किया जाता है तो कारागार भी साथ में बनाया जाता है क्योंकि कुछ नागरिक ऐसे होंगे जो कानून का पालन नहीं करेंगे, कानून को तोड़ेंगे और उनको कारागार में डालना होगा. So material world is a prison house. तो ये भौतिक जगत जीवन एक कारागार है. So that people are also created by Krishna. What's created? That criminal people were also created by Krishna, those who are not following the laws. There's going to be some living entities, because you have free will, that some will choose Maya over Krishna. So why he is giving us free will? Huh? Why he is giving us free will? Because otherwise that love is forced. So if he doesn't give us free will and he directly give us instruction to follow him, so it will be very easy for people and the world to follow. Don't you want somebody to love you because they want to love you? तो कह रहे कृष्ण ने सभी को ये एक चुनाव करने का मौका क्यों दिया? वो माया को चुने या कृष्णा को चुने? तो गुरुदेव बता रहे आप नहीं चाहते कि कोई आपको स्वयं अपनी इच्छा से प्रेम करे क्योंकि वो आपको प्रेम करना चाहता है, ना कि आपको मजबूर करके वो आपको प्रेम कर रहा है. They're making a choice to love you. वो एक फैसला कर रहे हैं कि वो आपसे प्रेम Do करना you want चाहते हैं. someone that is forced to love you? क्या आप चाहते हैं कि किसी को आप मजबूर करके प्रेम करें? Like a gun to their head, you इसके सर know? पे बंदूक डालो. You better love this person, you know? बेहतर होगा इस आदमी से तुम प्रेम करो. Not forced, but it should be very natural, and that force shouldn't be a point. It should be natural. तो ये स्वाभाविक प्राकृतिक होना चाहिए. So why are we not naturally agreeing? क्यों हम स्वाभाविक रूप से सहमत नहीं हो रहे हैं? Because our build-up is not like that. Because we're being rebellious. क्योंकि हम विद्रोही हो रहे हैं. We're in a state of rebellion. हम विद्रोह के भाव में हैं. Right? We're competing with God. हम भगवान के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं. Why is God the supreme enjoyer? क्यों भगवान ये सब भोग करेंगे? Why is He the supreme controller? क्यों वो परम नियंत्रण करता है? Why everybody worshiping Him? क्यों सभी उनकी पूजा कर रहे हैं? Why He's the supreme proprietor? क्यों वो परम मालिक हैं? So are we acting as servant of Krishna or competitor of तो हम Krishna? कृष्णा के सेवक के रूप में कार्य कर रहे हैं या कृष्णा के साथ प्रतिस्पर्धा के रूप में कार्य कर रहे हैं? That's the question. ये है प्रश्न. So we want to serve Krishna or we want to compete with Krishna? तो हम कृष्णा की सेवा करना चाहते हैं या हम कृष्णा के साथ प्रतिस्पर्धा Do we करना want to चाहते be the servant or the master? हैं? तो आप सेवक होना चाहते हैं या मालिक बनना चाहते हैं? Like a blank CD, we put something like a song or whatever, and A whenever we blind play, Blinded CD. A blank CD, Put some song or something. yeah. so if we put only the song, so the CD is going to play only the song.
So likewise, we have been created by Krishna. So if Krishna puts us only the spiritual intelligence and knowledge to worship Him, so only we are going to worship Him. But It should be very, that's- it's like natural. but that's a material object. That's not a soul. It's not a personality. So you can take the example according It's to not a the personality. for the soul. So if the Krishna No, puts, you cannot use that analogy because one thing is just material element. Other thing is soul. You cannot use that analogy. तो प्रभु उदाहरण दे रहे हैं एक सीडी का कि सीडी के अंदर जो तरह के किसी के गाने डालने चाहते हैं तो वो जब भी बजाएंगे तो वही गाने उसमें से बजेंगे। तो अगर कृष्णा आध्यात्मिक बुद्धि देते केवल तो आध्यात्मिक बुद्धि ही काम करती है। गुरुदेव बता रहे हैं ये उदाहरण गलत चुनाव कर रहे हैं क्योंकि ये उदाहरण आप भौतिक तत्वों के आधार पर दे रहे हैं क्योंकि सीडी जो है वो जीवित वस्तु नहीं है और आत्मा जो है और भौतिक वस्तु दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। Because the soul, since time immemorial, has all of the qualities of the Supreme Personality of God. Every soul is part and parcel of Krishna. क्योंकि हर एक जीव कृष्णा का अंश है तो हर एक जीव का अनंत काल से कृष्णा के जैसे ही गुण उपलब्ध है। So you're born with all of the qualities. तो आपका जन्म इस सारे गुणों के साथ हुआ है। But now, do you want to remember an act according to these godly saintly qualities, or do you want to forget? लेकिन अब आप वापस ऐसे गुणों को याद करना चाहते हैं और उसके आधार पे काम करना चाहते हैं या आप उसको फिर से भूलना चाहते हैं? soul has this material body. So what? Soul has a material body. No. The material Soul body. is in the body. Material body is covering the soul. तो वो पूछ रहा है कि ये आत्मा के पास एक भौतिक शरीर है। गुरुदेव बता रहे हैं नहीं, आत्मा के ऊपर ये भौतिक शरीर ढक कर रखा गया है। So if you take away the material body, the gross body, and the subtle body, then you're left with the spirit soul. तो ये भौतिक शरीर जो कि स्थूल और सूक्ष्म शरीर दोनों को अलग कर दिया जाएगा तो केवल आत्मा बचेगी। So that soul is part and parcel of Krishna. तो वो आत्मा कृष्ण का अंश है। So that soul is created with all the saintly and godly qualities of the Lord. उस आत्मा का निर्माण भगवान के सारे देवताओं साधुओं जैसे गुणों के साथ किया गया है। But it also is given opportunity for free will. लेकिन उसको एक आज़ादी छोटी सी आज़ादी करने का भी विकल्प चुना। So some souls are created in a situation where they can make a choice. तो कुछ जीवात्माओं को ऐसी परिस्थिति में निर्माण किया गया है कि वो कुछ एक निर्णय कर सकते हैं। Those souls who are eternally servants of Krishna, और कुछ जीव कृष्णा के नित्य दास हैं। they never for one moment are given that choice. उनको एक क्षण के लिए भी कभी ये चुनाव करने का मौका नहीं दिया। Because they're eternal servants of the Lord, they're always thinking about Krishna and they have love for Krishna. और वो क्योंकि कृष्णा के नित्य दास हैं, वो सदैव कृष्ण की सेवा में लगे रहते हैं और उनके पास कृष्ण के लिए नित्य प्रेम है। So they never forget about तो वो Krishna. कृष्णा को कभी भी नहीं भूलते। But there are some souls लेकिन कुछ जीवात्माएं हैं who are conditioned, put in a position where they're conditioned souls. जिनको ऐसी स्थिति में रखा जाता है जिनको बद्ध जीव कहा जाता है। So some souls are put in a position where they can make a choice. तो कुछ जीवात्माओं को ऐसी परिस्थिति में रखा जाता है जहाँ वो कुछ निर्णय कर सकते हैं। Because in God's creation there has to be every possible variation. क्योंकि भगवान की सृष्टि में सभी विभिन्न चीजें मौजूद होनी चाहिए। Because everything is within God's creation. क्योंकि भगवान की सृष्टि में सभी कुछ पूर्ण रूप से मौजूद होना चाहिए। So all different types of souls in different conditions have to also be there, otherwise there's something missing from God's total creation. तो इसी वजह से सभी अलग-अलग तरह की जीवात्माएं अलग-अलग तरह की परिस्थिति के अनुसार होने चाहिए क्योंकि वरना भगवान की सृष्टि में कुछ न कुछ कमी अपूर्णता रहेगी। So how can God create wrong? How can He be unfulfilling? How can you what? He's asking, how can God create wrong? Like why it's like broken like that? He's creating a soul who can be put into a situation where he can make a choice. तो कैसे बता रहे हैं भगवान जो है कुछ गलत निर्माण कर रहे हैं। तो गुरुदेव बता रहे हैं उन्होंने ऐसी जीवात्मा को बनाया जिसके पास ऐसी स्थिति है कि वो एक निर्णय कर सकता है। So there are some souls that are put in that situation. तो कुछ आत्माएं हैं जिनको ऐसी स्थिति में डाला जाता है। We happen to be that type of soul. और हम उस तरह की जीवात्मा हैं।
You could have been a rock, तो आप पत्थर भी हो सकते थे, so at least you're not a rock, तो कम से कम आप पत्थर नहीं है। right? So now the question is, okay, I'm put in a situation where I can make a choice. So what is that choice today? तो अब ठीक है, हमें जब ऐसी परिस्थिति में डाला गया है जहाँ हम कोई चुनाव कर सकते हैं, तो आज अब हम क्या चुनाव करने वाले हैं? Will we surrender to Krishna or surrender to Maya? या हम कृष्ण को शरणागत करेंगे या हम माया को शरणागत करेंगे? Let's make it practical. इसको थोड़ा हम व्यवहारिक उदाहरण रखते हैं। So we're a particular type of soul that was given a choice. तो हम एक विशेष तरह के जीव हैं जिनको कुछ निर्णय करने का मौका मिला है, And we made the wrong choice. और हमने गलत निर्णय किया है। Why do we have a choice then? Why what? Why do we have a choice then? Why do we have a choice? There should be only one option, follow Krishna. तो हमें This is a very good question. तो हमें दूसरा निर्णय करने का मौका क्यों दिया गया? I'm not केवल upset कृष्ण with का your question पालन क्यों नहीं करते? गुरुदेव कह रहे हैं ये बहुत अच्छा सवाल है, मैं आपके सवालों से परेशान नहीं हो रहा। because it means you're really trying to understand it. इसका मतलब आप असल में इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। That's good. That means अच्छी you're बात है। intelligent. इसका मतलब आप बुद्धिमान हैं। Otherwise, you're just blindly accepting something. You don't even know why you're accepting it. वरना आप अंधे होकर बस स्वीकार किए जा रहे हैं कुछ भी, लेकिन आपको पता ही नहीं आप क्यों उन चीजों को स्वीकार कर रहे हैं। So all of these questions have already been asked तो ये सारे सवाल पहले ही पूछे जा चुके हैं and have already been answered. और इनका उत्तर पहले से ही दिया जा चुका है। And so we are just those living entities who are asking the same question. और हम वही जीवात्मा हैं जो वही सवाल पूछ रहे हैं, Right? Why am I forced to suffer? क्यों मुझे दुख झेलने के लिए मजबूर होना पड़ता है? Right? And then is there a solution to get out of that suffering? और क्या कोई समाधान है कि इन दुखों से बाहर निकल सकते हैं? What is that solution? तो समाधान क्या है? That's intelligence. ये है That means that बुद्धिमानी। human intelligence ये है is kicking in. जब यानी कि मनुष्य की बुद्धि अब अंदर आ रही है, Tato Brahma Jigyasa. अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा। We're asking those questions in relationship to the absolute truth. अब हम ये जिज्ञासा कर रहे हैं जो परम सत्य से संबंधित है। So Krishna is the savior of most fallen souls also. तो कृष्ण सबसे पतितों का उद्धार करने के लिए भी आते हैं। You see in human nature, you know, people go to the village or they go to the Africa or they go to some place, right? They want to do some type of humanitarian work and they want to help out the poor, suffering, conditioned souls, right? यहाँ तक कि आप मनुष्य में भी देखेंगे कोई कुछ गांव में या अफ्रीका में कुछ गरीब लोगों की जाके इंसानियत के नाते उनकी कुछ मदद करना चाहता है, गरीब दुखियारे लोगों की। They want to do some type of humanitarian work, तो किसी तरह का इंसानियत का कार्य वो करना चाहते हैं, or they want to open hospitals, या फिर वो अस्पताल खुलवाना चाहते or हैं, they want to open educational institution, या कुछ शैक्षणिक संस्थान खुलवाना चाहते हैं। right? So there are many different personalities who want to do this type of work to help the suffering humanity. तो बहुत इस तरह के कुछ व्यक्ति होते हैं जो इस तरह का समाज सेवा करना चाहते हैं दुख में लोगों की मदद करने के लिए। So where does that quality come from? तो ये गुण कहाँ से आता है? Where does that desire come from? वो इच्छा कहाँ से आती है? That comes from God. ये कृष्ण से आती है, भगवान से आती है। So he also has this tendency and desire to want to help the suffering humanity. भगवान के अंदर भी ये प्रवृत्ति, ये इच्छा है कि वो दुख में मनुष्य को मदद करना चाहते हैं, To help conditioned souls. कि बद्ध जीवों की मदद की जा सके। So everything has to be included in God's creation. तो भगवान की सृष्टि में सभी कुछ मौजूद होना चाहिए। There has to be unlimited variety. असीमित विभिन्नताएं होनी चाहिए। There's no end to that variety. ये विभिन्नताओं का कोई अंत नहीं होना चाहिए। That's the nature of the absolute truth. ये है परम सत्य का स्वभाव। So God is the savior of fallen souls. भगवान पतित जीवों का उद्धार करना चाहते हैं। That means there has to be some fallen souls. इसका मतलब कुछ पतित जीव होने चाहिए। Otherwise, if everyone's already delivered, then how can he be the savior of the fallen souls? और अगर सभी लोग पहले से ही मुक्त हैं, तो कैसे वो पतित जीवों का उद्धार करेंगे? If you run to Africa to help the poor people in Africa and everyone's living in a mansion and everyone's got money in the bank and driving, you know, a Lamborghini,
अगर आप and nothing to do in Africa, isn't it? अगर आप अफ्रीका में गए हैं गरीब लोगों की मदद करने के लिए और सभी लोग बड़े बड़े महलों में रह रहे हैं और सभी के पास बहुत सारे बैंक में रुपए हैं और वो लैम्बोर्गिनी गाड़ी में घूम रहे हैं तो वहाँ जाके आपको कुछ भी नहीं कर सकते आप उनकी You'll be मदद like, they're doing better than I'm doing, you know? करके। आप कहेंगे ये तो मुझसे भी ज़्यादा बेहतर जी रहे हैं। So, like it's like I am creating a poor people and also I am helping them, and so that I can get glorified. What is it? I'm creating this world and I'm creating poor and I'm helping them out and I'm glorifying myself. He doesn't have to glorify himself. So that's the point where I asked, why do even we have a choice? Krishna wants to glorify his devotees. तो प्रभु पूछ रहे हैं कि कृष्ण ने ऐसे जगत बनाया जहाँ गरीब लोग हैं और उनकी मदद करके वो खुद का गुणगान करना चाहते हैं। तो गुरुदेव बता रहे हैं कृष्ण के गुणगान करने के लिए उनके बहुत भक्त हैं। That's why worship of his devotees is more pleasing to Krishna. और कृष्ण बताते हैं उनके भक्तों की पूजा कृष्ण को और ज्यादा आनंद देती है। Krishna can just come here and deliver everybody. कृष्ण यहाँ के सभी को मुक्त कर सकते हैं। But then he gets the credit, right? लेकिन उनको ही सारा श्रेय मिल जाएगा। But when he sends his devotees, लेकिन जब वो अपने भक्तों को भेजते हैं and they do that hard work, और जब वो कठिन परिश्रम करते हैं and they help to deliver those souls, और जब वो मदद करते हैं उन पतित जीवों को मदद then who करते gets the credit? हैं श्रेय किसको मिलता है? Those devotees. उन भक्तों को मिलता है। So Krishna says, oh, my devotees getting all the credit. This is making me so happy. और कृष्ण देखते हैं कि मेरे भक्त को ये श्रेय मिल रहा है और कृष्ण को ये बहुत खुशी देती है। They're singing the glories of my devotee. वो अपने भक्तों का महिमा गुणगान देखते हैं। Right, just like a father with his son, right? जैसे पिता अपने बच्चों को देखते हैं। So that when the son does some really nice thing, right, the father, he gets more pleasure when they're glorifying the son. तो जब बेटा कुछ महान कार्य करता है तो लोग जब उसका गुणगान करते हैं पिता को और ज्यादा आनंद आता है अपने बेटे का गुणगान सुनने में। Then if you just try to glorify that man alone. कि हो सकता है आप उस व्यक्ति का अकेले महिमा गुणगान करने का प्रयास करें। So that goes back to your original question, why isn't Krishna coming here? तो आपके मूल प्रश्न पे वापस आ सकते हैं हम कि कृष्ण खुद यहाँ क्यों नहीं आते हैं? Because he wants to give all credit to his devotees. क्योंकि वो सारा श्रेय अपने भक्तों को देना चाहते हैं। And only Krishna is saying, he's just saying, this is from my voice, this is the absolute truth. और कृष्ण कह रहे हैं मेरे यही परम सत्य है। So anybody who comes and speaks this truth, then know he's my devotee. और जो भी आए और वो इस सत्य को बताए आप समझना वो मेरा भक्त है। Because he's telling exactly what I'm telling. क्योंकि वो वही बता रहा है जो मैं बता रहा हूँ। Otherwise, how do you know who's devotee? वरना आपको कैसे पता चलेगा कौन भक्त है? So whoever comes and tells exactly what Krishna is telling, then he's Krishna devotee. जो आ रहा है और बिल्कुल वही बात बता रहा है जो कृष्णा बोल रहे हैं तो यानी कि वो कृष्णा के भक्त हैं। And then that devotee helping us how to also become devotee. और वो भक्त हमारी मदद कर रहे हैं कैसे हम भी भक्त बन सकते हैं। So Krishna giving all credit to his devotee. कृष्णा सारा श्रेय अपने भक्त को दे रहे हैं। So what's the problem if father takes all the credit? Won't child be very happy? What is it? What's the problem if the father takes all the credit? Won't the child be happy? Won't the child be happy? Because Krishna is our father and It's a competition. Krishna wants to glorify his devotee, and the devotee wants to glorify Krishna. तो बता रहे हैं पिता ही सारा श्रेय क्यों नहीं ले सकते क्यों और उसमें बच्चे को ज्यादा आनंद आएगा। तो गुरुदेव बता रहे हैं कि ये एक दिव्य प्रतियोगिता है। कृष्ण चाह रहे हैं वो अपने भक्त का गुणगान करें, उनका भक्त चाह रहे हैं वो कृष्ण का गुणगान करें। If you have some friend, right, you want to see him get the more credit than you get, because you want to make him happy, right? जैसे आपके कोई दोस्त है तो उनको ज्यादा श्रेय दिया जाएगा तो आप ज्यादा खुश होंगे क्योंकि आप उनको वो श्रेय सारा श्रेय देना चाहते हैं। And your friend has said, no, he should get all the credit. और आपके मित्र कहेंगे नहीं इनको सारा श्रेय मिलना चाहिए Because that will make उसको खुश बनाएगा खुश so it's करेगा। like some kind of competition going on इस there. तरह की एक प्रतियोगिता चल रही है। But it's based on love and affection. लेकिन ये प्रेम और स्नेह के ऊपर आधारित है। It's not material competition. ये कोई भौतिक प्रतिस्पर्धा नहीं है। So that's why mostly Krishna's devotees are doing this work. इसीलिए ज्यादातर कृष्ण के भक्त ये काम करते हैं।
because he wants to give them all the credit and glorify his devotees. कि वो उनको सारा श्रेय और अपने भक्तों का गुणगान करना चाहते हैं। And when his devotees are served properly, then that makes Krishna more happy. और जब उनके भक्तों का सही तरीके से सेवा की जाती है तो कृष्ण को और ज्यादा आनंद देता है। Makes sense. समझ पाए? He's happy. अब ये खुश है। He's being cool, but that he's happy. So far, so good. अब तक सब कुछ ठीक चल रहा है। But it's funny, like when you ask politician that question, they say, "Oh, that's a very nice question." लेकिन जब ये पूछते हैं अपने राजनीति वाले सवाल तो सुनने में लगता है बहुत अच्छा प्रश्न है। And then they're thinking, "Oh my God, what am I going to say?" You know? और फिर वो सोचते हैं कि मैं क्या कहूँगा। They're just like buying time, right? और ये जो है केवल अपना समय काट रहे हैं। And anyway, they just say so many things. और फिर वो बहुत सारी बातें करते हैं। They just go on and on. It's like when you're on the when you're trying to get into the office, right? You have some regular thing you just always keep saying what you think the people want to hear, right? तो जैसे ऑफिस आने से पहले आप वो सारी बातें करते हैं, जब आप सोचते हैं लोग ये सारी बातें सुनना चाहते हैं, ये सामान्य बातें करते हैं। That's not about me. That actually opposite. I don't speak what people want to You're listen. not a normal politician, man. आप एक सामान्य राजनेता नहीं है, You wouldn't be here. वरना आप यहाँ होते नहीं। I'm talking in general. मैं सामान्य बात कर रहा हूँ। So they're just talking, right? तो वो बस बात करते रहते हैं। And sometimes the person says, who's interviewing them. और कभी-कभी वो व्यक्ति उनको कहते हैं जो उनका साक्षात्कार ले रहे होते हैं। And what they do is they call it a lightning round. और उसको कहते हैं वो lightning round. Right? So now instead of this long-winded answers, तो लंबे उत्तरों को पाने के बजाय I'm just going to hit you with like lightning questions. तो कहते हैं हम आपको जो है बिजली की तरह सवाल पूछते जाएंगे। And you have to rapidly just answer those questions. और आपको झटके में उसका जवाब भी देना होगा। So he put me through lightning round. तो उन्होंने मुझे झटके में जवाब देने वाले इस साक्षात्कार में। Then he wants to see, okay, how quickly he can answer these questions. और तब वो देख रहे थे कितनी जल्दी ये सवालों का उत्तर दे पाएंगे। And how convincing are those answers? और ये उत्तर कितना मुझे विश्वास दिला पाएंगे। So there was like a lightning round, right? तो एक What तरह about का this? What about that? What about this? लाइटनिंग राउंड चल रहा था, इसका क्या उसका क्या। So I think finally he was like pretty happy with most of that answer. मुझे लगता है अंत में बहुत सारे उत्तरों से खुश हुए। The only problem is, why do we have to be conditioned so? समस्या सिर्फ एक ही यही है कि हमें क्यों बद्ध जीव बनना पड़ता That's at the root of your question. है। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल जड़ है। Why can't we have been one of the eternal souls हम वो नित्य जीव आत्मा क्यों नहीं बने? who never had to make any choice because it's all pure love? What is there in making a choice? क्योंकि उनको कोई निर्णय लेना नहीं पड़ा, क्योंकि वो शुद्ध प्रेम के ऊपर आधारित थे, उनको निर्णय कुछ भी लेना नहीं पड़ा। So that's at the heart of your question and doubt. ये आपके सवाल का हृदय और यही उसका And this is very natural. और ये बहुत स्वाभाविक बात है। Because who wouldn't want to be just an eternal associate of the Lord living in Vaikuntha eternally? क्योंकि क्यों कोई भगवान के वैकुंठ लोक में नित्य सेवक और उनका प्रेम में सेवा करने में न लगा है। So okay, at least my Guru said, at least you're not a rock, मेरे गुरु ने कहा कि कम से कम आप एक पत्थर नहीं हो। And then if you look at eternity, then even what is our suffering here in material world? और अगर आप नित्य जीवन से तुलना करेंगे तो थोड़े कुछ समय का हमारा भौतिक जीवन एक क्षण के It's जैसा just a flash, it's just a moment. बस एक क्षण के बराबर है वो। And then Krishna is giving the conditioned souls, suffering souls, they're giving opportunity to go from conditioned soul to go to Krishna Loka, which is the highest possible spiritual destination. और कृष्ण ऐसे बद्ध जीवों को सबसे उच्चतम लोक कृष्ण लोक पहुंचाना चाहते हैं, जो कि सर्वोत्तम आध्यात्मिक जगत है। So this unlimited living entity, eternal associate of the Lord in unlimited Vaikuntha planets. तो असीमित भगवान के नित्य भक्त हैं जो असीमित वैकुंठ लोकों में आध्यात्मिक जगत में मौजूद हैं। And they're eternally liberated. और वो सभी नित्य रूप से मुक्त हैं। But they're not with Krishna in Krishna Loka. लेकिन वो कृष्ण के साथ कृष्ण लोक में नहीं है। They're not on Goloka Vrindavan. वो गोलोक वृंदावन स्तर पे नहीं है। So those persons who understand and agree to play this role, जो लोग सहमत हैं और इस भूमिका को निभाना चाहते हैं,
to learn what we need to learn, और वो सीखना चाहते हैं जो उनको and सीखने they की take जरूरत है, advantage of this opportunity, और जो इस मौके का लाभ उठाना चाहते हैं, then you don't go to any Vaikuntha planet, any ordinary Vaikuntha तो planet. आप किसी सामान्य वैकुंठ लोक में नहीं जाएंगे, You go to Goloka Vrindavan, आप गोलोक वृंदावन में जाएंगे and directly in one of the highest rasas, directly with Krishna, Goloka Vrindavan. और जो सर्वोत्तम रस है गोलोक वृंदावन में कृष्ण के साथ उस रस में रहेंगे आप। So he's giving the lowest, most unqualified people the highest possible position. तो सबसे नीचे अयोग्य लोगों को सर्वोत्तम स्थिति कृष्ण देना चाहते Which is beyond any position in unlimited Vaikuntha planets. हैं, जो कि सारे स्थिति से परे है, सारे वैकुंठ लोगों से भी परे है। So look at opportunity and reward. तो आप देखिए आपके पास कैसा मौका और कैसा पुरस्कार मिल सकता है। So look on the bright side. तो इसके उज्जवल भाग को देखिए, Don't be so pessimistic. नकारात्मक मत होइए। But it's a natural question. लेकिन स्वभाव बहुत स्वाभाविक है। प्रश्न बहुत Otherwise, why स्वाभाविक did I have to suffer? है। वरना क्यों मुझे ही दुख भोगना पड़ता है? Then we're like resentful. वरना फिर हम गुस्सा करने लगते हैं। That's why many people they turn away from God because they're committing sinful activity, they're getting punished, and then they're blaming God for that. और क्योंकि बहुत सारे लोग पाप कर्म करते हैं, उसका दंड भोगते हैं और भगवान को ही उसका ही दोष डालते हैं। Why you put me in this situation? क्यों मुझे ऐसे स्थिति में डाला? Why am I forced to suffer? क्यों मुझे मजबूर होना पड़ रहा है दुख भोगने के लिए? And then Krishna is saying, well, here's exactly the information you never have to suffer again, and we're not taking it seriously. और कृष्ण बता रहे यहाँ पे वो सारी जानकारी है जिनकी दोबारा आपको कभी दुख भोगना नहीं पड़ेगा और उसको हम गंभीरता से नहीं ले रहे। Well, I'm trying to figure it out, you know. मैं खुद पता लगाऊंगा। So how badly do we want to get free from our suffering conditions? तो कितनी बुरी तरह से हम अपने दुखों से बाहर निकलना चाहते हैं? That's another question. ये एक और प्रश्न है। Good for now. अभी के लिए सब ठीक है? Thank you so much. Hare Krishna. Thank you. Thank you for being honest. धन्यवाद आपकी ईमानदारी बरतने के लिए। Because if you have these questions and doubt, you have to get it out, man. कि आपके अंदर ऐसे सवाल हैं, ऐसे संदेह हैं, इसको बाहर निकालना ही होगा। Thank you so much. First time you said that I'm honest. Thank you. Alright? It's the first time you said that I'm honest. Thank you very Yeah, much. that's why I said you're not an ordinary politician. कह रहे हैं धन्यवाद आपने मुझे ईमानदार कहा, इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं मैंने कहा आप कोई सामान्य राजनेता नहीं है। I don't think you have a long Career ahead of a you. career as politician. राजनेता के रूप में आपका करियर ज्यादा लंबा नहीं चला होगा। He's like too honest, you know. कुछ ज्यादा ही ईमानदार है। So then it'll be a competition. You can either make everyone honest politician, or they can try to make you as corrupt as they are. तब अब प्रतिस्पर्धा होती है, आप बाकी राजनेताओं को जितना ज़्यादा आपके जितना ईमानदार बना देते हैं या फिर वो आपको उनके जितना भ्रष्ट बना देते हैं। Yes. Hare Hare Krishna Guruji. I know. So my question is, as we know that we are living in a contaminated world, and we like to cope up with those people who are not Krishna conscious, and they are not like to be. And sometimes what we face when we go back to family life, social life or professional life, we might see some chaotic situation, and they try to abuse, or they maybe try to hurt with some words, and try to ask to be intimated, like to be aggressive or something. So how? Oh, we're saying. So, what is it? Tell me. She's basically saying like this is a contaminated world, Yeah. and there's a lot of asat sangha, Yeah. and they try to drag you into some situation, Or and then criticizing you or like this, right? Exactly. you get some response out of So it. in that condition, how we should protect us, and what would be the shield that we should not get affected Yeah. by those words, or Should not let it hurt you, not let it disturb you. yeah, sometimes a few words like penetrate our heart and it's remain in that Yeah, place, it's painful. and it doesn't get disappeared Yeah. easily. Yeah. It's So disturbing. in that condition, how we should deal with that particular person? It can be like family people, like family member, yeah. Anybody. Yes. Especially people close to you, they can Yes. hurt you even more Exactly. because you have some attachment to them. जो लोग Lots आपके of attachment. Maybe that's the maybe reason.
You can. It's more painful. Then you pray to Lord Nrsimhadev and he'll come and cut off their head. That's the best answer, you know? Then you never have to listen to it again, you know? Everything like song, then Krishna delivers them, you're like free now. That I want, that Krishna do for me. Like, Yeah, you pray like that. this is You like, take your fingernails and just slice off their head, you know? because they are very much sinful. Like, Yes, whenever yeah. I feel that Yes. this extent they can think, like they have so much hatred and they can do anything. Yes. And what can I like do with them? Cut off the head. That solves everything. But as we follow Krishna consciousness, we cannot do all these things. That's So why we you need gotta to- pray to Lord Nrsimhadev. So I always request Shri Krishna to help me in that condition. Yeah. How can I deal with that person or those like number of people? तो माता जी का सवाल है, क्योंकि हम इस भौतिक जगत में रहते हैं जो कि बहुत दूषित जगत है, और कई बार हमें ऐसे वापस अपने जीवन में जाना पड़ता है, परिवार के लोग या समाज में या हम जहाँ कारोबार कर रहे होते हैं, और वो लोग हमसे कुछ इस तरह का गलत व्यवहार करने का प्रयास करते हैं ताकि हमें गुस्सा आए या कुछ इस तरह की प्रतिक्रिया दें। तो ऐसे में कैसे हम अपने आप को बचा के रख सकते हैं, या कौन सी चीज़ जो हमें रोक के रख सकते हैं, और विशेष करके जिन लोगों के प्रति हमारी ज़्यादा आसक्ति है वो हमें ज़्यादा दुख देते हैं। तो गुरुदेव बता रहे हैं कि आप नृसिंहदेव से प्रार्थना कीजिए, वो सभी लोगों को खत्म कर देंगे, अपने नाखूनों से मार डालेंगे, फिर आपको कोई चिंता नहीं करनी होगी, सभी लोगों को कृष्णा उद्धार कर देंगे। ये सबसे श्रेष्ठ उत्तर जो है आपको दे सकता हूँ। Yes. This is a good timing. टाइमिंग बहुत अच्छा है। So it says in the Kali Yuga, the Lord not cutting off the head. बोला जाता है कलयुग में भगवान सर नहीं काट रहे किसी का, Right? For the demons in other age, he's just slicing off the head. You और know? अलग युगों में भगवान असुरों का सर काट रहे थे, But in this age, the Lord is killing the demon inside. लेकिन इस युग में भगवान भीतर के असुरों को मारते हैं। So all demoniac qualities, the Lord's devotee trying to kill all of this demoniac qualities. तो भगवान के भक्त ये सारे आसुरी गुणों को मारने का प्रयास कर रहे हैं। But one of the worst demoniac quality is enviousness. और ये एक सबसे खराब आसुरी गुण है द्वेष। Other qualities like anger or lust, these things can be transformed spiritually. और बाकी जो बुरे गुण हैं, काम, क्रोध, इनको परिवर्तित किया जा सकता है, आध्यात्मिक इस्तेमाल किया जा सकता है। Hanuman is killing on behalf of the Lord, right? जैसे हनुमान भगवान की तरफ से लोगों को मार रहे हैं, Right? And of course, gopis are loving Krishna. और गोपी जो है वो कृष्णा से प्रेम कर रहे हैं। But enviousness, you cannot transfer that or make that spiritual. लेकिन जो ये ईर्ष्या द्वेष है, इसको आध्यात्मिक बनाया नहीं जा सकता, इसका परिवर्तन नहीं किया जा सकता। So Chanakya Pandit talking about the snake, right? The serpent can bite you, right? Kill you. तो चाणक्य पंडित उदाहरण देते हैं सांप का, सांप आपको काट सकता है, आपको मार सकता है, And it's very dangerous. और वो बहुत खतरनाक होता है। But worse than that is a man snake, लेकिन उससे ज्यादा खतरनाक जो मनुष्य सांप होता है, right? That's a more powerful, more dangerous. वो ज्यादा खतरनाक, ज्यादा शक्तिशाली होता है। It's saying that the snake, right, the serpent, it can be by some flute or something, you can pacify them, right? कहते हैं सांप को आप बीन बजा के शांत कर सकते हैं, Or by some, what's it, like some mantra or something? Yeah. Or herbs. Or some herbs. So anyway, there's some way to pacify like some snakes. Sometimes you see these snake charmers, right? आप देखते हैं जो सांप सपेरे होते हैं, वो कुछ मंत्र जानते हैं या किसी जड़ी बूटी से सांप को वो शांत कर लेते हैं। But the man snake, you cannot charm a man snake. लेकिन एक मनुष्य जो सांप है उसको शांत नहीं किया जा सकता, So they're very, very dangerous. वो बहुत ही खतरनाक होते हैं। So if they cannot be transformed and purified by Mahaprabhu and his devotees, तो अगर महाप्रभु के भक्तों द्वारा उनको परिवर्तित न किया जाए, शुद्ध न किया जाए, then they have to be eliminated. तो उनको खत्म करना होगा। Of course, we cannot go killing everybody, और अवश्य हम बाहर जाके सबको मारना शुरू नहीं कर सकते,
That's not recommended. ये करने का सुझाव नहीं दिया जा रहा है, But we can avoid them. लेकिन हमें उससे बच के रहना चाहिए। Asatsanga tyaga. असत संगत त्याग करना चाहिए। So we must strictly avoid this type of envious materialistic association. और हमें निश्चित ही त्याग करना चाहिए ऐसे ईर्ष्यावान लोगों का, भौतिकतावाद लोगों का संग त्याग। And if we have to somehow deal with people like this, और अगर किसी तरह से हमें ऐसे व्यक्तियों के then साथ we make it very formal. तो आप उसे बहुत औपचारिक रखिए। Right? Pass the salt, pass the pepper, you know? इसे नमक दीजिए और मिर्च Nothing personal, nothing intimate, nothing, not open your heart and your mind to such personality. अपनी व्यक्तिगत बातें, अपना हृदय, अपना मन खुलकर ऐसे लोगों को नहीं बताइए। Protect yourself from such envious humans. ऐसे ईर्ष्यावान द्वेषी लोगों से अपने आप को बचा कर, Otherwise they'll just attack you, bite you. वरना वो आप पे हमला करेंगे, आपको काटेंगे And it will be like a death. It will be very painful. और ये मृत्यु के जैसा होगा, बहुत दर्दनाक होगा। So we understand who's devotee, who's simple-hearted person, then make those personalities your associates. तो जो भक्त हैं, जो सरल हृदय वाले व्यक्ति हैं, उनको आप अपना संग बनाइए। And all materialistic-minded people, they're very jealous, they're very envious, right? They're very crooked people. You should avoid them like anything. और ये जो भौतिकतावाद वाले व्यक्ति हैं, जो बहुत कपटी हैं, द्वेषी लोग हैं, ऐसे व्यक्तियों का संग आपको त्याग करना चाहिए। Because only they can drag you down. क्योंकि वो केवल आपको नीचे गिराने का प्रयास And करेंगे। only they can give you disappointment and broken-heartedness. और वो आपको केवल निराशा देंगे, आपका हृदय तोड़ने का And प्रयास their करेंगे। words will be very painful. और उनके शब्द बहुत दर्दनाक होंगे। And it's like getting bit by a snake, you know. ऐसा ये सांप के काटने के जैसा। Even a whole long time, anytime you think of that person or that situation, you'll still feel that kind of disturbance or pain. लंबे समय तक ऐसे व्यक्ति के बारे में जब भी आप सोचेंगे, तब भी वो आपको परेशानी देगा, आपको वो दर्द महसूस होगा। Because it's like a deep, like a poison, you know. क्योंकि एक बहुत गहरा विष दिया गया है। Mahaprabhu said those people who are serious for spiritual life, asatsanga tyaga, they give up this materialistic association. और महाप्रभु बताते हैं जो बहुत गंभीर है आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए उनको ये असत्संग त्याग करना चाहिए। Even it can be your own family members. हो सकता है वो आपके खुद के परिवार के लोग हैं। But if they are against Krishna and they are envious of Krishna's devotees, they're most dangerous personality. अगर वो कृष्णा के विरोध में हैं, कृष्णा के भक्तों के प्रति द्वेष रखते हैं, तो बहुत ही खतरनाक लोग हैं। So if we are serious about spiritual life, we'll even reject our own family members. अगर हम आध्यात्मिक जीवन के प्रति बहुत गंभीर है, तो हम अपने खुद के परिवार वालों को भी त्याग कर देंगे। If you're serious about spiritual life. अगर वो गंभीर है आध्यात्मिक जीवन के लिए। Yes, his mother used to be a putana. इनकी माँ पूतना हुआ करती थी। Then she became devotee. और फिर वो भक्त बन गई। Hare Krishna. Hare. So my question is, what is the best process to worship Sadhu Guru Vaishnava? The best process? Yes. प्रभु सवाल पूछ रहे हैं, सबसे श्रेष्ठ प्रक्रिया क्या है साधु गुरु वैष्णव की पूजा करने का? Follow their instructions. उनके निर्देशों का पालन कीजिए। General instructions, specific instructions. सामान्य निर्देश और विशेष निर्देश। General instructions meant for everybody is based on proper hearing and chanting. सामान्य निर्देश सभी के लिए हैं जो श्रवण और कीर्तन के ऊपर So आधारित है। doing that sincerely, seriously, और एक निष्ठा से गंभीरता से इसको करने का प्रयास करना। with a great awe and reverence बहुत सम्मान के साथ and a great faith, और पूरी श्रद्धा के साथ, devotion. भक्ति के साथ। This is proper mood for the hearing and chanting process. ये सही भाव है उस श्रवण और कीर्तन को। And then that puts us in the right consciousness. और ये हमें सही चेतना में लेकर आएगा Yes, I'm disciple. कि मैं शिष्य हूँ, I'm a servant of Krishna. मैं कृष्ण का सेवक हूँ। Then let me do also my other specific instructions. और फिर उसके बाद मैं अपनी विशेष सेवा भी करूँगा। As seva, as service for the pleasure of Guru and Krishna. सेवा गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। There's no better way to worship the spiritual master. इससे कोई बेहतर तरीका नहीं है आध्यात्मिक गुरु की पूजा करने के लिए। Otherwise, if we're not accepting and we're not making life and soul those instructions, then just waving some incense and throwing some flowers, this is all external, artificial. वरना अगर हम उनके निर्देशों को स्वीकार करके पालन करने का पूरा करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं और बस के बाद अगर अति घुमा के कुछ फूल फेंक रहे हैं, ये सब भावुक है, ये सही पूजा नहीं है।
All right? ठीक है? Are you satisfied? क्या आप संतुष्ट हैं? Really? हैं असल में All आप? right. I'm just checking. मैं बस चेक कर रहा हूँ। Okay. Hare Krishna. So like when Uddhav he was getting knowledge from Lord Krishna. Arjuna. Uddhav. Uddhav. Yeah. So Lord Krishna instructed him to follow his instruction to go to Badrika ashram, Badrinath. But Uddhav was not like he was little bit feeling some pain for getting separated from Lord Krishna. He's free from what? He's feeling separation. Yeah. He doesn't wanted to go or leave Krishna's personality and follow his instructions. Although he did that, but he was not willing to do that. Like he was coming again and again and doing like circumambulating Lord Krishna, and he drenched his lotus feet with the tears again and again like that he did. He was really attached to the personality of Lord Krishna. But if he didn't stay, then Krishna wouldn't have spoken to him, and Maitreya wouldn't have heard it, and he wouldn't have gotten purified, and then he wouldn't have been able to go back and give those instructions to Vidura. So how Krishna is doing all of this thing? प्रभु सवाल पूछ रहे हैं कि जैसे उद्धव जो है अपनी इच्छा से कृष्णा के निर्देश को पालन करना नहीं चाहते थे, क्योंकि कृष्ण ने उनको बद्रिका आश्रम जाने का निर्देश दिया था, लेकिन उनको छोड़ने की बजाय क्योंकि उनके अंदर विरह का भाव आ रहा था, तो उनकी परिक्रमा कर रहे थे और अपने चरण कमलों के प्रति आसक्त थे, उनसे उनके सामने रो रहे थे। लेकिन मुझे बता रहे हैं, लेकिन कृष्ण ने उद्धव जब वहाँ मौजूद थे तब मैत्रेय वहाँ आए और कृष्ण ने उद्धव से वो सारी बातें की और मैत्रेय भी उन सारी बातों को सुन पाए और जाके वो विदुर को वो सारे निर्देश दे पाए। तो कृष्ण ने ये कैसे सारी व्यवस्था बनाई। So what was the nature of the question? आपके सवाल का स्वभाव क्या है? Why didn't he follow Krishna's instruction? He followed instruction. Yeah. But like his question was, what is the best process to worship Sadhu Guru Vaishnava? Yeah. So in Uddhav case, he followed the instruction of Sri Krishna, but still There was little delay, some transcendental delay. तो बता रहे हैं कि गुरु का सबसे श्रेष्ठ पूजा होती है उनके निर्देश का पालन करना, लेकिन उद्धव जो है थोड़ी उन्होंने देर से उनके निर्देश को पूरा किया। तो गुरु बता रहे हैं ये एक दिव्य देर हुई थी। why this delay? Little transcendental delay. ये थोड़ा दिव्य That's allowed, you know. ये प्रेम कभी-कभी ऐसा होता है। It's like, you know, you're telling the person, go to the store, please, and buy some apples for me, right? जैसे आप किसी व्यक्ति को जाके कह रहे हैं कि आप जाइए दुकान से कुछ सेब खरीद कर लाइए। And they're saying, I'm just trying to I just want to finish doing all of your laundry first. और वो कहेंगे मैं आपका सारा कपड़े पहले धोना चाहता हूँ। Then it's understandable, right? तो उसको ये समझा जा सकता He है। wants to do the first thing paka. तो पहला चीज जो कर रहे थे उसको अच्छे तरीके से करना चाहते हैं। And then he knows I also have to go to the store, right? को ये भी पता है कि मुझे दुकान में जाके दुकान भी जाना है। And it's not like he's delaying to go into Maya, you know. और ऐसा नहीं कि वो देर कर रहे हैं ताकि वो माया में जा सके। I just have to go to the bar room and have a few drinks, you know. मुझे थोड़ा बार में जाके कुछ पीना है। And once I wake up, then I'll go to Butterick Ashram. जब मैं जागूंगा तब मैं बद्रिका आश्रम में जाऊँगा। That's like a little different scenario, you know. ये थोड़ा अलग दृश्य है। That's not a transcendental delay, वो कोई दिव्य देरी नहीं थी। right? And like Mataji was Because you see, Uddhava, he broke the news to Vidura. आप देखिए उद्धव ने ये खबर विदुर को पहुंचाई। Otherwise, why didn't Maitreya just break the news to Vidura? वरना क्यों सीधे मैत्रेय ने ये खबर विदुर को नहीं पहुंचाई? So Uddhava was so intimate with Krishna. तो उद्धव कृष्ण के इतने करीबी थे। Right? It's like if a family member dies, right? That family member goes to the close friend. It's more important. तो जैसे कोई व्यक्ति परिवार के व्यक्ति मारे जाते हैं तो करीबी जो मित्र है वो उनके पास आते हैं। Because like an extension of that personality. क्योंकि वो उस व्यक्ति का ही एक विस्तार था। Right? If you hear through some cousin or some friend of the family, it's not as
nice. तो अगर आप किसी आपके परिवार के किसी संबंधी से ये बात सुनते हैं तो ये उतना अच्छा नहीं लगता सुनने में। Because they can share the news, but they cannot help you with the emotion because they don't have the same emotion as you. और वो हो सकता है आप तक खबर पहुंचा सके, लेकिन वो भावनाएं आप तक नहीं पहुंचा सके क्योंकि आपकी भावनाएं उनकी भावनाएं जैसी नहीं है। So they can't really help you. They can break the news, but they cannot pacify you. तो वो खबर आप तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन आपको शांत नहीं कर पाएंगे। But if you see that family member is not broken-hearted, they're reasonably dealing with it, then you'll be reasonably satisfied. You'll be reasonably peaceful. आप देखेंगे ये परिवार जो है उनका इतना हृदय टूटा नहीं है और वो ठीक ठाक शांत है, तो आप भी आपका भी हृदय शांत रहेगा, आप भी आपका हृदय भी टूटा नहीं होगा। Because then otherwise, why is it Krishna's arrangement that Uddhava went and even he was delayed, but then he went and spoke with the daughter? वरना उद्धव Why didn't he just go to Bhadarikashna? उद्धव ने देर की, लेकिन फिर भी वो विदुर से गए बात करने के लिए और वो सीधे सीधे बद्रिकाश्रम नहीं गए। That was also delayed. वहाँ पे भी देर हुई उनको जाने। So he did some more seva. तो असल में उन्होंने ज़्यादा सेवा की। And he played an essential role in pacifying Vidura, who was so close to Krishna. और उन्होंने एक ज़रूरी काम किया विदुर को शांत करने का, क्योंकि वो कृष्णा के बहुत करीबी थे। So it's like you're doing service, but on the way to do that service, you're doing like all these other service on the way. यानी कि आप एक सेवा करने जा रहे हैं, लेकिन रास्ते में आप और भी कई सेवा आप करते हुए जा रहे हैं। So Krishna is seeing that. Yes, he's on the way, but he's doing all seva as he's going on the way. कृष्ण देख रहे हैं सेवा करने के लिए रास्ते में जा रहे हैं और रास्ते में भी और भी दूसरी सेवा वो करते हुए जा रहे हैं। So he's multitasking, right? वो एक साथ बहुत सारे कार्य कर रहे हैं। He's doing more. वो ज़्यादा कर रहे हैं। It's like you're on the way, to some store or something, right? On behalf of the master, and then there's a car accident. And then somebody is, in trouble, right? In the car accident, right? You may get out and try to help the people, right? Because you're on the way. You don't just say, look, I got to go to the store. Let them suffer, तो जैसे आप दुकान में जा रहे हैं अपने मालिक के लिए कुछ सामान खरीदने के लिए, रास्ते में आपने देखा कोई कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई है, आप ये नहीं करेंगे मैं अपने दुकान में जाऊंगा, मैं ये आदमी को दुख भोगने दो, मरने दो। Let the world be damned, पूरी दुनिया को जाने दो। That's so the devotee's mood is, let me be helpful any way that I can be. भक्त का भाव होता है कि मैं अपनी मदद करने का प्रयास करता हूँ जिस तरीके से भी मैं कर पाऊंगा। On your way to try to finally fulfill the desire of the Lord. तो रास्ते में जा रहे हो भगवान की असल इच्छा को पूरा करने के लिए। Yeah. So the nature of my question was like it was about vapu and instruction. The delay was like because of the personality of Krishna also. Bapu and what is it? Vani. No, I know that. What is it? What is the point? So the nature of my question was related to the vapu of, maybe we can say, personality of Krishna, Yeah. and his instruction for Uddhava. Yeah. So Uddhava he was stuck between both the things, like the personality of Krishna and the instruction of Krishna, and there was some delay. He didn't wanted to leave the personality of Krishna. It's natural. Yeah. तो प्रभु सवाल पूछ रहे हैं कि वो थोड़े से भ्रमित हो चुके थे, वो उनकी देरी हो रही थी क्योंकि वो कृष्णा के वपू से उनसे अलग नहीं होना चाहते थे और साथ ही साथ उनके निर्देश को भी वो पालन करने के बीच में वो फंसे हुए थे। तो गुरुदेव बता रहे हैं ये बहुत स्वाभाविक बात है। It's like if your father is passing away, he died, right? जैसे आपके पिता मरने वाले हैं And then he says, can you go and do something for me? और वो कहेंगे कि आप थोड़ा जाकर मेरे लिए कुछ करेंगे। Right? So you're afraid that if I go and do that, then what if he passes at the time? तो आपको डर होगा कि अगर मैं जाऊँ वो करने के लिए और क्या हो उसी वक्त मेरे पिताजी मर जाए। So you're like in a dilemma. तब आप एक दुविधा में। So you're trying to stay as long as you can तो आप जितना ज़्यादा देर वहाँ रहने का प्रयास करेंगे until that instruction or duty, it just forces you. जब तक वो निर्देश या वो दायित्व आपको मजबूर न कर दे जाने के। It's kind of like that. So he's just delaying as far as he could. तो वो जितना देर कर सकते थे उन्होंने उतना प्रयास किया। That's natural. ये बहुत स्वाभाविक सी बात है।
Don't be mechanical, you know. ज़्यादा मशीन की तरह मत बनिए. Krishna's over, he's understanding all the sentiment, all the feelings, all the spiritual, you know, desire. Krishna's seeing all of that. कृष्णा सारे आध्यात्मिक भाव और भावनाएं अनुभव को समझ पाते हैं, देख पाते हैं. So it's not, none of that is offensive. तो इनमें से कुछ भी अपराध नहीं है. And then in the end, he did everything anyway. और अंत में उन्होंने सब कुछ वैसे भी किया. So everything was accomplished anyway. और सब कुछ वैसे भी प्राप्त हो गया. So what is problem? तो समस्या क्या है? He delayed. उन्होंने देर कर दी. There was some delay. कुछ देरी हुई. He did everything. उन्होंने सब कुछ किया. He did more than. उन्होंने ज़्यादा किया. All right? ठीक है? You had a question, right? आपका एक सवाल है. So, Hare Krishna. I go. Actually, my question was that Enrique's second question that you did not discuss, like how to ask the good question. The first question. The first, There was two options in the very beginning of the class. He's gonna make me work tonight. कह रहे हैं निकू का जो पहला प्रश्न था कैसे हम अच्छा सवाल पूछ सकते हैं, आपने उसके बारे में चर्चा नहीं की. मुझे कह रहे हैं ये आज मुझे कड़ी मेहनत कराएगा. I was skillfully avoiding that second part, you know, मैं कुशलता से उस दूसरे भाग से बचने का प्रयास कर रहा था. because I was rationalizing. Well, they wanted to hear this more than, you know. और मैं भी ऐसा अनुमान लगा रहा था ये लोग इस भाग को ज़्यादा सुनना चाहते हैं. So then I thought if you're like little pacified, maybe that's like enough, you know. तो वैसे तो थोड़ा इनको अगर मैं शांत कर दूँ तो वो पर्याप्त होगा उनके लिए. I hope you're not dying. मुझे उम्मीद है आप मर नहीं रहे. Did you get the X-rays? एक्सरे करवाया इनका? I didn't check yet the result. What? That's not a priority? क्या ये प्राथमिकता नहीं है करना? Why did you not check the results? अभी तक इनके परिणाम को आपने चेक क्यों नहीं किया? So, I don't think everybody's ready for like a full discussion on that. मुझे नहीं लगता अभी सभी लोग इस पर पूरी चर्चा करने के लिए तैयार हैं. We'll have to also continue. To be continued, तो ये आप जारी रहेगा. right? I just like little attracted you. Now you have to come back to hear the second part. You मैंने know? आपको थोड़ा आकर्षित किया ताकि आप दूसरे भाग को सुनने के लिए If आए. I gave you everything, you say, okay, we've got both points. Cello. अगर मैं सब कुछ बता देता तो आपको दोनों बातें बता दी गई है. चलो. Now you'll feel like, wow, you know, you still need to hear that second part. You तब know? सोचेंगे अभी भी हमें दूसरा भाग सुनने के लिए जाना होगा. This is marketing, transcendental marketing. यहाँ पे दिव्य मार्केटिंग कर रहे हैं. Everything can be used in Krishna's service. कृष्णा की सेवा में सब इस्तेमाल किया जा सकता है. I'm not really that calculated. I'm just making little jokes. मैं इतना गणित नहीं करता हूँ. मैं बस थोड़ा मजाक कर रहा हूँ. But we got into all this other part of the conversation, so we a little bit couldn't get into all of that. तो हमने थोड़ी यहाँ चर्चा की तो हम उस तक ज़्यादा नहीं पहुँच पाए. But this point was actually important because without understanding why this is so pleasing to Krishna, लेकिन ये बात बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थी क्योंकि अगर हम इस बात को समझेंगे नहीं क्यों ये कृष्णा को इतना ज़्यादा आनंद देता है, then why would we think that we have to behave in a particular type of way with such personality? तो क्यों हम सोचेंगे हमें एक विशेष तरह का व्यवहार करना चाहिए ऐसे व्यक्तियों के साथ में. So then if it says, you know, being humble and submissive and being, you know, interested in the subject matter, these type of things, then it makes sense. और तब आप विनम्र होंगे, आप अपनी रुचि दिखाएंगे ऐसे विषयों में, तब ये सब सही अर्थ निकलेगा इन सारे महत्वों को समझने के बाद. Not having challenging mood, चुनौती करने का भाव नहीं रखेंगे, listening with a great interest, और बहुत ज़्यादा रुचि के साथ सुनने का प्रयास great करें, respect to the topics and to the speaker और विषय के प्रति और प्रवक्ता के प्रति बहुत ही सम्मान रखकर and सुनेंगे, to the process. और इस प्रक्रिया के प्रति A great eagerness, greediness to hear and understand it. और बहुत ज़्यादा उत्सुकता और लोभ होगी इसको समझने के लिए. Right? If our friend back there, if he didn't, you know, he had all of these questions and doubts, so he was able to express all of that.
हमारे मित्र जो पीछे हैं उनको बहुत सारे सवाल थे, संदेह थे और उनको ये सब अपने बाहर निकालने थे। Not, I don't want people to just be like blindly following, fanatically following. मैं नहीं चाहता लोग आके अंधे होकर बस मेरी बातों को स्वीकार We करें। should understand why are we doing it. हमें ये समझना चाहिए हम क्यों कर रहे हैं। When I joined, I had thousands of questions. तो जब मैं जुड़ा था मेरे पास हजारों सवाल थे। I'd be like, why this? Why this? Why this? I drove my people who were looking after me. I drove them crazy, you know. और मेरे साथ जो लोग थे मैं उनको पूरी तरह से पागल कर देता था सवाल पूछ के। Because I didn't want to just blindly accept it. क्योंकि मैं भी अंधे की तरह सब कुछ स्वीकार नहीं करता If I था। had question or doubt, I wanted it to be resolved. और मेरे पास कोई सवाल थे, सही सवाल थे, मैं चाहता था उनका समाधान किया जाए। I wanted to be convinced. मैं आश्वस्त होना चाहता था। It wasn't that I was questioning or doubting because I was looking for an excuse not to accept it. मैं इसलिए सवाल संदेह नहीं कर रहा था कि मैं कुछ बहाना निकाल सकूं कि मैं ये नहीं करूंगा। It was because I wanted to be fully convinced. इसीलिए क्योंकि मैं पूरी तरह से आश्वस्त होकर करना चाहता था। I don't want any loophole, any loose end. क्योंकि कोई मैं बचने का रास्ता छोड़ना नहीं चाहता था। So I wanted everything to be crystal clear. तो मैं सब कुछ शीशे की तरह साफ करना चाहता था। That's intelligent. ये है बुद्धिमानी। Sometimes I would joke my Sankirtan leader, you know, because I asked so many questions, he was forced to study. मैं अपने Give me all the answers, you know. लीडर से तो मजाक में कहता था कि मेरे पास इतने सवाल थे कि उनको इतना सारा किताबों का अध्ययन करने के लिए मजबूर होना पड़ा था कि वो मेरे उत्तर को दे सके मुझे। So I used to joke with him. I said, I just made you like a better preacher, you know. मैं उनके साथ थोड़ा मजाक करता था, मैंने आपको एक अच्छा प्रचारक बनाया। Because you had to get all the answers. क्योंकि आपको मेरे लिए सारे प्रश्नों का उत्तर ढूंढना पड़ा। And he's like, I know, you know. कहता हाँ मुझे पता है। But he was trying to help me. लेकिन वो मेरी मदद करने का प्रयास कर रहे थे। I have one more little small question, like regarding this pure devotees. So we see sometimes the pure devotees go through bodily or mental suffering sometimes in later stages, in advanced stages. So my question is like if some pure devotee experiences some mental problems in advanced stages, then Yeah, when you're a guru, it's like the worst situation on the planet. लोग सवाल पूछ रहे हैं कि कई बार देखा जाता है कि शुद्ध भक्त अपने जीवन की आखिरी समय अवस्था में बहुत सारे शारीरिक और मानसिक समस्याओं से जूझ रहे होते हैं। तो गुरु बता रहे हैं गुरु होना एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी उत्तरदायित्व है विशेष। When my Gurudev used to say, when they made me spiritual master in ISKCON, he said that was the worst day of my life. गुरुदेव कहा था जब मुझे गुरु बनाया गया ISKCON में तो मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन था। Most things will do, if you become a guru, right, that's like the best day of your life, right? कहते हैं जिस दिन आप गुरु बनेंगे उस दिन आपके जीवन का सबसे अच्छा दिन होगा। अब मैं गुरु बन गया। Gurudev said it's the worst day of my मेरे life. गुरुदेव कहते हैं वो मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन था। Because from that point, my whole life is disturbed. क्योंकि उस दिन से मेरा पूरा जीवन ही परेशान हो गया। Because you have to absorb all of this karma. क्योंकि आपको इतने सारे कर्मों को अपने अंदर समाना होगा। Everybody's problem, you have to absorb their problem. सभी लोगों की समस्या को आपको अपने ऊपर लेना होगा। You have to help them with it. Means you have to take it. You have to take some. How do you say it? Some reaction. और आपको उनकी मदद करनी होगी और उनकी कुछ प्रतिक्रियाओं को अपने ऊपर लेना होगा। So spiritual master is burning off all of our sinful reactions. आध्यात्मिक गुरु हम सभी के पाप कर्मों को जला रहे हैं। So if everybody has Himalayan mountains, just imagine how much reaction the spiritual master has to burn off. तो सभी के अगर हिमालय पर्वत जैसे पाप कर्म की प्रतिक्रिया है तो आप कल्पना कीजिए आध्यात्मिक गुरु को कितने पाप कर्मों को जलाना होगा। That's why unless you're a bona fide authorized personality, you cannot possibly burn off that reaction. इसीलिए अगर आप प्रामाणिक आधिकारिक व्यक्ति नहीं हैं तो आप इतने सारे इस चीजों को जला नहीं सकते। That's why it says better not to take so many disciples. इसलिए कहा जाता है बेहतर होगा आप ज्यादा शिष्य ना बनें। Because you have to burn off and you have to, absorb all of their sinful reactions. क्योंकि आपको ये सारे पाप कर्म की प्रतिक्रियाओं को अपने अंदर लेकर जलाना होगा। And then that comes out onto the spiritual master. और ये सब गुरु के ऊपर आता है।
I remember one time my spiritual master came out in the morning and he had all of this red marks on his back. मुझे याद है एक बार हमारे आदित्य गुरु सुबह बाहर निकले और उनके पीठ पे बहुत सारे लाल निशान बने धब्बे बने थे. And then one of my godbrothers said, Gurudev, why you have all of this red marks on your back? और मेरे गुरु भाई ने उनके शिष्य ने सवाल पूछा, गुरुदेव आपके पीठ पर ऐसे लाल निशान क्यों बने हैं? And he's saying, you see, the whole night I was getting eaten by these red ants. उन्होंने कहा पूरी रात मुझे ये लाल चींटियां खा रही थी. And he's saying, why, if you're like pure devotee, why is this happening to you? उन्होंने कहा आप तो शुद्ध भक्त हैं, आपके साथ ऐसा क्यों हुआ? And he said, because I've accepted so many nasty disciples like you. उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हारे जैसे गंदे शिष्यों को स्वीकार किया है. I was shocked when I heard that. मुझे बहुत बड़ा झटका लगा जब मैंने The look on that devotee's face was just also shocked, और उस भक्त का चेहरा भी पूरा चौंकाने वाला था. Oh, if you're a pure devotee, why do you have to get eaten by ants like this, आप अगर ऐसे शुद्ध भक्त हैं, आपको ऐसी चींटियां क्यों खा रही हैं? He said, because I'm accepting so many nasty people like you. क्योंकि मैं तुम्हारे जैसे गंदे लोगों को स्वीकार कर रहा हूँ. So that reaction has to come out on the guru. तो ये प्रतिक्रिया गुरु के ऊपर आनी लेने. That's why it says sometimes he gets, all of these different ailments, different problems come. इसलिए कहते हैं कई बार ये बहुत सारे अलग-अलग तरह की समस्याएं गुरु के ऊपर आती हैं. A different type of suffering come. अलग-अलग तरह के दुख आते हैं. So my Gurudev said, once I became guru, that was the worst day of my life. मेरे गुरुदेव ने कहा जिस दिन मैं गुरु बना हूँ मेरी जिंदगी का सबसे खराब दिन था. From that day, I could not sleep properly. और उस दिन से मैं किसी भी दिन सही तरीके से सो नहीं पाया, ना मैं ठीक तरीके से I cannot eat peacefully anything. I can't digest anything. कुछ भी शांति से खा नहीं पाता था, कुछ भी शांति से. Everything is a big problem and disturbance. सब कुछ बहुत बड़ी समस्या और I must come and go, Gurudev, oh, we got this problem and that problem and this problem and that problem. गुरुदेव में ये समस्या, वो समस्या, ये सारी समस्याएं हैं. So it's complete disturbing situation. पूरी तरह से परेशानी वाले आप परिस्थिति था. Does that help you? क्या आप थोड़ी समझ पाए? That's why anyone who has any intelligence would never want to be a guru. इसीलिए जिसके पास थोड़ी सी बुद्धि हो वो कभी गुरु बनना नहीं चाहेगा. Because you have to take all of the reaction. क्योंकि आपको सारे प्रतिक्रियाओं को अपने ऊपर लेना होगा. And then the whole time you're taking all of the reaction, you're getting criticized. और पूरे समय जब आप उनकी प्रतिक्रिया ले रहे हैं, आपके ऊपर ही And everyone's गलतियां just निकालेंगे. sitting finding fault with you. और सभी लोग बैठ के आपकी ही गलतियां निकालेंगे. And grumbling and complaining. शिकायत करेंगे. Challenging spirit. चुनौती के भाव से Doubting. Not following. पालन नहीं करेंगे. Not accepting. स्वीकार नहीं करेंगे. Spiritual master is spending gallons and gallons of spiritual blood. आध्यात्मिक गुरु गैलन अपना आध्यात्मिक रक्त बहाएंगे. And we're not even taking it seriously. और हम गंभीरता से उनकी बातों को भी नहीं लेंगे. So it's a very thankless task. तो बिना धन्यवाद के उनको कार्य करना होगा. Very difficult. बहुत ही कठिन है. Any other points, question? कोई अन्य बात या प्रश्न? Yeah. She's a new person. ये नए व्यक्ति है. She always asks the same question. ये हमेशा एक ही सवाल पूछती है. I'm just a demon. मैं वो असुर हूँ. I can't do anything. मैं कुछ नहीं कर सकती. She asks the same question. एक ही सवाल हर बार पूछती I है. want to be devoted, but I'm a demon. मैं भक्त बनना चाहती हूँ लेकिन मैं असुर हूँ. Sanatan, isn't it? सनातन ऐसा है. Yeah, my question is like you said that be a simple person is good. You can put good knowledge to them, and when that simple person suppressed by some crooked person, should we reverse that crooked person with some diplomatic situation or something that like Krishna did to Shakuni? When Shakuni used to do politics in their family and do some lot of help, when like he situated some condition, like like he like created some condition
to to create the war. What Shakuni did, and what Krishna did, the politics to Shakuni, because for the right thing. Is it like be a simple person? Is it right to revert the crooked person with something politics or some answer that is needed for them? So she's basically asking the dealings, how you deal with someone who's simple, how you deal with someone who's crooked. Like you be diplomatic with the crooked person, and the simple person is like this. Yeah, it says that, I think it's like some proverb that says, never show your simplicity in front of crooked person. तो माता जी का सवाल है कि कई बार जो सरल लोग हैं जो आसानी से चीज़ों को समझते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, लेकिन कई बार कुटिल लोग उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं, तो क्या उनके साथ भी कुटिलता या राजनीति की जा सकती है? उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए? तो गुरुदेव बता रहे, कहावत में कहा जाता है कि जो सरलता है कभी भी कपटी लोगों के सामने प्रस्तुत नहीं की जानी चाहिए, Because they'll just take advantage of कि you. वो उसका फायदा उठाएंगे. That means I can do something like some politics with that crooked person to do something right to humankind, for us, that we can do. Just to protect yourself. माता जी कह रहे हैं कि हम थोड़ा सा कुछ अपने आप को बचाने के लिए उनके साथ थोड़ा कुटिल तरीके से व्यवहार कर सकते हैं. गुरुदेव कह रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए थोड़ा सा कर सकते हैं. Because if we're not strong enough and we're not convinced, how will we be strong enough to convince somebody else, especially if they are not simple? तो अगर हम खुद मजबूत नहीं हैं, हम खुद आश्वस्त नहीं हैं, कैसे हम किसी और को मजबूत या आश्वस्त बना पाएंगे, विशेष करके जब ज़्यादातर लोग ऐसे कपटी हैं. Even that too, that person tried to suppress the simplest person, like what is it? they try to. The crooked person tried to suppress a very simple person. Yeah, that's why this should be avoided. Yeah, because like whenever I see something wrong happening to some person and they cannot resolve that problem, and they try to like suppress and they try to torture, and I see so many I see this kind of scene in so many places. Yeah, demoniac. Yeah. So why That's can I? why Lord Nrsimhadev, he has to come with his fingernails, slice off the head. Why can't I resist myself to seeing that? It's very difficult to see that thing. It's painful. That's when material life is prison house. Yes. So when you see all of this thing, then you realize this is nasty place, a nasty platform, isn't it? Better just get out of here. तो How soon I can do that? That is what I'm finding. So she's asking, how can I make it as soon as possible and get out of this place? That's what we're trying to figure out here, हम भी यही पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कैसे हम इस भौतिक कारागार से बाहर निकल सकेंगे. माता जी का सवाल था कि कैसे जब सरल लोगों के साथ अन्याय होता है तो देखने में बहुत बुरा लगता है. गुरुदेव बता रहे थे कि आसुरिक गुण है, तो इसलिए हमें समझना चाहिए ये भौतिक जगह से जितनी जल्दी हम जल्दी यहाँ से बाहर निकल सकें. तो गुरुदेव बता रहे हैं हम यही करने का यहाँ प्रयास भी कर रहे हैं, जितना जल्दी कैसे आप यहाँ से बाहर निकल सकते हैं. Just like when you're in the jail, the first thing is, okay, how do you survive the situation, right? जैसे जेल में आप होते हैं तो सबसे पहले ये समझना होता है कैसे मैं यहाँ पे बचा रह सकूँ. And then when you're surviving the situation the whole time, then you say, okay, how do I get out of here? जिस समय आप वहाँ बचे आप ये सोच रहे होते हैं कैसे मैं इस यहाँ से बाहर निकलूँगा. So we're trying to survive and calculate how to get out of here at the same time. तो हम यहाँ बचे रहने का प्रयास करें और साथ ही साथ ये गणित करने का प्रयास करें कैसे हम यहाँ से बाहर भी निकल सकते हैं साथ में. Right? Because if you have to escape, you have to be strong, right? अगर आपको बाहर निकलना है तो आपको शक्तिशाली होना होगा. So sometimes they're doing exercises to get ready to escape. कई बार वो जो है कसरत कर रहे होते हैं बाहर निकलने के भागने के लिए. Because they'll have to climb the wall and they'll have to run a far distance, right? क्योंकि उनको दीवार पे चढ़ाई करके दूर तक भागना होता है. So they're surviving, but they're strengthening themselves. तो वो बचे हुए हैं और अपने आप को शक्तिशाली बना रहे हैं. Because eventually they have to try to break out of that place. क्योंकि बाद में उनको जो वहाँ से बाहर निकलने का प्रयास करना है.
So the sooner we solve this and get out of here, the better. तो जितने जल्दी हम इसको हम समाधान करें और इससे बाहर निकलने का प्रयास करें उतना बेहतर है। It says material world is not a fit place for real gentlemen or lady. कहा जाता है ये भौतिक जगत एक सभ्य महिला या पुरुष के रहने की जगह नहीं है। We don't fit in this world. इस जगत में हम फिट नहीं बैठते। So that's why devotees come together. इसीलिए भक्त एक साथ आते हैं। Because they have a like-mindedness. क्योंकि उनकी मानसिकता एक जैसी होती है। So they want to have more like a Vaikuntha spiritual atmosphere and dealing. तो वो वैकुंठ जैसा परिवेश या वैकुंठ जैसा व्यवहार आपस में रखना चाहते हैं। Because that's very pacifying, attractive and pacifying. तो ये बहुत ही आकर्षक होता है और बहुत ही हमें संतुष्टि देता है। And then you contrast that with how materialistic, envious people are behaving. और आप उसकी तुलना कीजिए कैसे भौतिकतावादी लोग या ईर्ष्यावान लोग किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। And it's very nasty and very painful. और ये बहुत ही गंदा और बहुत ही दर्दनाक व्यवहार होता है। So it's cruel. ये बहुत ही That's what you're talking about. It's a cruel behavior. ये बहुत ही बुरा व्यवहार होता है। So demoniac people, envious people, they're very cruel. They're very mean-spirited. तो आसुरिक लोग जो जिनका आसुरिक गुण होता है वो बहुत खराब व्यक्ति होते हैं। They cannot benefit themselves or anybody else. तो वो खुद की कुछ भलाई नहीं कर सकते ना ही किसी और की भलाई कर सकते हैं। So such personalities, then better, like a snake, better to just kill. तो ऐसे लोग जो सांप के जैसे हैं बेहतर होगा इनको मार दिया जाए। Right, it says even if a serpent is killed, a poisonous, envious serpent is killed, even sadhu is saying, very good. कहा जाता है जब कोई बहुत विषैला जहरीला सांप मारा जाता है तो साधु भी कहते हैं कि बहुत अच्छा हुआ। Because it is biting everybody. क्योंकि वो सभी को काट रहा है। So if they won't be adjusted, better cut off the head, isn't it? तो अगर वो अपने आप को ठीक नहीं करेंगे तो बेहतर होगा उनको गला काट दिया जाए। Yes. Your friend is now Guruji, I remembered one thing. I had heard a story that there was a devotee. He has seen a scorpion in the river drowning, and what he did, he got into the river and saved the scorpion, and the scorpion bitten him. Scorpion, what? It stung him. Sting. Okay. And he was floating in the river. And when he came out, other devotees asked him, "Why you helped that scorpion?" So he said that was his that was his character, that he has to bite me, even if I'm saving that scorpion. And my character was to save that scorpion because that's my character, my personality. So you should go in the forest and preach to the tigers? No, like, so this, what does this story teach us then? Like, to be in our own character, or to, like, even somebody is dying, so we can let them because of their behavior or their character. If someone is like a tiger and wants to rip off So your no, it's head, like a scorpion or a snake. right. So if they want to rip off your head, they want to kill you, are you going to preach to them? No, like, it's like, You should avoid them. no, it's not preaching. I'm asking, like, to save them. Suppose if they are in any worse situation. How you can save them? If you see someone drowning or falling, but that person is pious person. You're just taking some story and making it like it has some kind of universal truth to it or some universal principle. What is the meaning behind this story? So the thing I is, mean, I understand the story, but what is it? It means you sacrifice yourself? what should be the action of that person or a devotee? So it's a foolishness. It's a foolishness. If my service is to help conditioned suffering soul, and then I just say, okay, I'm going to go preach to the tigers and the lions and the bears, because they're also spirit souls inside of the body. So if I get mauled and killed, then I can't help the humans to hear about Krishna-katha.
So what is the value of this type of foolish decision that I'm going to go preach to animals that are going to kill me, and then I can't actually do my service to help humanity? How do you answer that question? In reference to your analogy, right? How do you answer that question? If we relate this with the humans, not the animals. If you make it about, he wants to make the story not about animals anymore, he wants to make it about humans. Yeah, but you brought the story about the Like it was an example. So suppose example of what? Example like of how a person should behave towards the other person who is pious, envious, jealous. But if you can't help them and it kills you, if I'm devotee, how it can affect me then? If it's what? If I'm a devotee, how can it affect me? How powerful devotee are you? That's the point. Yes. That's why I said, if you're not a powerful devotee, where you'll not be affected by that thing, and you don't have potency to purify them and convince them, then better just avoid them. Or you could say, okay, I can't preach to that person, because it says if you preach to faithless people, that's aparad, it's offensive. You should never preach to faithless people. So if someone is faithless and demoniac and envious, you should not even try to preach to such a person. And it says that their own poison they'll burn, their enviousness will burn and kill themselves. So even great preacher, even he may also avoid such a person with this type of mentality. Because you understand, the person is condemned. So if somebody is not even a powerful vaishnava or preacher, right, we should never attempt to try to persuade them or preach to them or convince them about anything. Because we're not strong enough, we're not convinced enough. And only that, keep associating with them and preaching to such faithless, envious person, only that damage will come back onto you. Only you'll be affected by that asatsanga. Does that make sense? Yes, Guruji. And also there is another example of Buddha. He preached an demon, Anglimala, who used to cut the fingers of all people, those who were going near him. So he's given another story, another example of Buddha preaching to someone who used to chop the fingers off people. Some brute? Buddha. Lord Buddha, yeah. He's now preaching to someone who used to chop people's fingers off. He's preaching to that type of person? He preached that person, and he has converted and improved his life. He converted him. He improved his life from demon to a spiritual person. But the whole village was not accepting. Buddha is God. So he has the potency, right? He has potency. तो प्रभु बता रहे हैं कि जैसे भगवान बुद्ध ने एक बार किसी को प्रचार किया जो लोगों के उंगलियां काटता था, उन्होंने उनको प्रचार करके भी सही व्यक्ति बना दिया। तो गुरुदेव बता रहे हैं क्योंकि बुद्ध के पास ऐसी शक्ति है, वो स्वयं भगवान है, तो वो ऐसा कर सकते हैं। So we have to understand what is our actual adhikar or qualification. तो हमें ये समझना होगा हमारा असल अधिकार क्या है, हमारी असल योग्यता क्या है। If we over exaggerate that, अगर हम उसको जरूरत से ज़्यादा समझेंगे, then you can get seriously damaged. तो आप बहुत ही बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। Because we're overestimating our capability. क्योंकि आप अपनी क्षमता को जरूरत से ज़्यादा समझ रहे हैं।
So if someone is argumentative, you cannot really convince them because even you yourself don't have all of the arguments. अगर कोई बहुत बहसबाजी कर रहा है तो आप उसको असल में आश्वस्त नहीं कर सकते क्योंकि आप भी सारे बहसों को आप नहीं जानते हैं। So if they start putting all of their doubts, अगर वो अपने सारे संदेह आपके ऊपर डालना शुरू कर देंगे, right, and all of their questions, like you're putting all of these questions and doubts, right? जैसे आप सारे सवाल सारे संदेह रख रहे हैं, वो अपने सारे सवाल सारे संदेह आपके सामने रखना शुरू करते हैं। So if you do that to someone who doesn't understand all of those answers, और अगर आप कोई ऐसा व्यक्ति आपके साथ ऐसा कर रहा है जो ये सारे उत्तरों को समझता नहीं है, then they'll also become confused and doubtful. तो वो भी भ्रमित हो जाएंगे, संदेह करने लगेंगे। So better just avoid it. तो बेहतर होगा उनको आप नकारें। Or try to, if you can, bring them to somebody who can help them. या फिर अगर आप उनको लेकर जा सकते हैं ऐसे किसी व्यक्ति के पास जो उनकी मदद कर सकता है तो वहाँ उनके पास लेकर जाइए। But if they're very envious against Krishna and envious about Krishna's devotees, it's better just to avoid them. लेकिन अगर वो कृष्णा के भक्तों के प्रति बहुत द्वेषी है तो बेहतर होगा उनका उनसे बच कर रहें। And just quietly do your own devotional practice. और चुपचाप अपनी भक्ति में सेवा करते रहें। And then maybe they'll be watching you and see what's happening with you. और फिर हो सकता है वो आपको देखेंगे और आपके साथ क्या चीजें हो रही हैं। Then they may come to you and say, oh, you know, what are you doing? You look different. You are doing better. What are you practicing? What are you understanding? Then you may try to help them. तब वो आपको देखेंगे और कहेंगे आप कुछ बेहतर लग रहे हैं, आप कुछ अलग लग रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, और वो आपको समझने का प्रयास करेंगे। But if someone's just very envious and has no faith, then better just to avoid them. लेकिन अगर कोई बहुत द्वेषी है, जिसके पास कोई श्रद्धा नहीं है, तो बेहतर होगा आप उनसे बच कर रहें। Because we cannot really help them. क्योंकि हम असल में उनकी मदद नहीं कर पाएंगे। But they're quite capable of hurting us. लेकिन वो बहुत योग्य हैं हमें नुकसान पहुंचाने के लिए। Does that make sense? क्या इसका सही मतलब बनता है? And if somebody is very simple, but you don't have all of the answer, then you say, oh, you know, come and listen to that Maharaj or that Guru. He can nicely, I found somebody who can answer this type of thing, this type of question or doubts. और अगर आप सरल हैं, आप कहेंगे, आपके जो सवाल हैं, एक महाराज हैं, मैं एक गुरु से मिला हूँ जो आपके सारे सवालों का जवाब दे सकते हैं। When I would meet different devotees who were, you know, confused and had many doubts and questions, I said, why don't you come and meet Maharaj? और मैं कई बार ऐसे भक्तों से मिलता था जो बहुत भ्रमित दिखते थे, जिनके अंदर बहुत सारे संदेह थे। मैं उनको कहता था आप आइए और महाराज से मिलिए। I found that he answered all of my questions. और मैंने देखा मेरे सारे सवालों को And he जवाब दिया है, destroyed my doubts. मेरे संदेहों को नष्ट किया है। And I feel much better about that. और मुझे इसका बहुत बेहतर महसूस So I हुआ। got like a very positive, you know, result. और मुझे बहुत ही सकारात्मक परिणाम दिख So रहा I है। can recommend that this person might be able to seriously help you. तो मैं आपको सुझाव देना चाहूँगा, ये व्यक्ति बहुत गंभीरता से आपकी मदद कर It's सकते हैं। like the best you can do. और ये आप सबसे अच्छा उनके लिए कर सकते हैं। If we're not in a position to be able to really, you know, solve their problem, अगर हम ऐसी स्थिति में नहीं है कि असल में हम उनकी समस्या का समाधान कर सकें। all right? ठीक है? You see, we had, you know, we had our plan, we took our votes, right? And Krishna moving us in some other direction. देखिए हमने अपनी योजना बनाई थी, हमने मतदान भी लिया, लेकिन कृष्णा के पास अलग योजना थी, हम अलग दिशा में आगे बढ़ गए। So we have to go with the flow. We have to go with Krishna's flow. तो हमें कृष्णा जहाँ हमें लेकर जाना चाहते हैं, उनके आधार पर हमें जाना होगा। So we can make a plan, तो हम योजना बना सकते हैं, but then Krishna will move it in the way he wants to move it. लेकिन कृष्णा उसको अपने ही हिसाब से चलाना चाहेंगे तो और So we चलाएंगे। have to be flexible. तो हमें उनके साथ चलना होगा। We're not always so flexible. हम हमेशा इतने लचीले नहीं होते। Everything has to be, you know, very particular way. हम चाहते हैं सभी कुछ बिल्कुल एक ही तरह से चलता रहे। We have to be adjustable, flexible. आपको हमेशा व्यवस्था अपने आप को बनाना या लचीला अपने आप को बनाना चाहिए। It's like someone's asking the question and you're trying to answer it, and they're like, no, you answer in my way. जैसे आप कोई सवाल पूछता है, उत्तर दे रहे हैं, फिर वो कहेंगे नहीं मेरे तरीके से आप उत्तर दीजिए। You're not answering according to my way that I think you should answer my question. आप मेरे तरीके से उत्तर नहीं दे रहे हैं, जैसा मैं चाहता हूँ उस तरीके से मुझे उत्तर दीजिए।
So why you're asking the question? तो फिर आप सवाल क्यों पूछ रहे हैं? That means you already think you have the answer. इसका मतलब आप सोचते हैं आपको पहले And से you're आपको trying to उत्तर है make me answer according to your understanding. और बस आप मुझसे वो उत्तर निकालना चाहते हैं जो आपकी समझ है। But maybe there's another way to look at that thing. हो सकता है एक बेहतर तरीका भी उसको उस प्रश्न You को have to देखने का। keep open mind. हमें अपना मन खुला रखना Let चाहिए। Krishna, expand your understanding. तो कृष्ण आपकी समझ को और ज़्यादा विस्तार कर सकते, विस्तृत कर सकते हैं। Otherwise, we remain very, very limited. वरना हम बहुत ही सीमित बने रहेंगे। We're very narrow in our scope, in our understanding. हमारी समझ बहुत सक्रिय होगी। We want to expand our consciousness. हम अपनी चेतना को और विस्तारित करना चाहते हैं, अपनी समझ को और विस्तारित करना चाहते हैं। I remember my Gurudev would say sometimes the same thing like 5 or 6 times in a row. मुझे याद है हमारे गुरुदेव कई बार एक ही बात को 5 बार 6 बार कतार में बोल रहे हो। And at first I was like, well, he already just said that, और पहले मैं सोचा था इन्होंने तो ये बात पहले ही बोल दी है। Then how he's saying again, saying like same thing. और फिर वही बात फिर दोबारा क्यों कह रहे हैं? But if you actually listen very closely, like every time he's just switching it like some notch, और मैं जब बहुत ध्यान से आप सुनेंगे देखेंगे हर एक बार वो और ज़्यादा गहराई में उसको लेके जा रहे हैं। So on some level it seems like the same. किसी एक स्तर पे ऐसे देखने में वो सब एक जैसा लग रहा है। But there can be very, very subtle, adjustments and facets of that same presentation. लेकिन एक ही प्रस्तुति के बहुत सारे अलग-अलग सूक्ष्म पहलू हो सकते हैं। So that means it's just expanding your understanding of that same thing that you only had like, maybe just a couple of ways of looking at that. तो उस एक ही चीज़ को इतने विस्तार करके वो समझाने का प्रयास करें जो हो सकता है आप बिल्कुल एक ही तरीके से उसको समझ पाए या देख पा रहे थे। It's like if you have some like, I don't know, like a diamond or some brand new car, right? You're just like you're looking at it from like all different directions, isn't it? जैसे आपको कोई हीरा हो या कोई नई गाड़ी हो उसको आप अलग-अलग दिशा से देख रहे होते हैं। What is the design? How does it look in the sun? How is it like in this situation or that situation? You're getting all different types of ways of looking at that. इसका डिज़ाइन कैसा है, धूप में कैसा दिखता है, अलग-अलग परिस्थिति में किस तरीके का कार्य करता है, अलग-अलग तरीके से आप उसको देखने का प्रयास करते हैं। Isn't photography is like this, right? जैसे फोटो खींचना भी बिल्कुल ऐसा ही है। Every photographer, they want to capture something. There's thousands of that same picture, but you want to capture it in such a way that nobody else saw it like that. तो बहुत सारे एक ही तस्वीर जो है हजारों फोटोग्राफर्स ने खींची लेकिन आप उसको कुछ ऐसे तरीके से खींचना चाहते हैं कि कभी पहले किसी ने तरीके से देखा नहीं था। Looking at that, बिल्कुल एक अलग अनोखे तरीके से उसको Otherwise, दिखाना it's just चाहते हैं। like the same exact picture. वरना वो देखने में बिल्कुल वैसा ही Might as तस्वीर well लगता just है। get a postcard, ज़्यादा बेहतर है कोई पोस्ट कार्ड ले लें। Do you have any question? आपका कोई सवाल है? Are you just trying to absorb all this information? ये सारी जानकारी को अपने अंदर समाने का प्रयास कर रहे हैं। I don't know, maybe not a question, but A realization yeah, kind or a of. speculation? Maybe. Let's see if it's a speculation or a realization. चलिए देखते हैं ये आपका केवल मनोधर्म है आपका साक्षात्कार है। That would be a very interesting experiment. ये बहुत ही दिलचस्प हमारा अभी परीक्षण होगा। He wants to try it out. Is this a speculation or is it a Because I think तो this, इसकी परीक्षा लेना चाहते हैं मनोधर्म है या फिर साक्षात्कार है? I think this, but I think okay, I will say only if you ask me. Okay, what is you? Thank you. Okay. You ask me questions, right? I try to answer. Yeah. So I'm asking you questions. Yeah. आप मुझे सवाल पूछते हैं मैं उत्तर देने का प्रयास करता हूँ। आज You मैं also आपका सवाल have to पूछ रहा हूँ answer. तो आप मुझे उत्तर दीजिए। When Especially as a Italy GBC, जैसे कि आप इटली के जीबीसी sometimes हैं some question is there, कभी कभी कुछ सवाल हो सकते हैं naturally. किए जा सकते हैं स्वाभाविक रूप से। So what happened? तो क्या हुआ when The politician? the जब politician राजनेता ने was asking from like Lightning round, lightning round. What about this? What about that? What about this? Yeah, but it's not about this. It's about your how you are answering to this question. I think I have like the idea that all this plan of Krishna is like a way can be maybe a way to
make the pleasure like unlimited. To make a what? The pleasure of Krishna and To us. expand Krishna and devotees' pleasure? Yeah, because if all these questions from this Prabhu was to make a very nice exchange and happiness with the Gurudev and the devotees and like that. No, I mean that you're answering that why the soul can have a choice. That And, whole line of questioning, yeah. And the fact that Krishna want to pleasure his devotees, and the devotees want to pleasure Krishna. This exchange makes the pleasure like unlimited, because it increases. Yeah, it's like a whirlwind. Yeah, that would go Tornado. Italians, they speak a lot with their hands, you know. So they're telling like many stories with their hands, you know. So you have to catch it, you know. It creates like a nice visual, you know. It's expressive, you know. He was, I think, telling the exchange of love between the father and the child. We were discussing about that. What is it? His understanding of what he was saying is about the love between the father and the child, like Krishna and the devotee. He wants a healthy competition. Yeah. He wants to have competition, which is ever increasing. Yeah. The father wants the son to be more advanced than him. तो प्रभु साक्षात्कार अपना बता रहे थे कि कैसे ये जो आदान प्रदान है, कृष्णा अपने भक्तों का ज़्यादा गुणगान करना चाहते हैं और भक्त कृष्णा का गुणगान करना चाहते हैं, और दोनों के बीच में दिव्य प्रतियोगिता है, और ताकि आनंद को और ज़्यादा बढ़ाया जा सके। तो गुरुदेव बता रहे हैं पिता का स्वाभाविक इच्छा होता है कि उनका संतान उससे और ज़्यादा आगे बढ़े। So he's not envious, oh my son will be greater than me. He gets more pleasure if he achieves more than I achieved and does more than me, I'll be even more happy. और पिता को कोई द्वेष नहीं होता उनके संतान के प्रति, और मुझसे ज़्यादा कुछ प्राप्त करे, मुझसे महान हो जाए, तो उनको उससे द्वेष नहीं होता। And then the son is saying, if I achieve anything, it's because I had such a great teacher. He's giving all credit for who made you successful. और अगर बेटा बहुत सारी महान चीज़ें प्राप्त करता है, कहता है क्योंकि मेरे पिता ऐसे महान हैं, ऐसे शिक्षक हैं जिनके माध्यम से ये सारी सफलता प्राप्ति की जाती है। So that's a very like a sweet exchange, you know? तो एक मीठा उनके बीच संबंध आदान प्रदान का है। It's based on respect and love and affection. तो ये आदर, सम्मान और प्रेम और स्नेह पे आधारित है। And even a challenging type of question, it's not necessarily a bad thing. और चुनौतीपूर्ण सवाल भी कोई जरूरी नहीं वो बुरा ही हो। Because they're showing that they're interested in the topic. क्योंकि वो दिखा रहे हैं कि उनको इस विषय में कुछ दिलचस्पी है। And then now they're really trying to understand it. और वो उसको असल में अब समझने का प्रयास कर रहे हैं। Right? So not like they're looking for excuse not to accept it. ऐसा नहीं वो बहाना निकालने का प्रयास करें ताकि वो उनको ये क्यों नहीं करना चाहिए। We just want to be convinced why I should accept it. क्योंकि वो आश्वस्त होना चाहते हैं क्यों मैं इसको स्वीकार करूँ। How is it that I should accept it? या फिर कैसे मैं इसको स्वीकार करूँगा। So it must be based not sentimentally or fanatically, but based on knowledge and realization. केवल भावनाओं पे आधारित नहीं होना चाहिए, साक्षात्कार पे और ज्ञान के ऊपर आधारित होना चाहिए। Then it's more substantial. It's more real. तब इसमें ज़्यादा वजन होगा, ये ज़्यादा असली होगा। First, when he came, he did not say anything. पहले जब आए थे तो ये कुछ भी नहीं कह रहे थे। He was just sitting like, okay, let's check out this whole situation, you know. चलो मैं देखता हूँ यहाँ क्या परिस्थिति हो रही है। And then I just like had to like little, I'm like, what's your story, right? और फिर मुझे बोलना पड़ा आपकी क्या कहानी है? What are you all about? आप हैं क्या? So I little had to like challenge him. मुझे थोड़ा उनको चुनौती देनी पड़ी। So it was like a nice
funny exchange, right? तो बहुत ही मजाकिया आदान प्रदान हुआ। So that's how spiritual master helping us. इस तरीके से आध्यात्मिक गुरु हमारी मदद कर रहे हैं। I found that, you know, only my spiritual master really understood me and knows how to deal with me and motivate me. मैं ये समझ पाया केवल मेरे आध्यात्मिक गुरु ही मुझे समझ पाते थे और मुझे प्रेरित कर पाते थे और मुझसे सही व्यवहार कर पाते थे। And it was natural. It wasn't like some artificial like some manufactured thing. और बहुत स्वाभाविक तरीके से कुछ बनावट करके निर्माण करके करने का प्रयास नहीं कर रहे थे। It was like automatic, spontaneous type of dealing. अपने आप ही बिना किसी रुकावट के मेरे साथ व्यवहार कर पाते थे। Not some official, you know, mechanical type of process. किसी औपचारिक तरीके से या मशीन की तरह मेरे साथ व्यवहार नहीं करते थे। It was more personal. बहुत ही व्यक्तिगत तरीके से friendly type of dealing. बहुत दोस्ताना तरीके का व्यवहार करते थे। That's much more attractive. ये और भी ज़्यादा आकर्षक है। If it's not based on love and affection, then it all has to be based on rules and laws and control. अगर ये प्रेम और स्नेह पे आधारित नहीं है तो नियम, कानून और सख्ती के ऊपर आधारित होगा। Well, you can persuade someone with love and affection, and then otherwise they have to use fear, intimidation, control, laws, right, to manipulate you, right? तो कोई प्रेम और स्नेह से आपको आगे बढ़ा सकता है या फिर भय डालना होता है, कोई नियंत्रित करना होता है, इस तरीके से प्रेरित करना होता है। So how are we being persuaded? तो हम किस तरह से प्रेरित होना Is चाहते it based on love and affection, on a natural faith? तो ये प्रेम और स्नेह और स्वाभाविक श्रद्धा के ऊपर आधारित Some होकर kind होना of चाहिए। external, mechanical, you know, forced type of materialistic control. ये बाहरी तरीके का मशीन या किसी तरह का जबरदस्ती नियंत्रण करने का प्रयास करके नहीं के आधार पर नहीं होना चाहिए। It's totally like heaven and hell difference. ये दोनों के बीच में स्वर्ग और नरक का अंतर है। One is natural and the other one is not natural. एक बहुत स्वाभाविक है और दूसरा स्वाभाविक नहीं। And you feel the difference. और आप अंतर देख पाएंगे। One you can be yourself, other one you cannot be yourself. एक जब आप खुद अपना जो स्वाभाविक रवैया है और दूसरा जब आप स्वाभाविक रवैया नहीं रख पा रहे। Make sense? समझ पाए आप? I think so. मुझे ऐसा लगता है। Any last thing? कोई आखिरी चीज? All of you? आप सभी के We're good? सब ठीक है? And we have more topics to discuss. और हमारे पास और भी बहुत सारे विषय हैं। So that means you have to come again. इसका मतलब आपको दोबारा आना होगा। Again and again. बार-बार आना होगा। Because we have so many things to discuss. क्योंकि हमारे पास बहुत सारी चीजें चर्चा So करने many topics will come up. बहुत सारे विषय बाहर आएंगे। So we have to discuss all of these हम इन things. सारे को चर्चा करना होगा। Oh yes, we forgot about our little demon here. हम अपने छोटे असुर को भूल गए यहाँ। I'm so mean, aren't I? Calling her a demon? मैं बहुत मैं उनको एक असुर बुला रहा हूँ। Her mother's probably very upset with me if she's listening to this class. You know? इनकी माँ मुझसे बहुत नाराज होगी अगर मैं क्लास को सुन रही होंगी। She's calling my baby a demon. मेरी बेटी को जो है असुर बुला रहे हैं। Give her the microphone. Let's see what her question is going to be. चलिए माइक्रोफोन से भी देखते हैं Let's see if there's a variation of the same kind of topic. चलिए देखते हैं वो उनके एक ही उसी विषय का एक अलग तरीके से वो प्रस्तुत कर रहे हैं। Now that I'm not a demon, अब मैं एक असुर नहीं हूँ। how do I stay not being a demon? कैसे अब मैं असुर नहीं बने रह सकता? Hare Krishna, Shri Gurudev. So my question is related to that Mataji question. She asked the question that regarding of that she met some persons who were like envious, like kind of like snakes, and you answered that sometimes even if you You're not behaving like that, right? तो आपने जैसे उनकी माता जी के प्रश्न का उत्तर दिया, कुछ व्यक्ति जो है सांप की तरह व्यवहार करते हैं और द्वेष करते हैं। गुरुदेव बता रहे आप तो ऐसे व्यक्ति नहीं है ना? You're not being like envious and like jealous and. आप उस तरह का ईर्ष्या या जलन आपके अंदर तो नहीं है। trying not to be. You're trying not to do. वो नहीं रहने का प्रयास। Trying means not doing. वो नहीं कर रही है। So my question is that you told Mataji that
sometimes the past experience was so painful that even if you remember, it feels like serpents are like poison. So my question is that because my past childhood was kind of like dealing with all these things, so even I am in right now in the seva ashram and with all these devotees. So sometimes when some difficulties came and I'm trying to talk with some devotees, or devotees came to me to help me, but to help you? Yeah, sometimes they ask questions like, "What happened to you, Mataji?" Did you tell your sad story? No. No. So it's just because of I have like kind of trust issues, and sometimes it happened also that some devotees. She has trust issues. What? She has trust issues. Trust issues. Yeah, and it also happens sometimes devotees came to me and unintentionally they said something which they don't need to talk with me, and because it hit my trauma, my past trauma, and I just become. It's like stepping on a bomb, you know? Yeah. Yeah. Like a landmine, you know? Yes. Definitely. Then you blow up. Yeah. So I just. And involve everybody in your past trauma. No, I just want to run away from that place. So I just feel like whenever this kind of a You situation. were warning them. Yeah, right? yeah. So. They were not listening. So it's just like whenever. I got trauma. I'm just warning you, man. Don't trigger me, you know. This could get messy real fast, you know. This whole thing can blow up. I can't tell you what's going to happen. You know? Proceed at your own warning, you know. Minefield ahead. Yes, minefield ahead. So They can all show up with hazmat suits on, you know. She's got trauma, you know. This could spill over, man. This could be a nuclear holocaust, you know. Everyone could be affected. But I don't want to be in such a traumatic condition, and I don't want to disturb others also. So what should I have to do? Should I just if I am in that kind of difficult situation, I just pray to Krishna, Gurudev, to get rid of these things and not to talk with any devotees? Well, now you've officially announced that you have trauma. तो माता जी सवाल पूछ रहे कभी-कभी कुछ अतीत के घटनाओं के कारण जब मेरे साथ कुछ गलत व्यवहार कर देते तो मेरा अतीत जब बाहर आने लगता है तो एक तरह का ट्रॉमा है, तो मैं उसमें कैसे बच के रह सकती? क्या मैं कृष्णा से प्रार्थना करूं, किसी से बात ना करूं, या क्या करूं? तो मुझे बता रहे अब जब आपने सभी के सामने बता दिया है कि आपके साथ ये ट्रॉमा वाली समस्या है, It's like a public service announcement. जिसे सामान्य जनता के लिए जब अनाउंसमेंट किया जा रहा है, घोषणा की जा चुकी है. We're going into this situation with this type of person, you know. So everybody's aware now. सभी व्यक्ति हमारे पास एक ऐसे व्यक्ति हैं, सभी लोग इस व्यक्ति से जागरूक रहिए. So she's got trauma. तो उनको ट्रॉमा होता है. Don't add to it. सदमा होता है और इसमें आप और ज़्यादा कुछ जोड़िए मत. Don't trigger it. और इसको बढ़ाने का प्रयास मत unless you can solve it. अगर आप उसको समाधान नहीं कर सकते हैं. So now it's clear. Everyone understands. अब साफ हो चुका है, सभी लोग आपकी परिस्थिति समझ चुके हैं. That's good. तो ये बहुत अच्छी बात है. Now it's out in the open. तो अब सबके सामने खुला हुआ है. Already solving many problems. और सब बहुत सारी समस्याएं पहले ही समाधान हो रही हैं. ठीक है. So let her just chant and be happy. तो उनको जब नाम करके खुश रहने दीजिए. Don't trigger her. और इनको परेशान मत कीजिए. What's your problem? आपकी क्या समस्या है? Mataji, do you have trauma? आपको भी सदमा पड़ता है? Is that word trauma triggering your trauma? क्या ये सदमा शब्द आपके भी सदमे को प्रभाव कर रहा है?
Everyone has drama. सभी के पास अपने में Welcome सदमे to हैं। the material world, you know. स्वागत है भौतिक जगत में। Who doesn't have drama here? किसको यहाँ भौतिक जगत में सदमे नहीं मिलते हैं? Who's free from that drama? कौन उस सदमे से बचा हुआ है? Drama or trauma? नाटक या सदमा? So, फिर are you trying to preach to the drama girl? क्या आप इस सदमे वाली लड़की को प्रचार करने का प्रयास करती हैं? Is it like this? क्या ऐसा है? Are you trying to instruct trauma girl? तो आप ये सदमे वाली लड़की को निर्देश देने का प्रयास करते हैं? No? No? Okay. Don't trigger her. तो परेशान मत कीजिए। Even though sometimes when I'm really difficult situation, I'm just praying to Krishna, chanting. Your difficult situation personified. कह रही है जब मेरे पास कठिन परिस्थिति है, गुरुदेव बता रहे हैं आप कठिन परिस्थिति का प्रकट रूप हैं। So wherever I go, it's a difficult situation. You know? जहाँ भी जाती है कठिन परिस्थिति के साथ। She like brings it everywhere. You वो know? सभी जगह लेके जाती है। And then when she shows up, everyone's like, okay, the difficult situation has come. जब ये आती है सब समझते हैं कि अब कठिन परिस्थिति आ चुकी है। Is that your contribution to the community? समाज में अपना ये भागीदारी निभा रहे हैं। Thank you for tolerating my service. You know? मेरी सेवा को सहन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। I remember somebody said, you know, Maharaj, thank you for tolerating my service. मुझे याद है किसी ने कहा महाराज धन्यवाद मेरी सेवा को सहन करने के लिए। I'm like, what is that service that you have to tolerate it? मैं सोच रहा था ये कैसी सेवा है जिसको मुझे सहन करनी पड़ी। So, फिर So yeah, some devotees came to me and like asked, and I just I'm just trying to say that don't talk to Like me while I'm leave me chanting. alone. Yes, I'm Yeah. chanting. I'm praying to Guru Krishna. If Yeah. Krishna wants to shower mercy, he wants to make me happy. He can make me happy at any moment. What you can do, what you are preaching are can do. other people trying to make you happy? दूसरे लोग जब मुझे खुश करने का Horrible people. मुझे मदद करने का प्रयास Horrible people. They're trying to make you happy. ये बहुत खतरनाक बहुत खराब लोग हैं जो आपको मदद करने का आपको खुश करने का प्रयास कर रहे हैं। They're thinking about your happiness. Horrible people. वो आपके सुख के बारे में चिंता कर रहे हैं। ये बहुत डरावने लोग हैं। It's not like they are not unintentionally they just harm me. It's not like they wants to make me harm. Just by mistake it's happening. How much are you disturbing everyone with your trauma disturbance package? यानी वो जानबूझकर मुझे परेशान नहीं कर रहे हैं। गुरुदेव कह रहे हैं कि आप कितना लोगों को परेशान कर रहे हैं अपने सदमे वाले इस कठिन परिस्थिति को जब लेकर आते हैं आप। What are you bringing to the party, you know? आप क्या लेकर आते हैं पार्टी में? What's your contribution? आपका क्या भागीदारी है? That's why I try to being alone. Don't try to Don't try to be a human with me. इसलिए मैं अकेले रहने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए मेरे साथ मनुष्य बनने का प्रयास मत करो। I'm not in human consciousness right now. मैं अभी मनुष्य की चेतना में नहीं हूँ। Don't try to be a human with me. मेरे साथ मनुष्य बनने का प्रयास मत करो। Unless you can be animalistic, I can't relate to you, you know? जब तक आप जानवर नहीं बनेंगे मैं आपके साथ अपना संबंध नहीं बना सकती। You're too happy for me right now. आप मेरे लिए कुछ ज़्यादा ही खुश हैं। I can't handle your vibe of happiness, you know? आपके सुख को मैं झेल नहीं सकती। It's confusing me, you know? मैं इससे भ्रमित हो रही हूँ। Your happiness is confusing me. आपका सुख मुझे भ्रमित कर रहा है। If you're depressed, I know how to deal with you know? अगर आप डिप्रेस रहेंगे उदास रहेंगे तब मैं समझ पाऊंगा मैं कैसे But आपसे this बर्ताव peace and करूँ। happiness thing is foreign to me, you know? ये सुख और शांति ये मेरे लिए बहुत विचित्र बात है। If you want to talk about crisis management, we can talk about that. you know? अगर हम आपदाओं कैसे प्रबंधन करें इसके बारे में बात करना चाहते हैं तो हम इसके बारे में बातचीत कर सकते That I know a lot about. हैं। उसके बारे में मुझे बहुत पता है। Right, Deva Deva? I'm being nice there. He's like his protector, you know what I mean? मैं अच्छा बनने का प्रयास कर रहा हूँ। I have to be like, you know. You have a friend, you have a protector.
आपके दोस्त हैं, आपके रक्षण करता That's है, good. बहुत अच्छी बात है। But you gotta let me help him sometimes, you know. लेकिन कभी-कभी आपको मुझे उनकी मदद करने देना होगा। He's just like, be careful, man. कहते हैं, महाराज थोड़ा सावधान रहिएगा, Just be a little careful. थोड़ा सावधान Be रहिएगा। sensitive, Maharaj. अब थोड़ा सेंसिटिव रहिए, A little more sensitive. थोड़ा Dave सेंसिटिव। is a sensitive soul. देवा बहुत सेंसिटिव आत्मा है, And he's making the cookies. और वो हमें कुकी नहीं, We don't want to aggravate that guy, you know. हम उन व्यक्ति को परेशान नहीं करना चाहते। Alright, so ठीक है। So Shri Gurudev, how we can like get rid of this kind of the traumatized situation? I just don't want to be stuck in I it. told you, it always comes to this. How do I get rid of all of these demoniac qualities? मैंने बताया था वहीं आएगा बात सवाल, कैसे मैं अपने आंतरिक गुणों से बच पाऊँ? It always comes back around to that topic. कैसे घूम के वापस वही विषय आ जाता है? That's the root cause of my problem. Like it's like deep Yeah, rooted. being demon is a problem. ये मेरे जड़ समस्या को तो कह रहे हैं, असुर होना ही समस्या है, That's a big problem. ये बहुत बड़ी समस्या है। You're like an antisocial. आप जो है असामाजिक व्यक्ति हैं, ऐसा है, Antisocial. असामाजिक व्यक्ति हैं। In India, I found out what is antisocial. और भारत में मुझे पता चला असामाजिक व्यक्ति क्या होता है। I just thought it just meant someone who doesn't like to, like so much, you know, like mix too much with people, the more introverted type of people. मुझे ऐसा लगता था ये लोग जो ज़्यादा लोगों से घुलना मिलना पसंद नहीं करते या खुद में ज़्यादा रहते हैं, ऐसे लोग। But antisocial in India is a whole other situation, isn't लेकिन it? भारत में असामाजिक व्यक्ति एक बहुत ही अलग ही व्यक्ति लोग होते हैं। They cannot mix with the humanity, you know? वो मनुष्य के साथ मिलकर नहीं रह सकते। Like this guy. जैसे ये व्यक्ति है, He's like antisocial. ये भी जो है असामाजिक व्यक्ति है। But he's chanting, he's taking prasadam, he's trying to calm down a little bit, right? लेकिन ये नाम दे रहे हैं, प्रसाद दे रहे हैं, थोड़ा धीरे-धीरे ठंडा होने का प्रयास कर रहे हैं। Or like Adam. या फिर आदम। I say if he doesn't chant 16 rounds and become a human, don't even go to the temple. मैं भी कहता अगर आप 16 माला जप करके मनुष्य नहीं बनते हैं, तब तक आप मंदिर मत जाइएगा। He'll just go over there and just like bite everybody, you know? वहाँ जाके सबको ही काटने लगेंगे। Especially if there's no prasadam. जब कोई प्रसाद नहीं मिलेगा। Everyone's like they're passing text messages, get him some prasadam as soon as possible. वो सभी मैसेज You पास got करने a लगेंगे। wild dog over there, you know? एक पागल कुत्ता घूम रहा है। Some sweets, some oliva, some pasta, anything. Just like this guy, you know? इस आदमी को शांत करने के लिए लाना होगा। Right? Pitamba? Right, Pitamba just comes out of the kitchen, he just पीताम्बर किचन से निकल के इनके मुंह में कुछ ठूस देते हैं। like a wild dog, you know? पागल कुत्ता है। And then he's like, okay. तब वो जो है ठीक शांत हो He's जाता like a pacifier. है। तब वो शांत हो जाता है। But can you imagine if he doesn't even try to chant? लेकिन अगर आप देखिए अगर वो अगर जप करने का प्रयास तक न करें, You're going to need security over there. वहाँ पे हमें सिक्योरिटी लोगों को You बिठाना have to hire security guards. हमें जो है सिक्योरिटी लोगों को वहाँ बिठाना पड़ेगा। He's like this big guy. क्योंकि इतने बड़े व्यक्ति हैं He's British. और ये ब्रिटिश हैं, Divide and conquer. खूब डाला और राज कर रहे हैं। He's got this attitude, man. इनका रवैया ही ऐसा है। He's into like throwing revolutions and overthrowing countries, temples. मंदिरों से कैसे लोगों को बाहर निकालना और फूट डालना, राज करना, क्रांति शुरू करना। He's the anti-party. ये जो है विरोधी पार्टी से। Right? Anti-social, anti-party. He's असामाजिक representing. विरोधी पार्टी और ये उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। So everybody, thank you very much. Keep chanting. सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नाम लेते रहिए। Become like a perfect gentleman, perfect lady. पहले एक सभ्य महिला, सभ्य पुरुष बनने का प्रयास कीजिए। That's the better. Chant and be happy. और भगवान का नाम। I've been writing lately. Chant, be peaceful and be happy. मैं बाद में लिखूंगा नाम लीजिए, शांत रहिए और सुखी रहिए। Peaceful in there. मैं उसमें शांत डालूंगा। Otherwise, how we're going to be happy? वरना हम कैसे खुश हो सकते हैं? Right? ठीक है? All right, everyone. Thank you very much. धन्यवाद सभी का बहुत बहुत। Shri Gwanitai ki, Srila Prabhupada ki, Srila Guru Govinda Swami, Srila Gurudeva ki, some Veda Bhaktivinoda ki, working on it. Shri Gurudev ki.
One side is like, if you have difficulty dealing with somebody, then better not so much associate with them. एक ये बात भी, अगर आपको बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है किसी के साथ व्यवहार करने में, तो उनसे ज़्यादा संग मत कीजिए. And then on the other side, if you try to avoid certain people, wherever you go, that same person will be sitting waiting for you. और अगर आप दूसरा और भी तरीका करेंगे कि आप वैसे व्यक्ति से बचने का प्रयास करें, उसी तरीके और भी लोग आसपास हैं. Somehow you have to pass that test. किसी भी तरीके से आपको परीक्षा पास करना. So you have to take humble position. आपको अपना विनम्र स्थान ग्रहण You करना. cannot just avoid forever. आप हमेशा के लिए से बच नहीं सकते. Krishna will just keep sending in that same type of person. कृष्णा एक ही जैसे व्यक्ति को बार-बार भेजते रहेंगे. Until we learn how to deal with them. जब तक हम सीखेंगे नहीं कैसे हम वैसे व्यक्तियों से निपट सकते That will हैं. expand us, make us more mature. और वो हमें और ज़्यादा विस्तारित बनाएगा, और ज़्यादा परिपक्व बनाएगा. That make sense? आप समझ पाए? You good? You like the class? अब ठीक है, आपको क्लास पसंद आया? All right. ठीक है. Thank you, everybody. बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का. Associate with people who are like-minded. एक मानसिकता वाले भक्तों का संग. Right? Like-minded devotees. एक मानसिकता वाले भक्तों का. We be respectful to everybody. और हमें सभी का सम्मान करना चाहिए. Right? But find those devotees where we have a like-mindedness. लेकिन ऐसे भक्तों को ढूंढिए जिनकी मानसिकता एक जैसी हो. Right? So, it's like a family. It's like everyone's part of the family. It doesn't mean you love everybody the same, right? परिवार के भाग सभी हो सकते हैं, लेकिन सभी से एक जैसा प्रेम नहीं कर सकते. So be reasonable also. तो हमें एक सही व्यवहार रखना चाहिए. Otherwise, you say, "Oh, I love everybody." पर हम कहते हैं हम सभी से प्रेम करते हैं. No, you don't. नहीं, आप नहीं करते. This is artificial. ये सब बनावटी है. Right? So just deal nicely with who you can. Where you feel some benefit and like-mindedness. Where you feel some spiritual benefit. जिनके साथ अच्छा व्यवहार कर सकते हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार करिए. जिनके साथ अच्छा आपको आध्यात्मिक लाभ मिलता है उनके साथ ज़्यादा व्यवहार कीजिए. And avoid those other people. और बाकी लोगों से बच कर रहिए. But be respectful. लेकिन सम्मान सभी का कीजिए. Be friendly. सभी से दोस्ताना Just व्यवहार also कीजिए. avoid them. लेकिन साथ ही साथ कुछ लोगों से बचें. And then let Guru Krishna take care of them. और गुरु कृष्ण को उनका ध्यान रखना It's चाहिए. better. ये ज़्यादा अच्छा है. All right. Thank you, everybody. धन्यवाद सभी का. David has some cookies. He's going to hand them out. देवा के पास कुकी है, बहुत लोगों को बांटेंगे. All right. I'm authorizing him. मैं इनको अधिकार देता हूँ. All right. That's an authorization. ये अधिकार उनको मिला है. They're just as good. ये बिल्कुल वैसा ही होगा, अच्छा होगा. Hare Krishna. Here's a garland. ये आपके लिए खाना है. Gurudev ki jai.